session on mentoring and its role in the institutional development improvement. I would like to thanks to Punjab Higher Education Commission for such a good initiative to arrange trainings for the college and university teachers. Almost all levels of the college teachers, right from lecturer, assistant professor, and associate professors, they are engaged, or they have been engaged, or they might be, if some of these cadres have not been yet trained, they will be coming in the next training sessions. Equally, the Punjab Higher Education Commission also arranged training for the university teachers last year. So this is very good initiative that we can find a forum where we can share our experiences, and you may be able to share your experiences with different people of having their knowledge and skills in their areas of expertise. And of course, you have the expertise in your area. Since long you have been engaged in teaching and research, and obviously you have your own vision. In this session, we are going to discuss about the mentoring and its role in institutional improvement. What is actually desired in this session? I would like that by the end of this session, you would be able to know this concept. What is the difference between teaching and mentoring? What are the different, understand the types and models of mentoring, and enable the participants with understanding of ways how mentoring can improve functioning in a higher education institution, whether it is a college or a university. So that might be the learning outcome that I would like to achieve by the end of this session. Before I share my experiences, I would like that you may share few aspects, because you are teachers and you have heard this, I think, concept. So I would like to invite your opinions about few questions which I have raised. The very first one is that what is a mentor or what is a mentoring? Both pronunciation are correct. Mentoring be or mentor, mentor or mentor. So what is mentoring? Can anybody please share very briefly? You don't need to quote the definition of any expert. You can give your own vision. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मेंटोरिंग का मतलब मुझे ये समझ आता है कि गाइड करना हर तरीके से, एक गाइड या रहनुमा का काम करता है मेंटोर। जी मैडम शाजिया, कहाँ से आप? मैं टिम्बर मार्केट कॉलेज से। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, एनी अदर पार्टिसिपेंट? जी सर, can I add? I'm Sarwar from Kent College. Mentoring means to present model, कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको हम फॉलो कर सकें और स्टूडेंट्स को हम गाइड कर सकें according to their needs, and we should present ourselves in that role. This is mentoring, I think, which the students can easily follow, and they will be benefited by following that. This is what I think. Okay, thank you, madam. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना हुमा हूँ। मेरे ख्याल में मेंटोर जो है वो अपने मुखातिब की ज़हनी सलाहियतों को इस हद तक एनहेंस कर देता है कि वो खुद अपने रास्ते मुतय्यन कर सके। उनके अंदर एक एबिलिटी ऐसी पैदा करना कि वो अपने मकासद को वाज़ेह तौर पर समझ सके। जी मैडम फरजाना, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वन बाय वन प्लीज। सर, मेरे ख्याल में मेंटोर एक ऐसे टीचर की हैसियत रखते हैं जो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली भी इन अ लॉन्ग रन अपने शागिर्द को तैयार कर सके। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर। ये सारे शेयर करना चाहते थे।
पहले उनको जरा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई ऐड समथिंग? जी 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 सर मेरे अस्सलाम ख्याल वालेकुम। में सर मेरे ख्याल में जो टीचर और मेंटोर में फर्क है वो है तालीम और तरबियत का। टीचर जो है वो सिर्फ तालीम देता है और मेंटोर जो है वो आपकी हर लिहाज से साथ साथ तरबियत भी करता है। इसमें आता है वो ये है कि टीचिंग के अलावा हम स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसकी तरबियत भी करना, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी उसको ट्रेन करना, और अगर हमारे सब्जेक्ट के अलावा भी उसको कहीं पर गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी और सब्जेक्ट में हम उसको कुछ बता सकते हैं, या उसको लाइफ में आगे कोई कैरियर चूज करने में कुछ बता सकते हैं, या उसको कोई डिफिकल्टी किसी लेवल पे पेश आ रही है उसमें उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या उसकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं उसके बारे में वो ओपन फील करे कि वो हमसे डिस्कस कर सकता है। तो सर मेरे ख्याल में इस तरह से जब एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है तो वो सिर्फ टीचिंग की हद तक नहीं रहता, बल्कि उसमें मेंटोरिंग भी शामिल हो जाती है। जी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द स्क्रीन, दैट इज प्रोटीच। व्हाट इज मेंट बाय प्रोटीच? कैन एनीबॉडी हैज heard this terminology? Assalamualaikum sir, I am Shubhana Ji. Islam. Yeah. In college category, it is generally taken. We take this term for students which are guided by us. अच्छा मैम, मैंने ये भी आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज प्रोटीच? PROTEG. What do you mean by this? Have you heard this term? Is a person who is guided by some elder one. Okay, so very right. Proteage is a person who is being guided by someone else, so it means we call it as mentee. Proteage is called as mentee. There is one mentor who guides, and the other one who is being guided is the mentee. So thank you very much. आपने सही बताया. Let's go to the next. Any benefits? If you would like to share 2 or 3 benefits of this mentoring. Finally, those who have not yet shared, they are requested firstly to share. What are the... अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, वेलकम सर। सर ये मोहम्मद शफात बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कामोकी से। जी जनाब। ये सर तामीर शख्सियत में तरबियत का बड़ा किरदार। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। बेनिफिट के हवाले से बात। जी बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक पॉइंट बताया आपने। जी एनी अदर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मोहम्मद नासिर बोल रहा हूँ जोराबाद से। जी तो मेंटरिंग का बड़ा जी हाँ फायदा ये होगा कि जो आपका स्टूडेंट है, ये जैसे हमने प्रोटीज कहा है, उसमें कोई ना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होगा, अपनी सलाहियतों के बारे में वो जान सकेगा, और फिर उसे समझ लें कि वो फिर अपने पाँव पे खड़ा होके उसे कोई खास गाइडेंस की फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका मेंटरिंग का तो यही फायदा है। थैंक यू नासिर साहब। ये आपका कॉलेज ये ग्रेजुएट कॉलेज है नासिर साहब? नहीं सर, ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जोराबाद जी, ये नॉर्मल जिस तरह एडीए। There are different types of mentoring. So can anybody share any types of mentoring? Sir, मैं can I share? जी 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 मैम। फॉर्मल मेंटोरिंग है, इनफॉर्मल मेंटोरिंग है, और देयर आर सम अदर टाइप्स नॉट इन माय माइंड, लेकिन ये कुछ टाइप्स इसकी हैं। ठीक है, जो आपने बताया ठीक है। सेल्फ मेंटोरिंग। जी वेरी गुड। एल्स जी जो सर ने अभी पूछा था इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, वेरी ब्रीफली, तालीम और तरबियत करने वाला, इसमें दोनों चीजें आती हैं। सर आप भी हमारे मेंटोर हैं इस वक्त के, डिस्टेंस मेंटोरिंग हो रही है। जी मैडम, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये डिस्टेंस मोड से मेंटोरिंग हो रही है। यू आर वेरी राइट।
तो ये सेल्फ मेंटोरिंग, फॉर्मल मेंटोरिंग, इनफॉर्मल मेंटोरिंग, ग्रुप मेंटोरिंग, डिस्टेंस मोड से मेंटोरिंग, ये सारी इसकी टाइप्स है। इसी तरह ये एक फ्लैश मेंटोरिंग। सर ये हम आज मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, तो एक ग्रुप की शक्ल में आप सारी ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे आप फ्लैश मेंटोरिंग कहेंगे। चलें ठीक। ये सर ये वन टाइम मेंटोरिंग होती, वन टाइम मेंटोरिंग शॉर्ट पीरियड के लिए, इसको स्पीड मेंटोरिंग भी कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है। तो दैट्स वेरी राइट। ये जो अभी डिस्टेंस मोड से हम एक दूसरे से मुखातिब हैं, आई विल जस्ट बी हेयर विद यू फॉर 1.5 आवर, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो मेंटोरिंग है उसको फ्लैश मेंटोरिंग है। इसी तरह कोई और भी है कि आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सफ़र में आपको मिला, उसने कोई आपको नसीहत की, गपशप लगाई और उसके दौरान कुछ जो है वो अच्छी बातें भी की जो आपने उसको बड़ा वैल्यूएबल समझा, तो वो एक फ्लैश मेंटोरिंग भी होगी। और इनफॉर्मल मेंटोरिंग के ज़मरे में भी आया था कि प्लान नहीं थी उस तरह। अच्छा, टीचर और मेंटोर में फ़र्क अभी कुछ बता रहे थे, तो कोई और भी शेयर करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो अभी हमारे डियर पार्टिसिपेंट ने बताया था कि मेंटोर का ज़्यादा फोकस जो है स्पिरिचुअल होता है, मॉरल होता है बनिस्बत टीचर के। तो और कोई बात शेयर करेंगे इस सिलसिले में? टीचर जो है वो तो मुकम्मल तौर पर टीचिंग कर रहा होता है, लेकिन मेंटोरिंग में क्योंकि तरबियत का पहलू है, तो तरबियत टीचिंग में शामिल होती है, और लेकिन तरबियत एक अलहदा हिस्सा भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तरबियत भी टीचिंग है, और जो टीचिंग है ये मुकम्मल तौर पर मेंटोरिंग नहीं है। जी जी, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू। एनी अदर पार्टिसिपेंट? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ टिम्बर मार्केट कॉलेज से। तो ये मेंटोरिंग में दोनों चीज़ें तो आती हैं, टीचिंग भी और मेंटोरिंग भी, लेकिन मेंटोरिंग मेरा ख्याल है अपने तजुर्बात की रोशनी में गाइड करना, ये उसमें ज़्यादा। अब जैसे मेरे बेटे का मेंटोर रहता है यूके में, और वो वहाँ से गाइडेंस दे रहे होते हैं, यानी कि वो टीचर नहीं है उसके, वैसे ही बस जस्ट उसके फील्ड के एक एक्सपर्ट हैं, और वो उनसे एक्सपीरियंस उनके जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे गाइडेंस लेता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो उससे कोई उसको क्या कहते हैं, कोई फ़ी वगैरह भी नहीं है, जस्ट अपने तजुर्बात से उसको रोशनास कराते हैं। तो इस तरह से रहनुमाई ही में ज़्यादा बेटर मुझे इसके लिए लगता है, ठीक है, रहनुमा नहीं होता है बस। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, मॉडल्स भी एक सर एक मैं शेयर कर सकता हूँ इस हवाले से? आप क्यों नहीं सर, आपके लिए ही तो सारा ये फॉरम है। सर ये जो अतालीक का लफ्ज़ आता है उर्दू में, जी जी, तो अतालीक जो है वो भी जो बादशाह थे या बड़े लोग थे वो अपने बच्चों के लिए अतालीक मुकर्रर करते थे। जी जी जी, क्या हम मेंटोर को का तर्जमा अतालीक कर सकते हैं या वही चीज़ है ये? देखें, बात यह है, जो कॉन्सेप्ट जिसके साथ आपने रिलेट किया है, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ठीक है जी, कि जो आपने एग्जांपल दी है कि वो उनका मोड भी मोर और लेस ये एज ए मेंटोर ही था, तो यू आर राइट। अच्छा जी, मॉडल्स ऑफ मेंटोरिंग भी लिटरेचर में कुछ मिलते हैं, अगर आपके ज़हन में कोई मॉडल हो, कोई आपने पढ़ा हो? अच्छा, या ठीक है, वो एज ए रोल मॉडल एक मेंटर आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लिटरेचर में मॉडल्स मिसाल ले सकते हैं जी। अंबिया कराम ने जिस तरह से जो है वो लोगों की तरबियत की, तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। हाँ, वो एग्जांपल्स बेस्ट हैं, आपकी ये बात सही है। अच्छा, हमारी डेली लाइफ। जी मैम। सर हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही बहुत बड़ी, उनसे बड़ा तो कोई मेंटोर नहीं है। जी बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है आपने बताया।
और सर मैम आप पहले मॉडल्स की बात कर रहे हैं ना, आपने तो वो मुझे जो समझ आई है जैसे 1-to-1 मॉडलिंग या मेंटोरिंग हाँ, या जी ग्रुप मेंटोरिंग, जी जी इस तरह से सही ये है। इसके मॉडल्स हो गए, या पीयर मेंटोरिंग होती है। जी जी, ये जो आपकी बात सही है, ये जो आप बता रहे हैं, जैसे अम्बिया हैं, सहाबा इकराम हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या जो औलिया इस तरह हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं बेस्ट, आप कह लें बेस्ट मेंटर्स की। तो कुछ अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे नज़र दौड़ाएं, अपने अपने कॉलेजेस में, तो क्या कोई प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो मेंटोरिंग की, तो वो शेयर करें काइंडली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबदा नसीम है। मैं फातिमा जिन्ना कॉलेज मुल्तान से हूँ। सर, इस कंडीशन में जब हम क्लासेस टीचिंग प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, तो जब एक ट्रेनी टीचर किसी भी स्कूल या कॉलेज में टीचिंग के लिए जाता है, तो प्रिंसिपल की तरफ से एक मेंबर, उस क्लास का इंचार्ज या कोई मेंबर मुकर्रर कर दिया जाता है, जो उस ट्रेनिंग टीचर को गाइड कर रहा होता है, उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो हमारे कॉलेज या तालीमी इदारों से ये एग्जांपल हो सकती है। जी बिल्कुल। आप क्या पढ़ाती हैं? सर मेरा एजुकेशन है सब। जी, तभी आपने ये एग्जांपल दी है, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल भी यही है। अगर हम बात करें बेस्ट एग्जांपल्स में थे, तो यू हैव राइट अ वेरी गुड एग्जांपल। इसलिए मैंने सब्जेक्ट पूछा है कि आपका क्या सब्जेक्ट है। एनी सर अदर पार्टिसिपेंट वुड लाइक जी टू सर, शेयर एनी एग्जांपल? सर मैं प्रोफेसर मोहम्मद जाफर हूँ फैसलाबाद से। जी सर। मेरा वैसे शोबा तो अरबी है, जी जी लेकिन मैं शुरू से ही, मुझे एक शौक़ था कि जिस तरह हम तालीम देते हैं, हमें बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए। जी सर। मैं ख़ुद भी एक स्पीकर रहा हूँ, मुकाबले वगैरह में हिस्सा लेता रहा हूँ, एक शायर के तौर पर भी। जी तो मैं ये चाहा कि मैं बच्चों की भी ये तरबियत करूँ। तो शुरू से ही मैंने ना अपने कॉलेज में जहाँ भी मैं रहा, तो मैंने ना ये अपना शुगल पहले बनाया, फिर ऐसा ऐसा ज़िम्मेदारी ये बन गई। तो अब तक हम यही कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको तकारीर सिखाते हैं, उनको शायरी सिखाते हैं, या उनकी वैसे अखलाकी तरबियत के लिए लेक्चर्स कर देते हैं। कभी-कभी उनकी क्लासेस में जाके लेक्चर दे देते हैं, कोई प्रोग्राम करवा के उनके लिए लेक्चर्स का एहतमाम कर देते हैं। तो क्या जी ये भी मेंटोरिंग होगी सर? जी बिल्कुल, ये भी मेंटोरिंग होगी, डिफरेंट फॉर्म्स। जी। एनी अदर पार्टिसिपेंट कोई और एग्जांपल या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? सर ये जो है ना तरबियत, ये हर वो बंदा कर सकता है जो सुन्नत पर अमल करता है, कुरान पे अमल करता जी है और खुद वाक़िफ़दार हो। जी। अच्छा जी, अब अस्सलाम आप वालेकुम सर। जी मैम, अब आपका आखिरी जो है बताएं, शेयर करें, फिर मैं अपनी कुछ बातें शेयर जी करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, आपकी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, प्लीज़। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि लिटरेचर में सर सैयद अहमद खान को मेंटोर कह सकते हैं हम? देखिए, कुछ बिल्कुल मेंटोर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। इसका जवाब फौरी तौर पे तो ये है जो मैंने कहा कि यस वी कैन से। वो इस बरसगीर थैंक यू के सर। लोगों के लिए उन्होंने जो है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और ख़ास तौर पे जो उनके क्लोज थे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हाँ, आप एज ए प्रोफेशनल आइडियोलॉजिकली या किसी डायमेंशन से आपका किसी से इख्तलाफ हो सकता है, वो एक अलग बात है। सो माय थैंक यू डियर सर। Assalamualaikum, पार्टिसिपेंट। sir. May I come? Sir, can I add something? जी जी, ऐड कर लें। सर मैं शबाना रियाज फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें ये सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेंटोर की अपनी पर्सनैलिटी और अपनी शख्सियत कैसी है, क्या उसमें लीड करने की वो सलाहियत है। ठीक है, कॉलेजेस में टीचर हैं, घरों में पेरेंट्स हैं, और भी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम पसंद करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि मेंटोर खुद एक स्टैंडर्ड को वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
जैसे पंजाबी में ये अखान बना हुआ है मुहावरा कि पानी पिए पुन के ते मुर्शद फड़िए चुन के, यानी कि कामिल मुर्शद जैसे सुल्तान बाहू ने कहा है। तो हमें पहले ये भी देखना है कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं या जिसको हम जो मेंटोर पर्सनैलिटी जिसको हम बना रहे हैं लीडिंग के लिए या रहनुमाई के लिए या उसको हम पसंद कर रहे हैं, तो उसका अपना क्या वो है, उसको भी हमें देखना चाहिए ताकि फिर, क्योंकि वरना तो बहुत ज्यादा मुश्किलात और प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ये एक एस्पेक्ट है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इजाजत दें तो आप मैं कुछ बातें कर लूं। सर एक छोटी सी बात पूछ लो। जी बातें तो आप जो भी चाहें पूछ लें, अगर आप पहले मुझे कुछ बातों का मौका दे दें तो। बस एक छोटा सा ये था कि मैं कहती मेंटर इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज सीनियर, समटाइम्स इट मे बी अ जूनियर टू मेंटर समथिंग। आपने बिल्कुल सही फरमाया मैडम, यू आर वेरी राइट। जो आपने कहा, आपके व्यूज जो हैं वो ठीक है। तो सबने जो कहा, आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। So this forum is basically to share our experience. ये सारी बातें रिसोर्स पर्सन ने नहीं बतानी होती, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है, हम एक दूसरे से लर्न करते हैं। I would like to share very briefly कुछ चीज़ों के बारे में, and then I will give you an opportunity again on the way. कोई आप कहना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई चीज़ एडिशन करना चाहें। तो सबसे पहली जो बात है मेंटोर। मैंने पहले भी मेरी बातें काइंडली गौर से सुननी है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने आपकी बातों को बड़े गौर से सुना है, समझा है। तो अब आप भी कुछ देर मेरी बातों को सुने, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप क्वेश्चन करें या कमेंट्स दें। तो मेंटोर जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन लिटरेचर में मिलती हैं, मेंटर, लेकिन जो मोर करेक्ट आप कह लें वो है मेंटोर। इसको ग्रीक में टी जो है, टी जैसे इंग्लिश में टी है या उर्दू में टे है, ये नहीं होती। आपको पता है अरबी में भी नहीं होती टी, टे जो है। तो लेकिन हमारी उर्दू जुबान में भी है और इंग्लिश में भी है। तो ग्रीक में भी टी नहीं है। टी जब ते की आवाज देता है तो ग्रीक में इसको बोलते हैं मेंटोर। तो एक तो आपने आज ये लर्न करना है कि इसका जो ओरिजिन है वो मेंटोर से है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि मैं ग्रीक से मैंने पीएचडी की है एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी ग्रीस से, तो कुछ मुझे लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिला। तो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं उनका ताल्लुक, या ख़ास तौर पे साइंस से जो रिलेटेड है उनका ताल्लुक ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिन। तो मेंटोर है बेसिकली ये, लेकिन इंग्लिश में हम इसको मेंटोर पढ़ते हैं या मेंटर, दोनों सही है। लिटरली इसका मतलब जो है वो गाइड या कोच के मानों में आता है, काउंसलर के मानों में आएगा, या नर्चरर है, टू नर्चर, टू हेल्प, टू असिस्ट। तो इन मानों में जो लिटरल मीनिंग्स हैं मेंटोर के, वो ग्रीक में इस तरह लिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें मेंटर अपने मेंटी को गाइड करता है, उसको सीधा रास्ता दिखाता है, उसको नॉलेज शेयर करता है, या उसको कोई स्किल सिखाता है, या उसको कोई एथिक्स उसमें डेवलप करता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग किसी भी पॉजिटिव डायमेंशन में वो उसको गाइड करता है, उसको हम कहेंगे ये प्रोसेस जो है वो मेंटोरिंग। मेंटोरिंग or mentoring is the process through which guidance and counseling is provided by the mentor to the mentee or pupil. तो जो गाइड करता है वो मेंटर कहलाता है, मेंटोर, और जिसे गाइड किया जाता है वो उसको कहते हैं मेंटी। मेंटी और प्रोटीज। प्रोटीज का वर्ड जो है ये फ्रेंच में इसको यूज किया गया है, तो ये भी लिटरेचर में मिलता है। तो मेंटरिंग को मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है। अभी एक मैडम साहबा ने बड़ा अच्छा बात की कि ये एक जो सीनियर है वो जूनियर को जो है वो सिखाता है। तो ये एक बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन एंड ए लेस एक्सपीरियंस पर्सन, और ये गाइडेंस, एडवाइस, सपोर्ट, फीडबैक प्रोवाइड करता है सीनियर जूनियर को, और फिर जूनियर उस पर अपनी फीडबैक देता है। तो बेसिकली ये फिनोमिना या ये प्रोसेस जो है ये मेंटोरिंग कराता है।
इसी तरह एक और ऑथर ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है, मेंटरिंग इज ए डायनामिक एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप in a conducive work environment between an advanced career incumbent, means mentor, and a beginner, mean protege, aimed at promoting the career development of both. If you look at this definition, इसमें की दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू में यूज हुए हैं, डायनामिक, के दोनों एक्टिव होते हैं, और दोनों फिर रेसिप्रोकल यानी दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, रिलेशनशिप जो उनके दरमियान है। ऑफ कोर्स मेंटर जो होता है वो ज्यादा सिखाएगा मेंटी, लेकिन मेंटी से भी, जैसे हम कहते हैं जब टीचर टीच करता है तो स्टूडेंट से भी कई बातें सीखता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता होता कि टीचर भी हमसे सीख रहा होता है। मसलन ये भी एक सीखना है, जब हम पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, हमें फीडबैक मिल रही होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट, then we repeat our lesson or we change our strategy to repeat the thing. तो ये क्या है बेसिकली, ये भी लर्निंग है, टीचर इज गेटिंग द फीडबैक एंड इन द लाइट ऑफ द फीडबैक इम्प्रूव्स हिज और हर टीचिंग। तो इस तरह मेंटर जो है मेंटरिंग प्रोसेस में बोथ मेंटोर और मेंटी दोनों लर्न करते हैं। हाँ, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग is more in regard with the mentee in comparison to the mentor, लेकिन सीखते दोनों। एक क्वेश्चन अभी आपके साथ शेयर किया था, आप में से कुछ चीजें आपने बताई लेकिन कुछ मिसिंग हो गई, तो मैं आपके साथ जो वो भी शेयर करना चाहूँगा। टीचिंग और मेंटोरिंग में या टीचर और मेंटर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज ये है कि टीचिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होती है, मेंटरिंग के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप चल रहे हैं रास्ते में, आपके साथ कोई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे बड़े हैं या आपकी उम्र के हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उन्होंने कोई बात गपशप हो गई, एक दूसरे से आप कोई चीज ऐसी सीख जाता है और बंदा बड़ा कहता है कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने। तो बेसिकली वो एक लर्निंग जो हुई है, तो वो जिसे हम फ्लैश मेंटोरिंग या कहेंगे वो इनफॉर्मल भी है। तो मेंटरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है, जबकि टीचिंग के लिए जरूरी है कि कोई एक टाइम टेबल होगा कि इस टाइम पे कौन सा टीचर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितनी देर के लिए पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स कौन से होंगे, तो ये सारी चीजें शेड्यूल्ड होती हैं। मेंटर के लिए या मेंटरिंग का जो मीटिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होती। सॉरी। अगला पॉइंट ये है, टीचर ऑलवेज पोजेसेस हायर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कई कॉलेज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सिविल लाइंस कॉलेज है लाहौर, इसी तरह दूसरे सिटीज में कुछ अभी कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटीज नहीं बनी, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात जो है वो मास्टर टीचर भी मास्टर क्लासों को पढ़ा रहे होते हैं, वो खुद भी एमएससी हैं लेकिन वो एमएससी को पढ़ाते हैं या ऑनर्स को पढ़ाते हैं। ऐसी अभी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए टीचिंग में आमतौर पे तो हायर क्वालिफाइड होते हैं और स्टूडेंट जो होते हैं वो उससे लोअर लेवल के, लेकिन यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि टीचर एमएससी है लेकिन स्टूडेंट बीएससी है, वो अभी एमएससी करने के लिए आया है। मेंटर भी यूजुअली हाईली क्वालिफाइड होता है लेकिन ऑलवेज एसेंशियल नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा, यू आर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर, आप इफ यू डोंट माइंड आप एसोसिएट प्रोफेसर का ग्रुप है या असिस्टेंट प्रोफेसर का, बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके ओके, मैंने कहा ये ना हो मैं आप लोगों का स्टेटस कहीं लो ना कर दूं, तो आई वाज इंटरेस्टेड जस्ट टू कंफर्म। तो फॉर एग्जांपल नाउ यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर and you might be, some of you may be the head of the department,
आपका कॉलेज बड़ा है और आप सीनियर हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वन न्यू टीचर फॉर एग्जांपल इन द सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री के हेड हैं, न्यू टीचर हैज ज्वाइंड एज ए लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आपने ऑलरेडी टीचर हैं और आपने जो है एमफिल केमिस्ट्री किया, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नए टीचर आए, ही इज PhD एंड बट ही हैज नो एक्सपीरियंस। अब इस कॉन्टेक्स्ट में तो शायद जिस फील्ड में उसने अपनी रिसर्च की है तो आपकी शायद उसमें उस लेवल की वो एक्सपर्टीज ना की हो, तो वो भी आपका एज ए मेंटर हो सकता है। जो टीचर इन रिगार्ड टू एक्सपीरियंस वो ज़्यादा नहीं है, उसका न्यूली ज्वाइन किया है, बट सिंस ही हैज़ डन ए हाई डिग्री एंड हैज़ एक्सपोज टू more research in his or her field, जो area of expertise है, तो maybe he or she will act as a mentor for you, आप उससे भी कुछ सीखते हैं। तो आपने उन्हें, जो अच्छे कॉलेज होते हैं, अदारे होते हैं, डिपार्टमेंट हैं, तो वो ये कहते हैं बाज़ औक़ात कि जो आपने अपनी रिसर्च है, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर के एक सेमिनार को इस तरह का हो जाए जिसमें आप हमारे साथ जो है ये शेयर करें जो आपकी रिसर्च आपने की है, ताकि हम इससे लर्न कर सकें। तो ये मैं आपको एक एज एन एल्डर एक सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि जब नए लोग आपके पास आएँ और आप ये समझें, साफ ज़ाहिर है कि आप उन्हें मौका दें, अगर वो PhD हैं या MPhil हैं, उन्होंने किया हुआ है, तो वो जो इस एरिया में किया हुआ है, जो उन्होंने रिसर्च की है, वो अगर शेयर करेंगे कि सेमिनार मोड में आप वहाँ पे आपके को अंडरग्रेड स्टूडेंट और टीचर फैकल्टी बैठ जाए, तो एक दूसरे के साथ शेयर करने से बंदा वो भी लर्न करेगा। तो ये भी एक मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मैंने पहले शेयर की है कि यूजुअली मैनी स्टूडेंट्स इन क्लास टीचिंग जब हम बात करते हैं, आपके नॉर्मली स्टूडेंट 20, 30, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश है बाज़-औक़ात, तो यहाँ साइज़ क्लास का बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेंटरिंग के लिए नॉर्मली एडवाइजेबल ये है कि वो उसका जो ग्रुप है वो छोटा होता है, सिंगल भी हो सकता है, 1 मेंटी और 1 मेंटर, या 1 मेंटर के 2 या 3, 4, 5 भी स्टूडेंट हो सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि थीसिस करवाते हैं टीचर, तो वो टीचर, एक टीचर के पास आमतौर पे 2-4 स्टूडेंट होते हैं जो एट ए टाइम थीसिस कर रहे होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो उनके मेंटर ही हैं, जो उन्हें रिसर्च स्किल में पर्टिकुलरली, और ये भी अज्यूम है कि वो उनको सोशल स्किल्स, एथिकल स्किल्स और इस तरह की उनकी तरह के बिल्डिंग के लिए भी बर्तन वो उनको गाइड करते रहें, ताकि अच्छा उस्ताद वही है, मेंटर वही है जो अपने मेंटी की जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका ख्याल रखे। मेथड ऑफ टीचिंग में वेरी करते हैं। आप एक लेक्चर के जरिए पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, तो आप ग्रुप वर्क में शुरू कर देते हैं या कोई और एक्टिविटी दे सकते हैं। लेकिन मेंटोरिंग के लिए नॉर्मली आपके 1, 2, 3 स्टूडेंट जो होते हैं, उसके लिए उतने ज़्यादा वेरिंग मेथड्स जो है वो यूज़ नहीं होते। तो ये मैंने आपके साथ कुछ डायमेंशंस शेयर की हैं। टीचर और मेंटरिंग में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, या टीचिंग और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री से ओरिजिन हुआ और वहाँ से फिर ये आगे चला है, जहाँ पे इंडस्ट्री पे लोग जब नए आते थे तो नए लोग जो थे जो ऑलरेडी उस शोबे में काम कर रहे होते थे, सीनियरों को अटैच कर देते थे, हाँ भी इसको ले जाओ और इसको जो है ना पूरा हफ्ता ये प्लांट दिखाओ और अपना शोबा दिखाओ, वो कि आप कैसे काम कर रहे हैं, और वो सारा उसको काम करने के दौरान ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद कहीं एज पर नीड उनको कुछ ब्रीफिंग भी देते थे और वो क्वेश्चंस के जरिए उनको क्लैरिफाई करते थे, ताकि जिस एनवायरनमेंट में काम करना है उन चीज़ों के बारे में इल्म हो, क्या काम है, असाइनमेंट क्या है, किस तरह की जाती है, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो ये वहाँ से बेसिकली शुरू हुआ, ताकि नए बंदे को आते ही टाइम टेबल ना दिया जाए
ये I based on my 38 years experience, नॉर्मली होता ये है कि जब कोई नया लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में डिप्यूट होता है तो उसको उस तरह वेलकम नहीं किया जाता जैसे वेलकम करना। वेलकम ये सिर्फ ये नहीं है कि उसे चाय पिलानी है और उसके बाद उसे टाइम टेबल दिया जाए, नहीं। वेलकम ये है कि उसे प्रिंसिपल भी उसे वेलकम करे, उसको थोड़ा सा चाय वाय पिलाए और उसको थोड़ा सा ब्रीफ करे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, इस तरह एक जनरल कॉलेज के बारे में ब्रीफिंग दे। फिर वो उस डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको रेफर करें और वो उनके साथ मीटिंग करें। फिर उन्हें जो है वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल से फैकल्टी के साथ उनका इंट्रोडक्शन कराएं, बाकायदा ऑर्गेनाइज करें एक वेलकम पार्टी, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और उसके बाद उसे ब्रीफ करें कि किस तरह क्लासेस यहाँ चल रही हैं, असेसमेंट स्टूडेंट्स की किस तरह हो रही है और कौन कौन सी को करिकुलर अगर एक्टिविटीज़ हैं उसके कौन इंचार्ज हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं करिकुलर और को करिकुलर उनके बारे में मतलब ब्रीफिंग दी जाए। और इसमें मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं कि चंद क्लासेस जो सीनियर हैं उनकी वो ऑब्जर्व भी करें और उसके बाद कोई हफ्ता कम से कम उन्हें जो है कोई 1 वीक और 2 वीक्स उन्हें कैन ऑब्जर्वेशन के लिए या चीज़ों को वो उसको देखें। उसके बाद उन्हें टाइम टेबल दें कि आप जो है ये क्लासेस जो हैं जो आपके एरिया से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, आप जो कोर्सेज आपको रेलिवेंट है आप ये इनको लें और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका एक मेंटर भी आप मुकर्रर कर सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है या कोई और सीनियर टीचर जो है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वे यू कैन शेयर, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, वी आर कलीग्स। तो उस जिस तरह उसको ब्रीफिंग देनी चाहिए, मेंटरिंग का प्रोसेस करना चाहिए एज ए मेंटर आप कह लें, वो नॉर्मली जो है वो नहीं किया जाता विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू कॉलेजेस और फ्यू यूनिवर्सिटीज। यही अदारा स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट ये जो प्रैक्टिसेस हैं इन पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी की दी जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा तो ओनरशिप होगा कि वो या एक जो सेल्फ मोटिवेशन होगी कि इन्होंने मुझे कितने अच्छे तरीके से डील किया है, वेलकम किया है, अदारे में जो काम है वो बड़े सलीके के साथ हो रहा है, तो वो कॉलेज की एक ओवरऑल एनवायरनमेंट से मुतासर होकर खुद बहुत ही उसको वो लाइक करेगा और उसकी कमिटमेंट बढ़ेगी। ये हैं चंद एक बेनिफिट्स आपने भी बताए, हमें तफसील में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये और भी कुछ हो सकते हैं। सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, इसमें जो ग्रुप छोटा होता है लर्निंग नीड्स, फिर एनकरेजमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर, ये भी मौका मिलता है चूँकि थोड़े स्टूडेंट होते हैं, मेंटी होते हैं, वो आपस में शेयर कर सकते हैं उनके एटीट्यूड स्किल और इस पर रिफ्लेक्शन भी मिल सकती है। ऑन दी जॉब बोथ मेंटर और मेंटी, मैंने आपको कहा दोनों सीखते हैं, दोनों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज होता है मेंटी का, अगर आप सही तरीके से उसको मेंटर कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो फिर बेहतर होगी, जो भी जिस एरिया में भी आप उसको गाइड कर रहे हैं। तो अभी हमारे 2-3 डियर पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इसमें सिर्फ वो नॉलेज या बुकिश नॉलेज या वही शामिल नहीं है, बल्कि अच्छा मेंटर वही है जो उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे। ये आखिर में मैंने लिखा भी हुआ है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक से मुराद ये है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, उसकी सोशल डेवलपमेंट भी हो, उसकी आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो और उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो। तो ये सारे जो डोमेन्स हैं उसको ज़हन में रखें ताकि वो उसकी शख्सियत जो है वो सही मानों में उभरे। तो एक बेनिफिट इससे, जब मेंटर अच्छे तरीके से मेंटरिंग करेगा तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होगा, उससे ओनरशिप बढ़ेगी और वो काम की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होगी। मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे किया था टाइप्स ऑफ मेंटर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया उसमें और अपनी अपनी राय दी और टाइप्स आपने बताई। मैं ज़रा उनको कंपोज करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
इनफॉर्मल मेंटरिंग, इसके एग्जांपल मैंने वैसे आपको दी थी, दोस्तों के साथ बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, आपको याद होगा। अब तो शायद उस तरह प्रैक्टिस नहीं है, अब भी होगी लेकिन उतनी नहीं है। ये वालिदैन जो है या बड़े दादा नाना नानी दादा दादी या वालिदैन बहुत छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते थे शाम को बैठ के, या किसी वक्त जो है ये सबक आमेज चीज़ें जो है वो कोई ना कोई किस्से सुनाए, कोई स्टोरी सुनाई। जिस तो ये क्या है, ये बेसिकली मेंटरिंग के मोड ही थे, जो कि विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें सोशलाइजेशन जो है वो अब मोबाइल की तरफ बढ़ गई है। पास बैठे होते हैं लेकिन वो अपना मोबाइल में मसरूफ होते हैं। तो ये इनफॉर्मल अलबत्ता ये मेंटरिंग का है। तो इस मोबाइल को भी फॉर्मल या इनफॉर्मल मेंटरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग करते भी हैं, इससे एकेडमिक काम शेयर करते हैं। दूसरा है फॉर्मल अपने, ये भी है एक मेंटरिंग है कि टारगेट को सेट किया जाता है, मसलन कौन मेंटर होगा, कौन मेंटी होंगे, कब मीटिंग होनी है, कितनी देर की मीटिंग होनी है, कहाँ। तो इस तरह की चीज़ें किसी लिहाज से टू सम एक्सटेंड बाज़ात ये प्लान भी मेंटरिंग होती है, लेकिन इसके लिए उस तरह क्लासरूम जैसे टीचिंग है उस तरह की प्लानिंग शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं और उस क्लास के लिए फिर मुख्तलिफ टीचर्स पढ़ाते हैं, टाइम टेबल और क्लासरूम और टाइम ये फिर ज़रा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। फिर इसी तरह एक सेल्फ मेंटरिंग है कि मेंटर नहीं है लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है और खुद से सेल्फ मेंटरिंग है। मसला है देखा प्रिंसिपल तो बहुत कमिटेड है अदारे के, हम बाज़ात जो है वो कोई टीचर होते हैं अच्छे जो 8 बजे पहुंच जाते हैं या 8:30 जब अदारा होता है, देखा कि ये यार ये हमारे प्रिंसिपल साहब रोज यहाँ पे आके बैठे होते हैं, हम 8 बजे आए, 8:30 आए, 8:15 आए, 7:30 आए, ये पहुंचे होते हैं। तो मोटिवेशन है कि मैं भी पंक्चुअल हो जाऊं। तो अब कुछ तो ऐसे हैं जिनकी सेहत पे फर्क तो नहीं पड़ता, कुछ ऐसे होते हैं चले, लेकिन मोस्टली फिर वो इसको फील करते हैं इन गुड सेंस कि वो भी टाइम पे आने की या उससे जल्दी आने की कोशिश करते हैं। तो ये सेल्फ मेंटरिंग, हालांकि प्रिंसिपल ने नहीं कहा उन्हें या उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने नहीं कहा, अगर वो भी इसी तरह पंक्चुअल है और टाइम पे आता है चीज़ों को, तो ये एक सेल्फ मेंटरिंग है कि बंदे ने दूसरे को देखा, उसके एक्शंस को देखा, उसके करैक्टर को देखा, उसके काम को देखा और उसमें भी जुस्तजू पैदा हुई कि वो भी अपने आप को इस तरह का कर ले, रोल मॉडल जैसे ये। तो मैं भी इस तरह करूँ। फिर 1 to 1 यार मैं बात कर रहे हैं व्हेन ए मेंटर गाइड्स 1 मेंटी, तो ये 1 to 1 होगी। अगर एक मेंटर है 2 3 4 उसके मेंटीज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, नॉर्मली एक टीचर के पास 3 4 5 जो है वो स्टूडेंट होते हैं जिनको थीसिस करवा रहा होता है। हमारे वक्त में जब अब शायद ये कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिसेस अब भी हो लेकिन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हमारे जब हमने कॉलेज में थे, आई स्टिल रिमेंबर इन मिड 70s में जब हम पढ़ाते थे तो उस वक्त पढ़ते थे तो उस वक्त एक पीरियड होता था मेंटोरिंग का, सॉरी ट्यूटोरियल्स। तो ट्यूटोरियल्स बेसिकली ये मेंटोरिंग होती थी, हमें किसी 8-10 स्टूडेंट को एक टीचर के साथ अटैच कर दिया जाता था। हर हफ्ते एक क्लास हमारी 1 घंटे की होती थी, वो टीचर हमारे साथ शेयर करता था अपने एक्सपीरियंसेस और कोई हमें प्रॉब्लम होते थे हम उनके साथ शेयर करते थे। कभी कभार जो है वो खाने पीने की बात वो इस तरह हो जाती थी, या कभी हम गेम भी इकट्ठे वो हमें कहते थे हाँ चले खेलते हैं, वो हमें। तो फार्मली और इनफॉर्मली वो क्लास मैंडेटरी होती होगी, उससे भी एक जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिश्ता है वो भी मुस्तहकम होता था। और अब भी ये कुछ टीचर जो हैं वो प्रैक्टिस इस तरह की कुछ अदारों में पाई जाती है। एक है वर्चुअल बेंच कि जैसे अब हम कर रहे हैं रिमोट के जरिए कि डिस्टेंस के थ्रू, तो ये भी पेंडेमिक की सूरत में ये भी एक मेंटरिंग की टाइप्स है। फिर एक मल्टीपल मेंटरिंग कि मेंटी एक है लेकिन मेंटर ज्यादा है। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, एक स्टूडेंट है उसको 2-3 टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी का एक टीचर उसको गाइड करता है। इसी तरह वैसे तो कॉलेज में हर एक का टीचर का अलग से वो टीचर है, तो एक टीचर को बहुत सारे, एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं
तो वो उसके में इन अदर वर्ड्स जो है वो मेंटर हैं। इसकी और एग्जांपल आप देख सकते हैं, बाज़ औकात कुछ जो ज़्यादा एलीट क्लास के लोग होते हैं उन्होंने घर में ट्यूटर लगाए होते हैं, 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का एक ट्यूटर आया, फिर अगला आया, तो 2-3 इस तरह ट्यूटर उसको मुख्तलिफ जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो दे मे एक्ट एज ए मेंटर ऑफ देम। रिवर्स मेंटरिंग, ये पहले भी मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि सीनियर जूनियर से सीखे, जूनियर भी सीनियर से सीख सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पीएचडी की है और वो आए हैं, आप उनसे कुछ चीज़ें जो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता या पता है, लेकिन टू दैट लेवल आपका नॉलेज या स्किल वो नहीं है, तो आप उस ही और शी मे एक्ट एज ए मेंटर। तो ये रिवर्स मेंटरिंग कहलाती है। फ्लैश मेंटरिंग अभी बताई शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे अब हम शॉर्ट टाइम के लिए बैठे। तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब हैं कुछ मॉडल्स भी। मॉडल्स की जो बात की थी, तो वो कुछ ये 3-4 मॉडल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो लिटरेचर में मिलते हैं। पहला मॉडल अप्रेंटिसशिप मॉडल है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि ये ट्रेनी इंडस्ट्री में जाते थे और उनको साथ में ला के कहते थे हाँ भी चलो आप जाएं और देखें क्या हो रहा है, इस जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है आप इसको ऑब्जर्व करें और सीनियर के साथ इसको अटैच कर देते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप मॉडल पहला जो है, ये सबसे पुराना यानी ज़्यादा यूज़ होने वाला पहला मॉडल था। इसकी फिलॉसफी थी लर्निंग टू सी और ऑब्जर्व। दूसरा जो मॉडल था, मॉडल लिटरेचर में मिलता है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है, लर्निंग टू टीच। इसकी फिलॉसफी ये है कि मेंटर प्लेज द रोल ऑफ ए ट्रेनर, जिससे उसकी स्किल को डेवलप किया जाता है और उसकी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज किया जाता है। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग जो है इसका फोकस किया जाता है। तीसरा मॉडल भी लर्निंग टू टीच है, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है कि जो ट्रेनी है, मेंटी है, वो सीखता भी है और उसके बाद उसे कहा जाता है आप अपनी रिफ्लेक्शन, जैसे लेसन पढ़ाया उसके बाद आपने अच्छी कुछ टीचर्स हैं वो कहते हैं ओके प्लीज रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट आई हैव टॉट। उससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो उन क्वेश्चंस का जवाब दे जो एट द एंड टीचर बोलता है, बल्कि उसे मौका दिया जाता है कि इफ यू वांट टू शेयर एनी अदर थिंग, एनी एग्जांपल विद रिगार्ड टू दिस लेसन जो कि आज हमने पढ़ा है, तो अपनी फीडबैक उस पर देता है। तो ये क्रिटिकल अप्रोच को फर्दर एनहांस करने के लिए ये फिर उससे रिफ्लेक्शन भी देती है, लर्निंग टू टीच एंड रिफ्लेक्ट अपॉन। तो ये वाले मॉडल की फिलॉसफी ये है। चौथा जो मॉडल है वो है 5 फैक्टर मॉनिटरिंग मॉडल। इसके 5 पैरामीटर्स हैं, ये आपके सामने है। इसके हॉडसन इसका जो है हेड है। तो ये जो 5 इसके पैरामीटर्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें उसकी पर्सनल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स कह सकते हैं। फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे कि फोकस ऑन करिकुलम रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज है। फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज, फिर मॉडलिंग ऑफ एफिशिएंट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस है। एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है जी सर, रिक्वेस्ट करें ये बंद कर दें। बिलाल साहब प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का माइक जो है, सर ये सीबीएम लिखा था पिछली स्लाइड पे, मैं वो देख नहीं पाई। प्लीज हाँ, व्हाट डज इट कॉम्पिटेंस, जी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, यानी कॉम्पिटेंस को आपने जो है इसका फोकस होता है, उसकी कॉम्पिटेंस को जो है वो करना है। तो ये एक और मॉडल है। बहुत सारे मॉडल मिलते हैं, मोर और लेस। देखिए इनका जो एक कॉमन पर्पस है वो वही है कि जो आपका मेंटी है उसकी आपने कॉग्निटिव डोमेन को बेहतर करना है, उसके इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग को बेहतर करना है और उसके कॉग्निटिव और उसके साइकोमोटर डोमेन को आपने फोकस करना है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव आपने सुना होगा कि आपने उसको नॉलेज को एनहांस करना है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, उसमें सिंथेसिस और एनालिटिकल एबिलिटीज पैदा हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग के साथ इनका ताल्लुक है। दूसरा जो डोमेन है वो है इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कि आपका मेंटी सच बोलने वाला हो जाए, वो लायल हो, वो डिसेंट हो,
वो कमिटेड हो, वो कॉन्फिडेंट हो, वो एक अच्छे करैक्टर का मालिक हो, वो जो है वो उसमें पेशेंस हो, वैल्यूज का एहतराम करे, एथिकल कंसिडरेशन को मद्देनजर रखे। तो ये सारी चीजें क्या है, उसका एटीट्यूड पर्सनैलिटी के हवाले से है। इसको कहा जाता है इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, AFFECTIVE। तीसरा जो डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स, साइंस है, गेम्स है। तो इनसे भी जो है ये भी चूंकि अदारों का एक पार्ट है कि इसका मकसद भी ये होता है कि उन्हें वो इससे डिसिप्लिन सीखते हैं, कमिटमेंट सीखते हैं, वो पेशेंस सीखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये जो रिक्रिएशनल इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनका भी एक पर्टिकुलर पर्पस है। तो मैं मेंटरिंग की एग्जांपल मैंने आपके साथ एक तो कॉलेजेस में अपनी शेयर की कि मैं मिड 70s में जब मैं FSC में था तो हमारा एक पीरियड होता था ट्यूटोरियल्स का। अच्छा, वो इन अदर वर्ड मेंटरिंग के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई भी टीचर अपॉइंट होता है तो उसे जब ऑर्डर मिलते हैं तो उसके ऑर्डरों पे लिखा होता है यू विल बी प्लेस्ड। आपसे रिक्वेस्ट है बिलाल साहब, अगर आपके पास कंट्रोल है, होगा यकीनन, तो ये जो माइक ऑन है तो अगर आप ऑफ इसको कर दें ताकि डिस्टॉर्शन ज़रा ख़त्म हो जाए। आई रिक्वेस्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनका कहीं गलती से मेरा ऑन है, इसको ज़रा ऑफ कर दें ताकि ये बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था प्रोबेशन कि ये जो जब ऑर्डर मिलते हैं यू विल बी प्लेस्ड ऑन ए यू आर प्लेस्ड ऑन ए पीरियड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन प्रोबेशन। बेसिकली इसकी फिलॉसफी ये है कि 1 साल आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, आपका एक मेंटर होगा जो आपकी, वो मेंटर आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई और सीनियर हो सकता है। वो ड्यूरिंग द कोर्स आपको ऑब्जर्व करता रहेगा कि आपकी टीचिंग, आपकी असेसमेंट, आपकी क्लास कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक हैं। आफ्टर 1 ईयर ही और शी विल सबमिट ए रिपोर्ट, बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट यू विल बिकम परमानेंट। ये बात ज़हन में रखें, ये फिलॉसफी है प्रोबेशन की। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस फिलॉसफी पे अमल नहीं किया जाता अगर प्रोबेशन के दौरान। लेकिन ये बात आपको मैं गोश्तगुजार ज़रूर करना चाहूँगा, आपके उस 1 या 2 साल प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपका प्रिंसिपल आपके अगेंस्ट वो लिख के भेज देता है, आपकी जॉब जो है वो ऑटोमेटिकली भी टर्मिनेट हो सकती है। यू विल हैव नो राइट टू क्लेम इवन एनी कोर्ट। तो हाँ, उसके वो जो आपकी किसी के खिलाफ अगर जो ये रिपोर्ट उसमें लॉजिक हो, वो सही हो जो उसने की। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में ये चीज़ें हमारे कल्चर में, अदारों में ये नहीं होती कि जब कमीशन से सिलेक्ट हो गया, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन बोर्ड ने उसको सिलेक्ट कर लिया, वो लिखा ज़रूर होता है ऑन परमिशन, बंदा ये समझता है कि आप में परमानेंट है, मुझे नहीं लगा। तो ये बेसिकली पहला साल या दूसरा साल, यूके में ये प्रैक्टिसेस कुछ कंट्रीज में हैं कि वहाँ पे वो स्ट्रक्चर्ड है। उसकी 1 ईयर की जो पहला साल है उसको न्यूली इंडक्टेड टीचर्स कहते हैं। तो जो जब वो सेटिस्फैक्टरली पूरा होगा फिर उसकी परमानेंट इंडिपेंडेंट ऑर्डर होंगे एज ए टीचर। अदरवाइज वो NQTZ कहना है, न्यूली क्वालिफाइड टीचर। ये मैंने आपको यूके की एक एग्जांपल जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। अभी जो मैं बात कर रहा था उसको वो कहते हैं क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। लाइसेंस ज़रूरी है, वहाँ पढ़ाना है। अक्सर कंट्रीज़ में ऐसे है कि वहाँ लाइसेंस होगा तो आप एज ए टीचर कॉलेज स्कूल में पढ़ा सकेंगे, अदरवाइज आप पढ़ा नहीं सकेंगे। फिर जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे बकायदा मेंटर मेंटी की मीटिंग्स हैं, वीकली भी हो सकती है मीटिंग, फोर्टनाइटली भी, यानी आफ्टर 2 वीक्स भी हो सकती है। इट विल डिपेंड अपॉन जो भी उसका एरिया है उसमें होगा। फिर मेंटी मीटिंग्स जो हैं ऑन जनरल प्रोफेशनल मैटर्स भी हेड्स के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ, ये दिस इज
should be a feature in the colleges and all in the universities as well as the schools. तो ये कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो कुछ कंट्रीज में इस तरह चल रही हैं, बल्कि बात में ये है कि वो मेंटर्स तैयार करने के लिए एकेडमीज हैं, उनके गवर्नमेंट के अदारे हैं जो मेंटर प्रिपेयर करते हैं, तो वही बंदा मेंटर होगा किसी कॉलेज स्कूल या अदारे में जिसने वो ट्रेनिंग कोर्स क्वालिफाई किया हुआ है। तो बगैर जो है वो ट्रेनिंग लेने के मेंटर की वो ट्रेनर नहीं लग सकता या मेंटर नहीं लग सकता। तो ये भी इस तरह कुछ कंट्रीज में प्रैक्टिस भी है। इफेक्टिव मेंटोरिंग के कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिसन पेशेंटली टू द मेंटीज। एक है कि अपने मेंटीज की बात को गौर से सुनना चाहिए ताकि उसकी ग्रूमिंग हो, इंडिविजुअल अटेंशन उसको मिले। मास्टरी इन मेंटरिंग थीम, मेंटर ने जिस थीम पे अपनी मेंटी को पढ़ाना है, कोच करना है, गाइड करना है, उसकी एक्सपर्टीज उसमें होनी चाहिए। फिर उसे लेटेस्ट प्रोफेशनल स्किल्स भी आनी चाहिए। लेटेस्ट प्रोफेशनल स्किल्स से मुराद ये है कि उसे हाउ टू टीच का भी, हाउ टू मेंटर का भी पता हो। मतलब बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि टीचर बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड है, लेकिन क्लास में जाकर डिलीवर करने में उसे उतनी कमांड नहीं होती। कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है पढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ थीम्स हैं, मैं जैसे हमारे यहाँ पे डियर पार्टिसिपेंट कुछ लैंग्वेज के हैं, अरबी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह के हैं। They will, I think, support me in this regard कि रीडिंग के लिए, रीडिंग को प्रमोट करना है, उसके लिए और स्ट्रेटजी यूज करेंगे। जब तक कि आप उसके रीडिंग करवाएंगे नहीं, वो स्किल प्रमोट नहीं हो सकती। स्पीकिंग स्किल को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेशन वर्बल को करने के लिए आप उसको वर्बली बोलने का मौका देंगे, ओरली क्वेश्चन आंसर होंगे, डिस्कशन होगी, फिर उसको प्रमोट कर सकते हैं। राइटिंग स्किल को आपने प्रमोट करना है तो उन्हें रिटर्न वर्क देंगे और उसको चेक करेंगे, फीडबैक देंगे। तो ये क्या है, आप अकॉर्डिंग टू द थीम या टॉपिक या जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आपने पढ़ाना है, तो उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी, आप टीचिंग स्किल जो है वो यूज करेंगे और उसको असेस करेंगे अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर आप दूसरे सब्जेक्ट भी लें तो जो मुख्तलिफ थीम्स हैं उन हर थीम को पढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर मैथमेटिक्स है फॉर एग्जांपल, उसमें सेट को किस तरह पढ़ाना है, मे बी उसके लिए डिफरेंट मेथड हो। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ानी है, उसके लिए डिफरेंट हो। आपने कोई थ्योरम वगैरह पढ़ाने हैं, ज्योमेट्री पढ़ानी है, तो हर थीम के लिए, टॉपिक के लिए, पढ़ाने के लिए बाज़ बात डिफरेंट टेक्निक्स विद इन द सेम डिसिप्लिन यूज होती हैं। तो ये टीचर को, मेंटर को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। बिल्ड रिलेशंस विद द मेंटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसके क्लोज होना चाहिए, उसका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है होना चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए एक जो मेंटर। तो टीचर तो देखिए बाजू का अथॉरिटेटिव हो जाता है, वैसे तो टीचर के लिए भी नहीं अच्छी बात, लेकिन मेंटर, चूंकि आप मेंटर 2-3 स्टूडेंट्स के हैं या 1-2 अपने कोलीग्स के हैं, तो इसलिए आप जो है वो उनको नहीं कर सकते इस सिलसिले में। तो अथॉरिटेटिव जो है वो आपको नहीं होना चाहिए मेंटर को। फिर आगे है एनकरेज कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अपना जो मेंटी है उसको, मैं जरा क्लास पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद मेरे पास आ जाए। सर माइक जो है डिसेबल करवा प्लीज, पीछे से आवाज सर आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी,
I request No all the, sound. I'm sorry, I request all the participants to off their mics because it is not good that some of us are facing problem and they are not listening properly. At my end, there is no issue, but might be there uh, any mic maybe issue somewhere. तो I request बिलाल साहब अगर वो हमारे साथ हैं तो ऑफ कर दें बाकी अगर किसी का माइक जो It's really, sir, it's really very disturbing, and I don't know why people are so irresponsible. Very disturbing. I just request क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं तो हमें रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं तो सर एक्चुअली कोई भूल गया है, उसको पता नहीं है कि मेरा माइक ऑन है। ये अगर वहां से डिसेबल हो जाए ना PHEC से तो सर फिर ही मसला हल हो सकता है। लेकिन सब चेक तो कर सकते हैं ना कि किसका माइक ओपन है और किसका नहीं है। ये हाँ जो वो कंट्रोल फिलहाल सब कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूट कर देता हूँ माइक, की दोबारा अनम्यूट कर लेते हैं। अब इसमें या तो इनके माइक फिर कंप्लीटली डिसेबल कर दूं मैं ये। नहीं वो बिलाल साहब फिर ये है कि जब किसी ने क्वेश्चन करना होगा तो मेरा ख्याल है आप अनम्यूट कर दें इनके। तो मैं अभी आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो फिर इनको मौका दूंगा क्वेश्चन करने का, तो फिर ये इस वक्त डालने हाँ जी फिर इनको मौका दे। थैंक यू बिलाल साहब। अच्छा जी, ये एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनकरेज कॉन्फिडेंस इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसका ख्याल रखना है मेंटर ने। फिर एस्टैब्लिश प्रोटेक्टेड टाइम मैनेजमेंट, ये किस टाइम पे मेंटरिंग सेशन होना है, कितनी देर के लिए होना है, क्या उसका पर्पस है, कौन सी स्किल अपनी मेंटी के प्रमोट करनी है। तो रेलेवेंट आइडियाज जो है वो शेयर करने हैं। अच्छा, अंटिल अनलेस आपका मेंटी आपके पर्सनल मैटर शेयर नहीं करता या नहीं करना चाहती या करना चाहता है, उस वक्त तक किसी की जो पर्सनल है चीज़ें वो मेंटर को मेंटी से नहीं पूछनी चाहिए। हाँ अगर कोई मेंटी शेयर करना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहिए अपने पर्सनल मैटर्स के लिए, तो देन द मेंटर ऑफ कोर्स शुड गाइड इन ए प्रॉपर वे। प्रोवाइड इंट्रोडक्शन बाय मेंटर। मेंटर को अपना मतलब साफ ज़ाहिर तारफ भी कराना चाहिए, मेंटी को भी अपना कराना चाहिए। वो उनको आपस में एक जिसको कहते हैं अच्छी रैपो डेवलप करनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव किस्म की बातें और शेयरिंग उसमें होनी चाहिए, ना कि इररिलेवेंट बातें बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ लोग करते हैं जो कि वो नहीं है। मेरा वैसे ये एक्सपीरियंस है कि ये बात मैं आई हैव ऑब्जर्व्ड सम टाइम बिकॉज आई हैव वर्क in many institutions in my life as a head भी काम किया है, head of the department भी किया है, head of the institution भी किया है। तो उसमें बाज़ हमारे कलीग जो है वो फिर मसला मैं रिसर्च की बात ही करता हूँ। आप रिसर्च का बनाया है एडवाइज़र या सुपरवाइज़र, अब वहाँ पे ज़ाती कहानियों से या ज़ाती कुछ इस तरह की और बातें उससे की जाती हैं जो इसका मकसद है इस सिलसिले में। हाँ, कोई ऐसी बात शेयर करना मेंटर के लिए जिसमें एक लेसन हो और वो जो अपने स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात पर्सनली इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जो असल रिसर्च स्किल को प्रमोट करना है वो चीज़ जो है वो रह जाती है। डायमेंशंस ऑफ मेंटरिंग एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल। एक डायमेंशन है टीचर्स की मेंटरिंग, स्टूडेंट मेंटरिंग है, फिर टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ है। 3 डायमेंशंस हैं कॉलेज स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। यानी टीचर की मेंटरिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, सीनियर टीचर है, नया आया है, उसको वो मेंटर कर सकता है सब्जेक्ट के लिहाज से या किस तरह पढ़ाना है। PhD तो की है लेकिन क्लास नहीं कभी पढ़ाई, तो इस आई एम नॉट फ्री। कहाँ से आए? बेटे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप बैठ गए। तो आप आधे घंटे बाद सर ये डॉक्टर शुक्र साहब की बात नहीं है। अच्छा ठीक है राजू, मुझे मिलना है तो आधे घंटे बाद आप। ओके आई एम सॉरी मैं चुके
जो है ना अपने उस पे ऑफिस के बाहर लगा नहीं सका दैट आई एम एन ऑनलाइन क्लास, तो उसकी वजह से ये कोई लोग आ गए मिलने के लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, ये 3 डायमेंशंस हैं, टीचर्स मेंटरिंग कॉन्टेक्स्ट से, स्टूडेंट मेंटरिंग कॉन्टेक्स्ट से और टेक्निकल। तो टीचर को मेंटर कर सकता है, सीनियर जूनियर को, और बाज़ का जूनियर सीनियर को। दूसरा है स्टूडेंट की मेंटर। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए कॉलेज में, खास तौर पे जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं या इवन थर्ड ईयर में बाज़ बात जाते हैं, आगे वो BS लेवल पे जो शुरू का पीरियड होते हैं, तो इसमें इनको खास गाइडेंस इनके करैक्टर के हवाले से है, इनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के हवाले से हो सकती है, तो वेरियंट पर्पसेस के लिए, ताकि वो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें कॉलेज में। तो स्टूडेंट खास तौर पे जब नए आए कॉलेज में, तो उस वक्त उन्हें गाइड करना, मेरा ख्याल है कि अगर आप छोटा ग्रुप है तो वो तो फिर जो क्लास का जैसे टीचर या कोऑर्डिनेटर या जो भी है वो उसको हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर बड़ी क्लास है तो आप उसको डिवाइड करके चंद स्टूडेंट हर एक को कर सकते हैं कि आप अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन कंसल्ट दिस टीचर और दैट टीचर। तो न्यू स्टूडेंट जब एनरोल होते हैं उस वक्त खास तौर पे उन्हें उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। कॉलेज में नए आए, अच्छे कॉलेजेस में ये प्रैक्टिसेस हैं कि नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आए तो उनकी बाकायदा ओरिएंटेशन होती है। वो उनको बताते हैं कॉलेज का रूटीन क्या है, सब्जेक्ट को कौन कौन से उन्होंने पढ़ने हैं, कौन क्लासरूम है, लाइब्रेरी कहाँ है, तो टाइम टेबल के बारे में और रूल्स रेगुलेशन के बारे में उनको अवेयरनेस दी जाती है। ये अच्छे कॉलेजेस में ये प्रैक्टिसेस जो है वो चल रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी, ये बेसिकली ये भी एक मेंटोरिंग का ही एस्पेक्ट होता है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं ताकि उनका टाइम सही तरीके से कॉलेज में यूज़ हो और वो लर्न कर सकें। अच्छा, तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ। ये भी ज़रूरी है कि आपके पास टेक्निकल लैब का स्टाफ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ भी बाज़ होता है, बल्कि लाजमी होता है। फिर सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी उसकी उनको भी गाइड करना फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ़ यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके पास साफ ज़ाहिर है कि साइंस लैब है, तो आपने उसके बाद उसको जो लैब असिस्टेंट है उसको आपने करना है। बस फीमेल जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टाफ जो है वो मेल बाजुकात जो है लैब असिस्टेंट वगैरह हैं या और भी स्टाफ, तो इनको भी बड़ा क्लोजली जो है वो उनकी मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इस सिलसिले में भी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई मेंटरिंग सेशन अपने हेड HOD के साथ रखनी चाहिए। इसी तरह HODs को अपने जो है टीचर्स के साथ और जो रेस्पेक्टिव इंचार्ज हैं उस लैब के या उस लाइब्रेरी के, उनको भी जो है वो मेंटरिंग सेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर्मली और इनफॉर्मली ज़रूर करना चाहिए। तो ये 3 डायमेंशंस मैंने आपके साथ शेयर। मैंने अभी आपके साथ एक बात शेयर की थी कि बाज़ अदारे पहले मेंटर तैयार करते हैं और फिर उन्हें मेंटर का रोल देते हैं, यानी उनका कोई क्राइटेरिया बनाते हैं। मसलन एक मैंने आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि नॉर्मली वो कहते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, फिर आप मेंटर के तौर पे काम कर सकें। फिर ये भी है कि वो मेंटर के फिर ट्रेनिंग करवाते हैं कपल ऑफ वीक्स की। वो ट्रेनिंग जो क्वालिफाई करेगा उसको एज ए मेंटर जो है वो करेंगे कि वो जो नए आने वाले टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या कोलीग हैं उनको वो मेंटरिंग करेंगे। अब तो कुछ अच्छे जो डेवलप कंट्रीज में मेंटरिंग के बकायदा अदारे इस्टेब्लिश हो गए हैं जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन में जो है मेंटर ट्रेनिंग मेंटर्स ही सिर्फ तैयार करते हैं और वो फिर जाके आगे जो है अपना अपना रोल अदा करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन कोलीग्स स्टूडेंट्स कि यानी वही मेंटर होगा जिसका रोल, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट उसको कोलीग से मिली है या एज ए बेस्ट टीचर अवार्ड उन्होंने लिया हो, तो उस वो भी क्राइटेरिया हो सकता है कि मेंटर सिर्फ वो होंगे जो बेस्ट टीचर अवार्ड जिन्होंने लिया हो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने अपने डिसिप्लिन। तो बाज़ अदारे
जब मेंटर्स की सिलेक्शन करते हैं तो इस चीज़ को भी देखते हैं कि उनको प्रायोरिटी देते हैं। प्रिपेयर मेंटरिंग शेड्यूल कंसल्टिंग मेंटीज, कि जो शेड्यूल बनाया जाए मेंटर और मेंटी की मीटिंग्स का, मेंटीज के साथ डिस्कस किया जाए, ये नहीं अपनी मर्जी से कर लिया जाए जैसे हम टाइम टेबल क्लास में बनाते, फिर तो टीचिंग और मेंटरिंग जो उसमें फ़र्क ही खत्म हो जाएगा। तो मेंटरिंग प्रोसेस में मेंटी को ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रोल अदा करना होता है कि उसकी कंसल्टेशन से आप अपना शेड्यूल बनाएं कि आपको भी फीजिबल हो एज ए मेंटर और उसको भी एज ए मेंटी। शुड हैव कमिटमेंट टू स्पेयर 1 or 2 hours एवरी वीक। अच्छा, अब मेंटर अगर किसी ने काम करना है तो उसके लिए साफ है वो कमिटेड होना चाहिए, 1 से 2 घंटे कम से कम हर हफ्ते उसे आपकी मेंटी के साथ मीटिंग करनी है। उस टाइम पे वो बिल्कुल फ्री हो जैसे क्लास में उसने पढ़ाना है, ताकि उस टाइम को फुली अपने मेंटी को गाइड कर सके। तो इस तरह वॉलंटियर या नहीं होना चाहिए, तभी वो ओनरशिप होगी। हैव डिजायर्ड एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट एरिया, जिस सब्जेक्ट में मेंटरिंग करनी है वो उसका एक्सपर्ट हो, ये भी जरूरी है। कोऑपरेटिव और फैसिलिटेटर हो रादर देन अथॉरिटेटिव, ये मैंने पहले बात की है। हैव एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट्स टीचर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है अच्छे मेंटर का होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को मौका दे कि वो उनको अपने मेंटीज को कि वो क्रिटिकली चीज़ों को परसीव करें। तो अच्छी एसेंशियल्स फॉर, जैसे मेंटर्स के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं ऐसे मेंटीज के लिए भी जरूरी है कि मेंटी आफ्टर ऑल साहब ज़रा मेंटी ही सीखने वाला है तो उसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, मीटिंग को अटेंड करना चाहिए जब उसको फिक्स की जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करना चाहिए अपने मेंटर को, ना कि इधर उधर भागा जाए। रेस्पेक्ट करें अपने मेंटर के और कंसिस्टेंटली अच्छा बिहेवियर इम्प्रूवमेंट शो करें। मसला हमने रिसर्च में देखा है, आप में से जो लोग रिसर्च को सुपरवाइज करते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है, स्टूडेंट को हम बाज़ औक़ात कहते हैं हाँ भी ये प्रपोजल बना के लाओ, वो बजाय प्रपोजल बनाने खुद से काम करने के किसी और टीचर के पास चला जाएगा जिसकी ज़रा स्किल बेहतर है, सर मुझे ज़रा गाइड करें इसमें। अच्छा, खुद नहीं काम करना, वो पकी पकाई खीर जैसे कहते हैं तो मिल जाए इस तरह, ताकि खुद से सोचना ना पड़े। और इधर उधर या कोई सीनियर स्टूडेंट है उससे कुछ मिल गया लिखा हुआ तो उसको कॉपी पेस्ट किया और वो फिर आ गया। जब पूछा जाता है हाँ भी ज़रा एक्सप्लेन करें इसको, उस वक्त फिर एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है क्योंकि खुद से तो कोई सोचा या लिखा नहीं, जिसकी वजह से वो फिर डिजायर्ड जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फिर पूरी नहीं होती। तो अच्छा मेंटी के लिए ज़रूरी है कि वो कंसिस्टेंटली उसमें इम्प्रूवमेंट का ग्राफ हो जाए, क्या आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, ये एक एक्टिविटी है, ये अब तो आपके लिए है, आप अपने तौर पे कर सकते हैं अपने अदारे में। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप में से कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हैं, तो सर आवाज आ रही है? जी जी सर एक्चुअली इशू का क्या हुआ है, आपके बैकग्राउंड से ना नॉइस ज्यादा आ रही है, ये इनके माइक तो डिसेबल है। अच्छा अच्छा, अब है, हाँ मैं देखता हूँ जी सर। थोड़ा सा हाँ, थैंक यू, सिर्फ 15 मिनट्स जी। हाँ, तो अच्छा, तो ये मैं शेयर कर रहा था कि ये एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चूँकि, तो ये मैंने ऐसे एक एक्टिविटी रखी है। आप इस एक्टिविटी को एक्टिविटी ही ना समझें, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से एक मेंटोरिंग प्रोग्राम बना लें। नया टीचर आपके डिसिप्लिन में अगर आया है तो आपने उसको किस तरह गाइड करना है। तो ये नीचे मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं कि इन पैरामीटर्स को आप ज़हन में रखें। सब्जेक्ट क्या है, टाइम क्या है, यानी किस सब्जेक्ट में आपने ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने गाइड करना होगा। टाइम, किस टाइम पे आपने गाइड करना है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स क्या होगी, यानी मेंटी मेंटर की जो मीटिंग्स हैं वो घंटे की होगी, 1.5 घंटे होगी 2 घंटे की होगी। फिर आगे वेन्यू क्या होगी, कहाँ पे वो मीटिंग होगी। फिर इसी तरह ज्वाइंट और सेपरेट मीटिंग कि आपके पास अगर दो मेंटीज हैं, 2 नए टीचर हैं, उनके साथ इकट्ठी आपने मीटिंग करनी है, अलग अलग करनी है। इसी तरह आप स्टूडेंट का भी बना सकते हैं, नए स्टूडेंट जो आए हैं उनको गाइड करने के लिए। फिर प्रिंसिपल की क्या इन्वॉल्वमेंट में इसमें कोई होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो क्या, किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए होगी अपने प्रिंसिपल से, क्या लर्निंग मटेरियल आप शेयर करेंगे अपने मेंटीज के साथ, किस तरह उनको असेस करेंगे। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं। इनको ज़हन में रखते हुए आप एक मेंटरिंग प्रोग्राम बना के आप इसको प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं अपने अपने अदारे में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने डिसिप्लिन में, ताकि जो स्टूडेंट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं, आपके पास पढ़ते हैं, उनकी बेहतर कोचिंग हो जाए। और अगर उनके बाज़ औक़ात इंडिविजुअल लर्निंग नीड की ज़रूरत होती है चंद कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो उस टाइम के दौरान वो आपके साथ अपनी पर्सनल जो बातें हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी शेयर कर सकें। टीचिंग लर्निंग के हवाले से अगर उनको इशू है वो भी उस वक्त में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यू कैन गो अहेड बाय डेवलपिंग ए मेंटरिंग प्रोग्राम। तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, it was what I was interested to share with you. So I would request we have 10 to 15 minutes now. You may share your experience. आपने जो आप आज हमने शेयर किया है इसके बारे में कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट बिलाल साहब जो है आपको इजाज़त दे देंगे, आपका माइक जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप, मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आया। जी जी। कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। तो देखिए जो इसका जवाब अगर हम देखें किताब क्या मेंटर हो सकती है, तो देखिए मेंटर हो सकती है अगर वो किताब जो है उस किताब में कोई ऐसी सबक आमोज़ चीज़ें हैं जिससे किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी को साफ ज़ाहिर है कि जब वो उसको पढ़ते हैं अच्छी किताब है तो एज ए मेंटर वो काम कर रही होती है। तो लेकिन ट्रू मेंटर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग ही साफ ज़ाहिर है, हम उनको कहेंगे जो कि अपने कैरेक्टर से, अपनी जो टॉक से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने विजन से, अपनी स्किल से दूसरों को सिखाते हैं। तो अगर देखें इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, अगर किताब ही सिर्फ मेंटर काफ़ी होती तो फिर शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे लिए नमूना और बेस्ट मेंटर बन के तशरीफ लाए एज ए रोल मॉडल और द बेस्ट मेंटर। तो वो चूँकि उसको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी लाइफ को जिसको हम देखते हैं और फिर उस पर जो है हमें अमल करना होता है। तो अच्छा सवाल है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। जी डॉक्टर जावेद हसन डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत 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 ही ज़बरदस्त आपका आज का लेक्चर था, बहुत ही अच्छा लगा। बस मेरा सवाल कोई नहीं, जस्ट मैंने कमेंट किया है। बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तो एहसान। हम अपने स्टूडेंट्स को जब कहीं इस तरह बैठे तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। अब आई हमें भी बड़ी खुशी होती है। आई डोंट हैव द वर्ड्स। कुछ जो है तो कुछ को हम पहचान लेते हैं, कुछ फिर वो सेशन की वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम। जी सर, मेरा नाम इसमत आयरा, मैं सच्चे टाउन कॉलेज गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी सर जी, मुझे एक खास तौर पर मुझे समझ इस बात की अभी तक मैं अक्सर सोचती हूँ। देखिए हमारे वालिदैन हमारे हिसाब से, ये तो नहीं कह सकती कि वो अनपढ़ थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनकी जो तरबियत है वो बहुत बहुत अच्छी है और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी औलाद की वैसी तरबियत करने में नाकाम है।
आप देखिए जैसे आम सी बात है, हमारी एज के जो लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, उस हिसाब से वो काम नहीं है। लेकिन हमारी जो इख्लाकियात है उस लिहाज से हम पढ़े लिखे वालिदैन होने के बावजूद भी बच्चों को तालीम तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान बेइंतहा ज्यादा है। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? आपकी बात मैडम साहब बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि अभी जो लाइफ बिजी हो गई है, उसमें हेलो आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। हेलो जी आवाज आ रही है सर। अच्छा आ रही है। तो आप मैडम साहब बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स आर दी वेरी गुड मेंटर्स। साहब जाहिर है वो अनपढ़ हैं, कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेंटर ज्यादा हाईली पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ भी हो सकता है। देखिए बात ये है, हम कई चीजें ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन वो उनके बिहेवियर से, करेक्टर से पढ़े लिखे भी सीखते हैं। मैं आपके साथ एक मतलब ये बात शेयर कर रहा हूँ। मैं वॉक करने का थोड़ा सा शौकीन हूँ। सुबह मैं आज वॉक करने गया, माई भाई वाज विद मी। तो पार्क में अब एक बड़ा कोई सेम्स पढ़ा लिखा ही बंदा था, वो जो है वो वहाँ से कोई लोग खा के फेंक जाते हैं कागज या इस तरह, वो इकट्ठे करके डस्टबिन में फेंक रहा था। अब दूसरे कुछ लोग उसे देख रहे थे। तो ये एक सेल्फ मेंटरिंग की है, यानी हम में भी आया कि यार हम भी बैठे हुए, चले हमने ये जो है लफाफे या इस तरह की चीज खा पी के नहीं फेंकी, लेकिन फिर भी अगर हम इसको उठा के उसमें फेंक देंगे तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं। तो दूसरों को देखकर या सुनकर इस तरह बाज़ औक़ात वो पढ़े लिखे नहीं भी होते, वो भी मेंटर हैं। हमारे वालिदैन मोस्टली जो मेरी एज के हैं या आप में से कुछ ये नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उन्होंने हमें जो तालीम तरबियत दी, तो वो जो तरबियत है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेंटरिंग। उससे भी बहुत सारी चीजें इस बंदा सीखता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का वक्त का शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपका अगला सेशन होगा। आई एम थैंकफुल टू द PHEC, बिलाल साहब एंड ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank Good morning, everyone. I hope everyone can hear me loud and clear. Thank you so much, Bilal sir, for making me the presenter, and we'll begin the presentation shortly. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you're audible, and yes, ma'am, your voice is also very loud. Okay, thank you. So welcome everyone to our your first training session with me. Actually, we will be having another one on Friday as well, but this one is the first one that I'm going to conduct with your session. Today our session is about communication barriers, and it's basically my specialization. I would like to introduce myself as well, but I guess first of all I should move toward the slides that I have prepared for today's session, and then we can just start with the introduction and formal beginning of our presentation. Please let me know if you can see the slide on the screen. Yes, ma'am, your slides are visible, ma'am. Okay, thank you. That's great. So today we'll be conducting a session about communication skills and communication barriers and their impact on learning. My name is Badira Bakhtawar, and I am in the final year of my PhD. I have just submitted my PhD dissertation. I am a researcher as well, working in the field of communication sciences and media. I have also worked in the professional media as well, have been a radio broadcaster since past almost 15 years. I have worked with Deutsche Welle in Pakistan and other private FM stations, and I've also worked in TV. I am also a trainer and have been conducting training with the Punjab Higher Education Commission and also with certain private organizations for the capacity building. And I'm also working with University of the Punjab as a trainer and consultant. So I hope this is going to be a great learning experience for all of us, and together we can, share our experiences, and together we can share a lot of informative stuff, which is going to be useful for all of us, for me as well, for you as well,
And I would love if all of you could participate and you can give your opinion about certain things. I would like to make this presentation as much interactive as we can, because since it's an online presentation, it's an online training. But I would definitely like all of you to participate and share your experiences. And you are all are mashallah officers, and you have been working in the field of education and academia, so you know things much better in a much better way. Today's session is just to build a common understanding and develop a common understanding and sharing for all of us. I'm going to learn from you, of course, and by the end of this presentation, by the collective experience of all of us, we'll be able to have a good understanding of communication skills and values and their impact on learning. So I've introduced myself. I hope you know me by my professional introduction that I have given. Let us now move toward the learning outcomes of our today's presentation, what we expect to learn after this 1.5 training session. The most important thing is that no matter how many degrees we have and no matter how many working year experience we have, there is one basic need among many people, and most of the people, majority of the people in Pakistan, that is having good communication skills to build a common understanding. Either you are working in a workplace, you have to interact with your peers, you have to interact with your colleagues, or you are in a classroom setting and you have to deliver presentation and you have to communicate with your students in both ways. And the third point is when you have to go on an international platform and where you have to interact with the international academia, international educationists, you have to present your point of view, or you are working on research projects, collaborative research projects with international teams. There you have to express yourself. There you have to have good communication skills, and you shouldn't be experiencing any kind of barriers. Most of the barriers, as we all know, are psychological barriers, and they are in our mind. So we'll be discussing them. And this training is basically designed to give you both the tools you need to improve your communication skills and the most successful strategies for using them to your advantage. Learning about communication skills, learning about a proper plan of a good communication setup in your organization, if you are heading your organization, if you are at a very senior position in your organization, is very important. You can just pinpoint the weaknesses, you can pinpoint the points where your organization lacks, and then you can come up and develop with a successful communication plan, which can actually make your organization move towards success. So we'll be discussing that, how we can pinpoint the weaknesses in an organization and where can be the communication barriers that are lying in the organization, how to overcome that, how to build a plan, a working plan, which can be a suitable or successful idea for your overall organization, for your college, for your university, wherever you're working. And then we have to learn how to communicate more effectively at work and achieve your goals, and also to learn when to cooperate, when to compete, how to create persuasive messages, thoughtful questions, engage in active listening, choosing the right medium, like face-to-face conversation, on video conferencing, phone calls, emails for your messages. And last but not the least, also the training discusses the most common communication barriers and their effect at the workplace and your team, and identify the relevant communication barriers. So by the end of this training session, we'll be trying, obviously, to have developed all these learning outcomes with you. As far as the training module of this presentation, of this training is concerned, this training uses the basic structure of communication skills and barriers for educators, academicians, senior people like you, to serve as a shared guideline for future and current researchers. And also the training establishes principles for communication best practice, mindfulness, self-reflection within an academic setting. Also, a very interesting part of this communication is that this communication has been developed from the best-selling book of Dale Carnegie, The Art of Public Speaking. If we can master, or if we are good at the art of public speaking, naturally we are able to overcome many communication barriers. So first we have to learn how to do an effective communication. And when once we can grab the components of effective communication, then we can move forward toward the barriers. So this is how this whole training has been developed. The whole training has been designed accordingly. Let's start with the first module's first section, which is communication skills. So talking about communication skills, let's discuss the science of speaking up.
most of the people in our society have this fear built in their mind that, if they are going to speak up among, a group of people, when they're sitting in a group of people, when they're sitting in the organization, when they are in a corporate setting, they do have this fear of speaking up, that what if I said something which is not considered right by other people? What they are going to think about me? Are they going to think that this person is, not a wise person, or whatever he or she said is, something that shouldn't be given importance? So these are the basic fears that we develop in our mind. And because of these fears, sometimes we don't speak up. We just don't say anything. Things just stay inside us. And, we come back home with the ideas, that are still in our mind, and we are not able to share those ideas with the people. So speaking up actually poses such a problem for people because it involves something called social threat. When, we are talking about young children, Bashru say, talking about our society, there are certain points where we tell our children not to speak up, not to say anything, not to question, not to ask. So when we are, putting these fears in the minds of a child, when the child is going to grow up, these fears are going to stay in the mind. So this social threat, this threat of being unacceptable socially, in the social setting, makes us not say, the brilliant ideas that we have in our mind and the thoughts that we have in our mind. And when we don't say what is in our heart, what is in our mind, we come back with, feelings of unease, anxiousness, and, fear of, talking in social situations. We feel socially threatened, and our brains divert resources from high-level thoughts to heighten our senses in preparation to flee until, finally we just move away. अगर आप अपनी सोशल सेटिंग में देखें, maybe you may be heading an organization, आपकी जो एनुअल मीटिंग्स हैं या आपकी मंथली मीटिंग्स हैं या आपकी वीकली मीटिंग्स हैं, how many of your colleagues are very open to speak up their ideas? How many of your colleagues are very open to discuss their ideas? And how many times it actually happened with you when you were sitting in a professional setting? Were you able to speak up whatever came in your mind? Now, यहाँ पे speak up करना या बात करने से मेरा मकसद, I am referring only to professional communication. I am not referring to any XYZ thoughts coming in our mind, or any comments that we normally generally pass on people we meet. With Pakistanis, we have this very very common habit of passing comments on people. Whatever comes in our mind, जो कुछ हमारे ज़हन में आता है, हम फौरन से कह देते हैं अगले शख्स को, without thinking, without realizing what we are saying, how it is going to impact the other person, without even realizing that this whatever we are going to say is going to be something personal related to that person. Should we be asking these questions from them, or should we not asking these questions? So I'm not talking about that kind of conversation. Actually, वो तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत commonly की जाती है, बहुत easily की जाती है. Even strangers can pose certain, kind of uneasy questions, which, many people would not like to answer because it is something that is related to their personal space. Here we are talking about professional communication. जब आपने अपना एजेंडा, अपनी बात, अपना आइडिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करना है, और वो जो फियर है कि क्या मेरा आइडिया एक्सेप्ट होगा, या मेरे आइडिया को हो सकता है कि बहुत हार्श किस्म का आगे से एक रेजिस्टेंस शो करवा दी जाए. And then ultimately, बहुत से लोग ऐसे होते हैं who just go into the spiral of silence. They go move into their silent zone, and they think that we shouldn't be saying anything. We shouldn't be speaking up. So first of all, there is a science of speaking up: what to say, when to say, how to say, and what are the fears attached to speaking up. For many of us, the thought alone of challenging someone's ideas or behavior is painful. If your senior is saying something which you actually don't agree with, जिससे आप agree नहीं करते हैं, how many times you get the courage to actually stand up and say something against it? Most of the times, many people choose to stay quiet because they think that this is the safest way to keep everything good at their workplace. And often at times, just sharing an idea can cause those feelings to threat to bubble up. We may wonder, what if people think if I'm stupid? Maybe I'll just keep my thoughts to myself. So the first rule of communication, the first rule of public speaking is that you have to get over your fear of
saying something that comes to your mind when you're sitting in a professional setting and a professional communication. No matter what your designation is, no matter how senior, how junior you are, you should have this courage that if you feel that it is a good idea and it is a thought that is coming to your mind, you should be having the courage to say it. No matter what, maximum what can happen, it will be rejected. That is the worst that can happen. Number two, what can happen that you will face resistance or maybe humiliation as well. In many organizations, some people have this habit of कि जो अपने juniors हैं या अपने से जो थोड़ा सा भी या आपके students हैं even if they say something, many people have this habit of just humiliating the other person. You don't know anything, you should stay quiet. I have seen many teachers communicating this way with their students. When they come up with good ideas, they're always there. You don't know anything. No, you can't say this. So when we say such thing to our student or to our subordinate, actually we are shattering the confidence of that person. And we have to keep this thing in mind कि जब आप एक student को या अपने से subordinate को ये कह देते हैं कि आप कुछ नहीं जानते और आपको ऐसा कुछ नहीं पता या जाओ पहले पढ़ के आओ. This is the common thing that is said to the students. तुम्हें कुछ नहीं पता. So basically we have shattered the confidence of that person. That person won't be coming up again with their idea. They would not like to discuss it with us. Then they will do what you will tell them to do. So basically you have killed their creativity. Whenever I'm interacting with my students in university, I always make it a point that they should, whatever their idea is, how no matter how vague it is, even for a dissertation, even for their research papers, just go with it. Just encourage them. They say, right, this is a very nice idea, it's a novel idea. I think maybe we need to work more on it, on this aspect. Rather than giving a straight, in a way, sorry to use the word, but a shut-up call to the other person, that you don't know anything. I don't want to discuss it with you. Go home and study. So this kind of attitude, number one, it is very negative, it is demeaning, and it is actually very destructive for the student as well, or for your subordinate. So we have to learn and master the science of speaking up. Now, how to acquire a confidence before an audience? I have seen many people who are professionally well equipped. They are professionally at a very high level, education wise, they have got very good degrees. But when it comes to speaking in front of public, when it comes to speaking on the mic, maybe while sitting in a radio studio, maybe while sitting in a TV studio, maybe while you are addressing a conference or you are speaking up in a workshop, they don't have that confidence to stand up and say the words in front of the audience. There are certain fears that gather in your mind. Number one, maybe you haven't ever spoken to such large audience. This can happen. आपने कभी इतनी बड़ी audience में या कोई international conference में you don't have experience. So the first thing is nobody is born with such qualities. The key is practice, practice, and practice. Face audience as frequently as you can, and you will stop shying. आप सबको याद होगा, मुझे याद है कि जब first time आप even as a teacher class में जाते हैं, so you do have this even fear of speaking in front of the student when you must had your first class in your जब अगर आप थोड़ा सा पीछे down the memory lane चले जाए, there must have been a first class, there must have been first time when you were interacting with your students. So there was this fear of how I'm going to say it. But ultimately you overcame that fear because हम ये सब जानते हैं कि जो हमारे students हैं, obviously they are at a lesser level than us, and we can grab them, we can get their attention. लेकिन when we are talking in a professional setting with people who are equal to us in their designations, in their roles, or in a conference, in a setting where there are senior people sitting as well, people who are very senior to us in every way. Madam? So we do have this. Is anybody saying anything to me? Sorry. मैडम किसी का माइक खुला हुआ है, जरा उनको कह दें कि बंद कर दें. I think आप अभी नहीं है. There was some mic that was open for some. अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी स्लाइड पे ना थोड़ी सी जूम आउट करें इसको, या प्लीज वो उसका डिस्क्रिप्शन वाला बंद कर दे तो शायद भी ज्यादा बेटर नजर आ जाए. आपको स्लाइड्स देखने में तो नहीं नजर आ रही है? सही नजर आ रही है मैडम.
लेकिन फ़ॉन्ट छोटा है ना, तो फ़ोन में तो वैसे भी नहीं नज़र आता, लैपटॉप में मुश्किल से नज़र आ रहा है। जी स्लाइड शो कर दीजिए, उससे ये बेहतर हो जाएगा, ये जो साइड वाले खत्म हो जाएंगे, स्लाइड शो कर दीजिए। और एक्सक्यूज मी मैम, आप तो बहुत फास्ट बोल रही हैं, काइंडली आप थोड़ा सा जरा आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के, जरा एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही है हमें लेक्चर को। अच्छा, okay. And now you can see the slides clearly. I think the font is bigger. Now you all can see the slides clearly. You see, there is an option. If you go for Yes, slides, I have done that. then the rest of slides won't be appearing on. Now Only the there is a main slide. slideshow. The main slide will be appearing. That's fine. Now this is a slideshow, and you can actually zoom in into the slide, only slide that I am presenting. It should be visible now. अस्सलाम वालेकुम, ये साइड वाली जो स्लाइड्स हैं हमारे पास नज़र आ रही हैं और ये फॉन्ट बहुत छोटा है जिसको समझना मुश्किल हो रहा है। जी, now is it better? Yes, डबल टैप करने से मैम, डबल टैप करने से ये जूम हो जाती है पिक्चर और स्लाइड खुद ब खुद बड़ी नजर आने लगती है। एक्चुअली अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फोन स्क्रीन के ऊपर तो आपको बहुत छोटा फॉन्ट नजर आएगा। मैम अब वो ऑप्शन सिलेक्ट हो गई है और बिल्कुल ठीक से नजर आ रही हैं। हाँ, because these presentation have been given earlier to the previous batch and they didn't have a problem as such. Actually phones के ऊपर तो आप बेहतर समझते हैं कि प्रेजेंट किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है। So बाकी ये क्या है, लैपटॉप पे भी ऐसे ही थी, अब इट्स स्लाइटली बेटर, थैंक यू। और ये जो ठीक है, ओके ओके सो फाइन। वैसे मेरी भी नज़र कमज़ोर है बट आई एम यूजिंग अ लैपटॉप एंड मेरा ख्याल है शायद मुझे सही नज़र आ रही है, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। एनीवेज जी, starting with the how to acquire a confidence before an audience, we were discussing that. So the first thing which is most important is, anyone saying something again? Okay. So madam, please continue. Ji, thank you. Facing an audience as frequently as you can and you will stop shying. हम यही बात कर रहे थे कि when there is always a first time for everything. और जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस का लेवल बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने ऑडियंस को, जितनी बड़ी ऑडियंस को आहिस्ता 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 फेस करते जाते हैं, तो ग्रेजुअली वो जो फियर है यू ओवरकम दैट। देन नंबर 2 इज योर कंसंट्रेशन ऑन द टॉपिक। बहुत से स्पीकर्स हैं, आप जब सुनते हैं तो अक्सर ये होता है कि मेन पॉइंट से, अपने टॉपिक से डाइवर्ट कर जाते हैं। So basically, आपका confidence in front of the audience it can come only in the way if you can concentrate properly on your topic. So you have to actually stay connected to the topic. If अगर आप सुनते होंगे, यकीनन मैं भी बहुत सुनती हूँ, the TEDx talks, they are so focused on their topic. They have such a great concentration on the topic. Whatever they are saying, it's actually related directly to the area they are discussing. Number 3 is self is secondary to your subject. Avoid self-consciousness. I always tell this to my students also when they are giving presentations or are doing anything. हम जब बात करते हैं, हम जब लोगों के सामने खड़े होते हैं, एक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, what I am wearing, how I am looking, how are my hair. So we do have a consciousness about these things. Number 2, maybe the subject you are talking about is a sensitive subject to yourself. हो सकता है आप किसी ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि आपकी ज़ात से थोड़ा कनेक्टेड है, and maybe there are chances that you can get biased while talking about it, right? For example, if a woman who has gone through a difficult life has to talk about women rights, maybe when she is talking about women rights, maybe she can be very biased talking about it. These are quite the options. So number 1, that the basic thing you have to do is that you have to avoid the bias when you are talking. Yourself is secondary. What is important is the subject, is the thing you are talking about. Maybe today I am sitting in a setting because this is not a professional setting. This is my room. I might not be having a good lighting, to show my face, or I might not be having a very good system.
But you know, my concentration, my focus should be that I have to deliver a training where I should be audible, where I should be discussing with you, and I should not be conscious about myself, where, why, you know, how I am. So you are secondary, but the subject is actually the primary thing that you should be focusing on. And then obviously we always say that, you know, you have to take a deep breath, you have to relax and begin in a conversational tone as though you were speaking to one large friend. You know, don't think that, you know, there are 50 people or 100 people listening to you. Or if you are delivering a lecture in your classroom and you have a class strength of around 50 students, just consider them one friend, one large friend to whom you're talking. There are icebreakers, obviously, when you have to say your, you know, certain flexible, you know, conversation, halki pulki baat jo ki aap apne students ke saath karte hain, which can break the ice actually. It will bring all of you at one platform, at one level. I know कि हम सब लोग अब उस एक पुराने system of teaching से बहुत आगे जा चुके हैं, where it was considered when a teacher is entering a class, they have to make an impression of fear, or they have to make an impression of, you know, that the students should be afraid of the teacher. We are out of that. And then the most important thing is that if you believe you will fail, then there is no hope for you. No, you will, because we achieve what our mind believes. Even if you are working in a gym, even if you are doing some exercise, even if you are running, you tell yourself that I can't run even 1 kilometer. You won't be able to run. Because it is always said that, you know, in even a physical setting, it is said that mind over muscle, right? Your mind over muscle. Your mind has to tell you that you have to be successful. Your mind has to tell the body that it can move. Your mind has to tell the brain that it has to be successful in communication skills. The person who feels they can't talk, the person who feels they can't deliver, the person who feels they'll be shaky in front of the audience, there are quite, you know, bright chances that they will be. So overcoming the fear and telling yourself that it is going to be okay, and it is going to be very good, if not perfect. And I might be having some flaws. There might be some, you know, problems that I have to overcome again in my next session. So what? So not believing that you will fail is actually the key to success. Now we'll be talking about the sin of monotony. When we are communicating, monotony is a sin. It is considered a sin. Right now, we are not discussing, we are not delivering this training in a physical setting, you know, where I can be in front of you and, you know, you can all be sitting in front of me and we can obviously communicate better. But what's happening in online trainings is that you can only listen to me. Now, I have to make my, you know, voice that actually interesting to all of you, that you should be listening to me. There should be ups and downs. There should be examples. There should be pauses. There should be stresses. I have to avoid monotony. एक ऐसी monotony, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी conversation जिसमें किसी किस्म के ups and downs ना हो, कोई interesting चीज ना हो, तो वो चीज एक monotony होती है, lack of variation. आप जब classroom में lecture deliver कर रहे हैं, for example, you have to deliver a lecture of 2 hours, for example, and you don't have a variation in what you are saying. You don't take a break and talk to your students. You don't take a break and crack a joke with them. You don't, you know, take a break and discuss with them कि all right, आज क्या हुआ, आज की basic news क्या थी, या आज ये event हुआ, या कोई joke उनके साथ share कर देते. तो basically you are trying to put in variations in your lecture. And if there are no variations in your lecture, if the teacher comes in the class with an upset, you know, mindset and delivers the lecture in one single tone and then just leaves the classroom, there is no variation, and it is a monotonous lecture. And monotonous lecture is supposed to kill the interest of every student in the lecture. Also, it is important to know that monotony reveals our limitations. It shows कि उस इंसान के अंदर इंटरेस्टिंग होने की क्वालिटीज नहीं. जो शख्स मोनोटनस होता है
जो शख्स एक मोनोटनी के अंदाज में बात करता है वो शख्स इंटरेस्टिंग नहीं होता। इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होने के लिए, इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों से बात करने के लिए, इस अंदाज में लोगों से बात करना कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, उसके लिए आपकी कॉन्वर्सेशन में वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है। We avoid monotony by multiplying our powers of speech. We multiply our powers of speech by increasing our tools. Now, what are the tools? हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन how would you feel striking the same note on the piano over and over again? आप अगर पियानो पे एक ही नोट को बार 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 जो है अगर हिट करते रहते, that is the most, you know, this is actually the best example of monotony. Music is created with variation. आप सब जानते हैं. We create music with variation. Without variation, there is no music. It is just one tone which is being struck again and again and again and again, and it is monotonous. It is not good for our ears. We don't want to listen to it. और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अगर हम नेचर में देखें, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो अल्लाह ताला ने जो नेचर एक क्रिएट की है हमारे लिए, उसमें एक एंडलेस वैरायटी है हर तरफ. आप कलर स्कीम्स, you know, everything, the creations, there is no monotony in anything. It is such a beautiful mixture, and you know, mixture of variations of all sorts. So basically man is the one with the limitation, and man is the one who is monotonous. And always remember that monotony is poverty, whether it is in your speech or in life. Now why I am saying life, हमारे में से बहुत से लोग हैं, and we don't discuss these things. आप एक अपना ड्रेसिंग स्टाइल बना लेते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं. You know, there are many people who stay attached to that particular style of dressing. इसके अलावा आप कुछ भी हो सकता है. You know, your hairstyle, the way you look, the way you talk, the way you walk. You know, आपके अंदर एक monotony, human beings के अंदर it is natural. हम अपना उसी तरह से एक सिस्टम बना लेते हैं. We have to realize that this is actually a monotony that we have created in our personality. And when we create this kind of monotony in our personality, what we are actually doing to ourselves is that we are killing the interest. हम अपने आप को interesting नहीं बना सकते. Not in front of our classroom even, not in front of our students even. You know, they will be also, you know, like bored. So try to bring variations in your personality. Try to bring variations in your communication patterns. No matter how senior you are, how junior you are, if you are a student, if you are a child, doesn't matter. One has to bring variations in the personality. और वो शख्स जो कि ये समझता है at any point that I am perfect, I don't need to change myself, I don't need to learn anything. You know that हमारी जो एक mental death है, बेसिकली मैंने पढ़ा कि वो उस दिन होती है जिस दिन हम ये समझते हैं कि आज के बाद हमारी लर्निंग खत्म होगी. My learning is finished today. After PhD, my learning is done. I don't need to learn more. This is the day when we actually die. The day we start considering ourselves the master of everything. The day we start considering ourselves at the top of our professional career. The day we start thinking that we don't need to learn from anybody. What are they going to tell us? What are they going to tell me? I know this. Because आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप लर्न करते हैं, और वो इंटरेक्शन, वो लर्निंग आपकी किसी से भी हो सकती है. वो इवन एक बस का एक छोटा सा सफर जो इंसान करता है 15 मिनट के लिए, वो भी दैट इज ऑल्सो इंटरेक्शन, दैट इज ऑल्सो लर्निंग. यू लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, यू लर्न फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, फ्रॉम द पीपल विद whom you are traveling. So this is how we can break the monotony in our personalities. Moving on, emphasis and subordination. हमें ये सिखाया था कि when we are saying a sentence, there are certain words that you need to emphasize and there are certain words that you can say in a lower tone. किन words को emphasize करना चाहिए, किन words को emphasize नहीं करना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं. There is no rule for it. अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दिखाऊंगी एंड आपको उसे देख के अंदाजा होगा कि emphasis अगर words के ऊपर चेंज कर दिया जाए जब आप बात कर रहे हैं या आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे पूरी आपकी स्पीच का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमने अपनी डेली कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स के साथ
सबॉर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स के साथ। येलिंग इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। किसी पर चीखना, शाउट करना इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। बेशक हमें जितना भी गुस्सा आया हो, यू नो, और हमारे सामने हमारा बहुत जूनियर मोस्ट इंसान खड़ा हो, या हमारे सामने एक हमारा बेचारा स्टूडेंट खड़ा हो, यू नो, जिसके ऊपर आप शाउट भी कर सकते हैं, येल भी कर सकते हैं, यू हैव ऑल द लिबर्टीज, but it is not a sign of intelligence. Rather, it shows our weakness, that we are not able to somehow get the desired results with our communication. We have a communication failure here. This is a barrier actually. This is a communication has failed, and when the communication fails, then the person starts yelling at the other person. And हम ये समझते हैं, हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि जब आप किसी पे शाउट करते हैं, जब आप चीखते हैं, तो मे बी आपकी बात का वजन ज्यादा हो जाए, but actually this is not the case. It becomes violence, but it is not something that is going to affect somebody. It can create fear, yes, but it is not something that is going to have a long-term impact on somebody's personality. No. Long-term impact through communication can only be made with a proper understanding, with a gentle tone, and with a good interaction, not with yelling. What to emphasize, what not to emphasize, you know, this is your own intelligence. Your own intelligence must guide you. If you have been going very fast, go very slow on the emphatic word. If you have been talking on a low pitch, you know, jump to a high pitch one on the emphatic word. If you have been talking on a high pitch, take a low one on your emphatic ideas. जैसे आपने यकीनन आपने देखे है कि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स में अप्स एंड डाउन्स के साथ बने। सो बेसिकली कहाँ पे आपने अपनी बात करते करते, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते, प्रेजेंटेशन देते एट अ हायर लेवल पे जाना है, कहाँ पे आपने एट अ लो लेवल जाना है, कहाँ पे आपने अपनी बॉडी को, अपने हाथ, अपनी, जैसे हम बात करते हैं, वी आर यूजिंग आवर बॉडी लैंग्वेज के बगैर तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो बॉडी लैंग्वेज में आपने अपनी बॉडी को किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, किस पॉइंट पे यू कैन स्टैंड स्टिल एंड जस्ट से योर वर्ड्स. You are the one who has to decide. Some people use their body too much, you know, when they are बहुत ज़्यादा walk करते हैं, बहुत ज़्यादा turn करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथों को use करते हैं. That is also again doing too much of it. And some people don't even, you know, stand up. They don't even walk. They don't even use their hands. They don't even, you know, they nod even their heads. That is too less. So you are the one who has to decide the emphasis and subordination. Now let's have a look at this exercise. If you can see. एक सिंगल सेंटेंस है विच इज रिटन 1 2 3 4 5 टाइम्स. अगर हम इसको फर्स्ट टाइम देखें तो आपके पास ये सारा जो सेंटेंस है इट इज कमिंग इन कैपिटल लेटर्स. और कैपिटल लेटर्स मीन्स कि हमने इस सारे को एम्फसाइज करके पढ़ लिया. Destiny is not a matter of chance and it is a matter of choice. You know, we are emphasizing on each and every single word. Now in the second sentence you can see we have only highlighted the words destiny and choice. That means I am going to emphasize only on the word destiny and choice. The rest of the sentence is going to be very normal. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. You know, we have emphasized on two words only. Then in the third one, not is the one which is being emphasized. It's not a matter of chance. It is a matter of choice. So, इसी तरह से आप इस सेंटेंस में देखें कि we have just changed the emphasis of words. और अगर इसको हम डायलॉग्स के अंदर, डायलॉग डिलीवरी में या अपनी कम्युनिकेशन डिलीवरी के अंदर बार बार प्रैक्टिस करें इसी तरह से, इसी अंदाज से, जैसे कि टीवी पर, जैसे कि रेडियो पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो these all will come up with very different connotations, very different meaning even to the people who are listening to us. So this is how, you know, emphasis and subordination of words, you know, makes a lot of difference. Now efficiency through change of pitch. Pitch is the relative position of a vocal tone as high, medium, low or any variation, you know, in between. Change of pitch जब हम करते हैं उससे automatically हमारी बात में emphasis produce होता है. Some people have a very high pitch, some people have a very low pitch. लेकिन doesn't matter, आपकी naturally ये pitch जो है it is natural for everyone. अगर high pitch है या low pitch है, even again through emphasis and subordination, अपनी communication skills को बहुत बेहतर किया जाता है.
Every change in the thought demands a change in the voice pitch. Continual change of pitch in nature's highest method, and you can observe birds around you, you can observe young children around you. बच्चे खास तौर पे, they, when they are communicating, they change their pitch a lot of times. Many times they change their pitch. So we can learn from the nature, from the from people around us. And now coming to another component which was pointed out by Dale Carnegie in his Art of Public Speaking book. He talks about tempo. Tempo is basically change of tempo lends naturalness to the delivery. Change of tempo prevents monotony. Change of tempo produces emphasis. टेम्पो जो है, जैसे आप क्रिकेट मैच भी अगर देखते हैं तो जो बॉलर है जब वो बॉल डिलीवर करता है, कई दफ़ा वो बॉल को एक खास स्पीड के ऊपर फेंकता है, कई दफ़ा बॉल को एक हाई टेम्पो के ऊपर डिलीवर करता है. Sometimes he delivers the ball at a low tempo, just to bring a variation in his bowling. So ये जो एक पब्लिक स्पीकर जब बात करता है, जब पब्लिक स्पीकर आप एक बड़े मजमे से डिस्कस करता है कोई चीज, there should always be a change of tempo. कहीं पे आप अपनी आवाज को, अपने अंदाज को आहिस्ता ले जाते हैं, कहीं पे आप उसको बहुत हाई लेवल के ऊपर ले जाते हैं. So this is also a very important component. Pauses, pause and power. Silence जो है itself is a response. अगर आप ये समझते हैं कि आपने किसी शख्स से किसी बारे में कोई रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की और आगे से साइलेंस है, तो साइलेंस इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्स एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड इट. पॉजेस क्या हैं कि जब हम बात करते करते अचानक से बीच में कुछ चंद सेकंड्स की खामोशी लेते हैं. One of the most important means of powerful communication is to pause either before or after, or both before and after an important word or phrase. आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया थ्रो करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया है जो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना जा रहे हैं. आप उसको मोनोटोनस टोन के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर इट, या आपको ऐसी प्रेजेंटेशन में अपना कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस में या इंटरनेशनल लेवल पे, now you are going to give them the crux of your research. Now you are going to give them the basic idea why you actually did this research and why you are here to present it today. Always take a pause before that, so your audience gets intrigued in what she is going to say further, what he is going to say further. मजीद क्या बात होने जा रही है, अगली बात क्या होगी. So silence has been called the father of speech. Pause prepares the mind of the auditor to receive your message. आपकी जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, जब हम पॉज करते हैं तो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा रिसीवर है, दे गेट अ ब्रेक and their mind actually prepares to get the message. Then pause enables the mind of the speaker to gather his forces before delivering the final word. Pause also creates effective suspense. Pausing after an important idea gives it time to penetrate actually. When you have delivered what was in your mind, what your idea was, again take a pause. Let your audience digest what you were actually trying to say. Let them understand what you were saying. Are they able to grab it? Are they going on the same flow with you? क्या वो आपके साथ उसी पिच पे मूव कर रहे हैं आपके साथ या नहीं कर रहे? In face-to-face communication, जब हम एक दूसरे को देख सकते हैं, तो a person who is delivering a presentation can get a clear idea of how the audience is feeling right now by just looking at their faces. जो हमारे चेहरे हैं, उसके जो तासुरात हैं, जो हमारे non-verbal communication है, that clearly gives an idea if the audience is enjoying you, if they are getting bored, if they are understanding what you are saying, if they are intrigued to listen what you are going to say further. So these are the clear ideas. Unfortunately, these things are not involved in the online training sessions because we are not able to see each other. But when you are talking face to face, these things are very common. Effective communication को अगर हम summarize करें, so these are all the points that actually come up, that one has to be proactive, polite, enabling, imaginative, progressive, transparent, innovative, constructive,
technology friendly, professional, and energetic also. So these are all the points, and maybe there can be 100 more for effective communication, which you actually have to keep in your mind whenever you are communicating. Now talking about the online modes of communication, आप भी definitely बहुत सी online meetings attend करते होंगे. I also attend a lot of online meetings. When we are attending and we are conducting online meetings, what is the most important thing? Does your remote audience feel included in online meeting, you know, or they might be, you know, just sitting with their mute mics and, you know, not even listening to a word you are saying? How to ensure that? The best way to ensure that is to give your audience a chance to speak up and give enough time to the audience, you know, so they can share their point of view. Maybe at the end of the training, maybe at the end of the session, the audience is free to communicate, free to discuss what they feel like. And even if during the presentation, during the training, if anything comes in their mind, you know, and they can share it straight away with you, they should be welcome. Like you all are welcome to share your ideas, you know, during the presentation. Striking the right balance to speak up. Psychological safety is the belief that you can take risks and put forward ideas without facing ridicule or retaliation. ये जो हमारे अंदर psychological fear है, we have to grab that. We have to overcome that. कि हम कोई बात करेंगे and you know somebody is going to ridicule us या कोई हमारा मजाक उड़ा देगा, you know कि ये क्या बात हुई, ये क्या किया. Maybe बहुत से लोग इसको अपनी early professional career के अंदर इन चीज़ों को experience करते हैं कि you know they always have a fear of speaking in front of their seniors, that you know their ideas are not going to be taken as such. Encouraging people to speak up often revolves around how many attempts to do so are handled. For instance, transparency around how ideas are considered and ample communication when those ideas are implemented can help highlight the value of organization places on ideas. I always feel one thing कि जब आप classroom में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा classroom का environment हमेशा enabling होना चाहिए. Now, what is an enabling environment? Enabling environment is where my student is not afraid to speak up. I'm saying speak up. I am not saying where my student is not afraid to question. ज़रूरी नहीं है कि my student is always going to ask a question. Maybe there is something coming in his or her mind that he actually wants to share. Maybe he even just wants to say, or she wants to say that we are tired. And you know, can we have a break of like 5 minutes or 2 minutes? If your student has got this freedom during the classroom to, you know, tell you how they are feeling, that means you have an enabled classroom environment. If not, then you need to consider that, you know, what's going wrong in the classroom, and that shows actually that the students or the audience is actually not comfortable with the speaker. They have this fear of speaking up in front of you. There is a research from Rice University which suggests that even if the employees' ideas are not implemented, if they are handled in the right way, it won't dissuade them from offering fresh ideas in the future. Daily हम examples देखते हैं, you know, कोई ना कोई ऐसी example मेरी नज़र से ज़रूर गुजरती है जिसके ऊपर मुझे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो communication method. For example, आप भी यकीनन इसको observe करते होंगे कि कोई professor talking to their student, and you know their student is there to discuss their research ideas. Obviously a student of BS or MS, you know, might not be having that grip on research, and when they are coming to you for a research idea, with a research idea, they might not be that clear about it, because they are young minds, who are learning to, you know, to conduct research. They are learning to explore new things. Some teachers I have seen give a very high level of resistance to the students. And they are just simply saying, this is wrong, and this is wrong, and you don't know anything. This is going to shatter the confidence of the student. A teacher should be encouraging, and same you should be doing with your subordinates, your colleagues who are young, who are new in the profession. You should be giving them the opportunity, you should be giving them the confidence to present their ideas. This shows a lot about your personality. I always tell one thing to my students, and that is, if you are afraid to talk in front of somebody, तो ये शायद आपका इतना कसूर नहीं है, ये शायद उस शख्स का ज्यादा कसूर है जिसने अपनी पर्सनालिटी को इतना fearful बना दिया that people are
afraid of that person, and it is not a good thing that people are afraid of you. There is no pride in saying that somebody that I am so fearful that people can't say a word in front of me. This is not a good thing. This is not a good trait of personality. That shows that you yourself as a person are a communication failure, that people can't talk to you. You yourself are a barrier, and nobody likes to be a barrier. Everyone likes to be an interesting, a lovable, kind-hearted person with whom people can just come up and talk, right? How you can measure, what are the measures that can be taken to ensure effective communication? The most important thing is your time management. Now, time management का अगर हम यहाँ पर टेबल देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं कि you have to manage your stress, setting of your objectives, planning, good communication, adaptability, prioritizing and organizing, disciplined and in time focused and hard work. Stress or burden of work, that is on everyone. Everyone is dealing with 100 things, maybe not, if not 100, 10 things at a time, 10 projects at a time. So ये जो stress हमारे ऊपर built up हो जाती है, and other than professional life, there is a personal life of everyone, which is again, at many points stressful. Should a senior who is managing the whole organization, or the principal of a college, or a classroom teacher, be taking out their stress on the students, on the subordinates, on the people who are junior to him or her? Is that acceptable? No. I mean, not in any case. If I am stressed today, that is my problem. Not everyone has to deal with my stress. If I had a bad day today, not everyone has to deal with that bad day of mine. Not everyone has to say that, madam or sir today has a very bad mood because they are very stressed. So keeping our personal lives and professional lives stressed to ourselves is very important, because people are not responsible for us, going through any bad times. We have to know this. We have to deal with ourselves. And then obviously setting of your realistic objectives and plannings and all these things go hand in hand. That rest, obviously, all of you know. But managing stress is something that is very important. Now, research data shows that people rarely speak up during online meetings, and often they regret not doing so. If I share one survey with you, 72% of respondents could point to an instance when they or others failed to speak up effectively when a peer wasn't pulling their weight. The survey also found that 40% of people estimated they wasted 2 weeks or more ruminating about the problem over which they stayed silent. So, jo khamoshi hai, and when you are not able to speak and when you don't say anything, that actually stays in your mind. Now, I am moving toward the audience, and if you all can just, I would love if any one of you can share their experience of professional setting or any experience of their life where they felt this fear of not speaking up, or they were actually working in an environment where they were not encouraged to speak up. So you can just share a quick experience with us, so then we can move forward with the next part of our training. Any one of you would like to say anything, please, you are welcome to say that. अस्सलामुअलैकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, एज यू सेड कि ये जो फियर है ये बहुत डीप रूटेड होता है, तो चाइल्डहुड से ये स्टार्ट होता है जब हम हमारे एनवायरनमेंट में जो एक चीज़ है कि हम बच्चों को डिस्करेज करते हैं, हम उनको सॉरी टू से शटअप कॉल्स ही दे देते हैं कि तुमने क्यों ऐसे कहा फलां बंदे के सामने, तुमने हमारे साथ कहीं जाना है बस चुप करके बैठे रहना है, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को शटर कर देते हैं। हालांकि अगर हम उसको बोलने का मौका दें तो हम उसको पोलाइटली करेक्ट कर सकते हैं या हम उसको इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी को हम क्रश कर देते हैं। और बच्चे में अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी होती है बोलने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की, और बच्चे बहुत अच्छा अपने इवन स्कूल लेवल के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं
और मैंने बच्चों को जो है वो कंपेयरिंग करते हुए देखा है, लेकिन समटाइम्स हम खुद ही अपने बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूट फिर बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है कि जब मैं किसी फोरम पे खड़ा हूँगा, बोल रहा हूँगा, तो आई विल बी बीइंग जज्ड। तो ये जो है ये बड़ा उसको जो है ना शटर कर देता है और उसको इतना डैमेज कर देता है कि बाज़ औक़ात उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। वेरी वेल सेड। एंड जैसे हमने स्टार्ट में भी ये बात की थी कि दिस फियर इज एक्चुअली डीप रूटेड, और डेफिनेटली आप जब आप अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स हर फील्ड ऑफ सोसाइटी सेक्टर से आते हैं। कोई किसी तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है। व्हेन यू नो वी आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, व्हेन वी आर टीचिंग इन कॉलेजेस, व्हेन वी आर टीचिंग इन स्कूल्स, वी आर एक्चुअली डीलिंग विद अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। नाउ वी डोंट नो कि वो बच्चा किस किस्म की सोसाइटी है, किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी लाइफ कैसी गुजरी है, उसके पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड था उसके साथ। सो ये सारी चीजें, बीइंग अ टीचर in a classroom environment, we are the ones who have to make sure that they all speak up, they all say something. They are not again given the same kind of treatment which they might have observed in their previous life, which actually built a fear in them. We shouldn't be communicating or dealing with them in that way. So being a teacher हमारे पर बहुत बड़ी responsibility है कि हमारे स्टूडेंट अगर कुछ ऐसी बात भी करते हैं जो कि हमें लगता है ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन लेवल, लेकिन उनको इनकरेज करके एक हायर लेवल पे एक स्टूडेंट को टीचर ही लेके जा सकता है। आई माइट हैव बीन अ वेरी लोअर लेवल। हम सारे लोग ऑब्वियसली कहीं बिगिनिंग से शुरू करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जिंदगी में बहुत अच्छे उस्ताद मिलते हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलते हैं और आपको ये कहते हैं कि इवन आपके जो वेग आइडियाज हैं दे कैन समहाउ मेक सेंस. So that encouragement is somehow very important. Now moving on to back toward the next point of our training, and next one is communication barriers. इसके बारे में आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं कि communication barriers basically किस तरह से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, और डेफिनेटली उसमें मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगी कि आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस किस्म के कम्युनिकेशन बैरियर्स आपने फेस किए हैं और आपने कैसे उनको ओवरकम किया है. यकीनन आपने बहुत से फेस किए होंगे, हम सब फेस करते हैं. सो पहली बात तो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑन लर्निंग. लर्निंग बैरियर्स कैन बी फिजिकल, दे कैन बी मेंटल, इमोशनल, cultural or social elements that get in the way of a person achieving their learning goals. So talking about barriers, there can be listening barriers, there can be perception barriers, cultural barriers, personal agenda, information overload, and noise. These all are the barriers that people normally face in their professional lives. So इसके अंदर अगर further हम जाएं तो बहुत से barriers हैं जो कि physically आते हैं. You are not able to listen somebody properly. Obviously that's a barrier. Perception के बारे में बड़ा interesting चीज है अगर इसके बारे में बात करें, because this is something that is related to your psychology. Perception about somebody. हम लोग generally in our society लोगों को जज करते हैं. आपने यकीनन ये सेंटेंस बहुत सुना होगा कि डोंट जज पीपल एंड डोंट जज पीपल. बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी होता है कि क्यों व्हाई शुडंट वी बी जजिंग पीपल, बिकॉज इस तरह तो जो है वो मॉरल पॉलिसिंग सारी सोसाइटी के अंदर खत्म हो जाएगी. लेकिन डोंट जज का मकसद ये नहीं है कि लोगों को एक मॉरल जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म कर दी जाए. नॉट जजिंग का मकसद ये है कि कोई शख्स कैसा ड्रेसअप होता है, कोई शख्स किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई शख्स किस सोसाइटी के सेगमेंट से आ रहा है, इन बेसिस के ऊपर उसको जज ना किया जाए. अगर आप अपने जहन में ऑटोमेटिकली परसेप्शंस बिल्ड कर लेते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दे आर गोइंग टू बी अ बैरियर. मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि we are quite judgmental about our students, the way they dress up. I might be wrong. I have seen many cases. The way they dress up, the way they interact with their fellow students, especially girls. Girls के बारे में we are very touchy कि वो कैसे dress up हो रही हैं, वो क्या पहन रही हैं, वो किस तरह से कॉलेज में आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में आ रही हैं. Maybe universities में थोड़ा सा we are more open about things. Maybe colleges में the environment is strict.
We build perceptions about our students. If we don't like the dressing, we will build a negative perception about the student. हो सकता है कि वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो स्टूडेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकता है कि वो वाकई एक बहुत एवरेज लेवल स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने उस सारे को अपने तौर पे जानने से पहले या उसकी इवैल्यूएशन करने से पहले ऑलरेडी एक परसेप्शन बिल्ड कर ली अबाउट द नेगेटिविटी ऑफ दैट पर्सन। इसी तरह हमारे कलीग्स हैं और हम अपने कलीग्स के बारे में, कुछ कलीग्स हैं जिनके साथ वी आर वेरी कंफर्टेबल, देयर आर सर्टेन कलीग्स विद whom we are not comfortable. We build perceptions against, और बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी शख्स से बात करते हैं, जब उसके साथ पर्सनली बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें ये अंदाजा होता है कि दैट पर्सन वाज अ डिफरेंट पर्सन and the perception we built in our mind which kept us away from that person, या which kept us from talking from that person was actually wrong. हमारी परसेप्शन तो गलत थी। सो हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में ये परसेप्शन बहुत ज्यादा है। कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, कोई कैसे आ रहा है, अब जब इंटरनेशनल सेटिंग में मे बी शायद हम उस लेवल पे आई डोंट नो जा भी नहीं सकते, खैर कि इवन बहुत senior professors, they will be dressed up like in very जैसे कह सकते हैं कि humble jeans and humble dressing. They will be coming to the university on cycles. They will be like in a very different kind of, उनका हुलिया भी ऐसा कि बहुत हमें ये नहीं लग रहा होता कि वो बहुत अपने आप को show off कर रहे हैं. They might be great researchers, but they have a very humble personality. But when they speak up, when they sit with you, when they talk to you, then we get an idea कि oh wow, he's a genius, she is a genius. So ये जो perceptions की building है लोगों के बारे में, on the basis of their culture, on the basis of their caste system, on the basis of their ethnicity, on the basis of what dress they are wearing. Jeans पहन रही है लड़की या वो शलवार कमीज पहन रही है, wearing a दुपट्टा, she is not wearing a दुपट्टा, ये चीजें जो perceptions है हमारी, ये barriers हैं of communication. So let's put it in a very straightforward. Knowing somebody, knowing a human being is more important than judging a human being on the basis of their physical appearance, how they look. If she is यही जो West हमारे साथ कर रहे हैं कि wearing a scarf, they considered it a taboo. They are judging us on the basis of that, not knowing that behind that scarf woman might be a genius woman. The same goes for us. Behind a girl wearing jeans or a Western clothing, there might be a very genius girl over there. We have to broaden our horizon. We have to think beyond these physical traits. We have to think beyond these things. Cultural again, then personal agenda. बहुत से लोगों का आप फील करते हैं कि that is a barrier in organizational communication. Information overload, noise. Noise can be anything again, it can be physical, it can be anything. Now physical communication barrier is very simple. Everyone knows that when you are social distancing, remote work, deskless nature of work, closed office doors and others. Last हम जब deliver कर रहे थे training पिछले batch के साथ APs के, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात एक उन्होंने share की officer ने, and she said that in certain organizations there is a bureaucratic structure, right? कि आपका जो head of department है, head of college है या head of किसी भी उसमें college में आपके sector के, they have a closed door policy. No one is allowed to enter. I'm sorry to say, but आप कोई भी student तो सोच भी नहीं सकता कि straight away वो जाके access कर सके head को. इसी तरह जो colleagues हैं वो भी डर के जाते हैं कि we have to talk, we have to say something. These traits actually show our inability to interact with people. We have actually placed a physical barrier with our colleagues, with our students. So, accessing the teacher, accessing the head of their college, accessing your colleague, accessing your senior in the working hours, when you are in the university, in the college, in the school, should be a very normal thing. There shouldn't be a bureaucratic structure, like the way we are, going to meet our prime minister and, we have to take 100 applications and we have to stand out and then we are not given time.
जब हम इस किस्म के फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर देते तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. They are not never going to create a good impression. Trust me. You know, I still remember those professors in very nice words who were so accessible. You know, anytime I could just go into their office. If they were busy, they would tell you that, you know, we are a little bit busy. We can talk to you in a while, or, you know, maybe tomorrow. I wouldn't mind that. But if you have to access somebody after going through, you know, number of PAs and, you know, then requesting that, you know, please can I and please can I, that actually makes a negative impression of that person. And at least in the educational environment, we should discourage it completely. Never in the educational environment. Education is all about learning from each other. Education is all about interacting with each other. Education is not about putting barriers. If you are going to put physical barriers between yourself and your colleagues and your students, then there is a communication failure. How can you expect your organization to grow? How can you expect your students? How can you expect your teachers? How can you expect your colleagues to work in a mutually beneficial and a progressing environment? No, that is not possible. So avoid this kind of communication barriers. Make an open door policy. Yes, I'm available. And anyone can access me. And if I'm busy, I'll tell you. And you can access me later. We should be, when we are in a college, when we are in a university, we are a part of the academic setting. Our students are a part of us. Our colleagues are a part of us. And we have to be inclusive about everyone. So moving on with emotional communication barriers, you know, resulting from emotions such as mistrust and fear, और organizations में बहुत सी इस किस्म के issues होते हैं, you know, कि when आपके mistrust और fear की development हो जाती है, because हो सकता है कि आपका कोई colleague है who has discussed something personal with you, कोई personal problem है, कोई personal issue है, and you know, after listening to that, the other person is not able to keep it confidential. Rather, he or she has discussed it with the rest of the people, with you know, many other people. Or uske baad, when the thing reaches the same person, it actually creates a feeling of mistrust that I can't talk to this person. I can't share my problems with this person. Being head of an organization makes you responsible that you have to create a feeling of trust with your employees. You have to create a feeling that they can come up to you and they can share their ideas and they can share their problems and you are there to listen to them. Because being the head of an organization, being at a senior position in an organization means that they are looking up to you. They are actually looking up to you for guidance. And trust me, that's a very big position. Hazrat Ali Razatullah said that if people come to you for discussing their problems, for sharing their problems, that is a blessing of Allah on you. Consider it a blessing and don't make it a, you know, kind of attitude that you are going to belittle the other person who shared his or her problem with you. So yes, emotional communication barriers are very important to discuss. Then there are language communication barriers. Verbally and non-verbally, how you are talking, how you are speaking. Obviously, we encourage in Pakistan now, you know, we encourage English as the professional language of communication. We encourage that in offices and in official work, as you all know, every, you know, official communication is done in English. We do have the next training particularly about the language, particularly about English, that why it is important to, you know, use English in a professional language, why it is important to be proficient and competent in English, why it is important, we'll be discussing it over there. But, you know, it is the lingua franca of the world. We can't just ignore it. And bringing this confidence, taking this, you know, putting up this confidence in your students that they are able to communicate with you in good English. You are able to communicate with your colleagues in good English. The colleagues are able to, you know. So in a professional setting, we encourage a professional language. We encourage a professional way of communication in, you know, emails and verbal, non-verbal, everywhere. So yes, that communication barriers should also be, you know, discussed and overcome. Now, discussing quickly about the communication barriers that people face today. Number one is their communication skills and styles. They can be passive, they can be aggressive, they can be passive aggressive, and they can be assertive.
you know, some आपका कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, you know, मैं अक्सर एग्जांपल अपने क्लासरूम में देती हूँ, तो you know somebody is sharing their success story कि oh you know आज मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कुछ बहुत अच्छा पब्लिश मेरा काम हो गया. You know there are ways of responding to that person. आप उस शख्स को ऐसे respond करते हैं कि oh wow amazing, you know you have done such a great job, I'm so proud of you, I always knew you could have done you know you could have achieved this and you worked so hard, you deserve it. This is the encouraging way of you know talking to that person. Second way क्या हो सकता है कि अच्छा very good, that's it, very good, mashallah, good. This is also a way of saying things. Third way is even worse, you know, you just ignore that person. जवाब ही ना देना, खामोशी. You don't say a word. You don't want to acknowledge even. हो सकता है कोई छोटी सी achievement हो किसी भी बारे में, लेकिन achievement हमें छोटी बड़ी होती हैं. For the person, obviously, it's a big achievement, and it should be. Every achievement should be celebrated. और fourth way क्या हो सकता है? You become negative about it. Really? I'm so surprised. You could do it. I could never expect this from you. This is also a way of addressing your students. आपसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी. आपने कैसे कर लिया? How could you? And we have come across such teachers in our life. I have come across such teachers in my life, you know, who would say like, how could you? I could never expect from you. And I'm like, yeah, well, I did. So there is a way of addressing, there is a way of communicating with your students, with your colleagues. And your communication and style should always be encouraging. You are, mashallah, senior. You have been given a position. You have reached there after all this hard work, and you know, obviously, you must have gone through a lot of hardships. Now it is time to make things comfortable for your subordinates. Now it is time to make things comfortable for your students. They shouldn't go through the hardships. It should be your priority that they shouldn't be going through the hardships you have faced. Why should they? I have met many professors and you know teachers in my life in Pakistan especially, and they would simply say that you know हमारे time पे ऐसे होता था, हमारे time पे ये होता था, and हमारे time पे वो होता था. So the everything you know that was happening with them at their time, they should be you know in the same way happen with you. Reason? Yes, that happened with me, so it should happen with you. So ये जो हमारा एक attitude है towards you know our juniors, this is very discouraging. हमने एक ऐसा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बनाना है, ऐसा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट करना है which is encouraging for everyone, and no one should be facing the same hardships as we have faced in life. We should be making things comfortable for us. Now social distance and physical barriers, obviously when technology comes up, Pakistan में बहुत issues आए with being you know internet connectivities and everything. That was quite a big barrier in communication also, which many teachers have overcome. Disengagement. If the other party is not interested in what you are telling them, no matter how good your presentation is, no matter how good you are talking to them, they are not interested in their development. They don't want to listen to you. And they have decided that nothing in the world can force them to learn anything. That is disengagement. As I said, that we all keep on learning throughout our lives, especially the people who are part of academia and education sector. The day we stop learning, the day we think that we are good enough, that is the day we die actually. I learn from my students. They teach me so many things about you know what the technology is and what is this latest thing, and because I go every day with a mindset in my university, in my class, that you know I'm going to learn something. Not a disengagement. What are they going to teach me? You know, they are so junior to me. What are they going to tell me? So, you know, this kind of mindset is actually destructive. It is disengaging. There is no engagement from both parties, and it actually ruins the purpose of effective communication. There can never be an effective communication. Sitting in a communication setting with a positive mindset is your own effort. You have to do that effort. Nobody will do it for you. Organizational structure, as we discussed, that you know an enabling organization structure is very important. Complex and rigid organizational structure can be the main culprit for inefficient communication. Like I said, you are accessing
1, 2, 3 PAs, and then you are, scared to knock at the door of your head. That is a rigid organizational structure. It is a culprit. It causes inefficient communication, and it makes the most common communication barriers, such as inefficient information sharing. Information sharing होती ही नहीं है properly. समझ ही नहीं आती सबऑर्डिनेट्स को कि बात कहना क्या चाह रहे थे, पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था. There is a difference between a leader and a boss. It is your choice. It is my choice if I want to be a boss or I want to be a leader. A boss moves alone. A boss sits alone in his or her office. A boss creates walls around him. A boss keeps door closed. But a leader takes along the whole team. He works with the team. He stands with the team in the times of discomfort, in the times of problems. He is always there for you. She is always there for them. So teamwork and team player is a leader. A leader encourages teamwork, and he is a team player. She is a team player. She stands there with them, with the whole team. In the tough times, in the happy times, she is there, he is there. But a boss is the one who creates boundaries. Which organization is successful according to the latest organizational communication literature? In any case, the leadership qualities, the leader is the one who is going to take his or her organization to success. Bossing around on everyone is not going to take the organization anywhere. It is just going to cause a negative impact on it. It will cause lack of productivity. It will cause lack of engagement. It will result in frustrations in the whole organization. Nobody will be happy. Everyone will come to the organization with a heavy heart and a heavy mind, that we have to spend this many hours here, and they are not enjoying it. It is a responsibility of the seniors in any organization to make the overall work experience enjoyable for the rest of the colleagues, for their students, that they are coming to college, the juniors are coming to the college, the teachers are coming to the college to teach, they are enjoying it. When we start enjoying our profession, we never get tired. We get tired when we are stuck somewhere and we are not enjoying the process. आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप जब एंजॉय कर रहे होते हैं अपने टाइम को, अपने टीचिंग को, यू आर एंजॉयिंग योर स्टूडेंट्स, यू नेवर गेट टायर्ड. The day you start considering it a burden for yourself, then enjoyment finishes and it becomes a frustration. If there is a continuous nagging at the workplace, if the boss is continuously nagging you, या favoritism हो रहा है या nepotism हो रहा है किसी organization के अंदर, that is such a burden that you don't want to actually go there every day. You just want to quit. Every day you get up and you think that I have to quit. Information overload. One task at a time. 2 tasks at a time, or 10 tasks at a time. What would be the productivity level? Obviously, 1 task at a time is going to give you maximum productivity level. If you are going to assign, overloaded tasks to one member of your college, among your colleagues, that person is going to be overloaded with work. Normally आपने experience किया होगा, normally we see that the juniors who join the organization, they are placed with the maximum work burden. और seniors बहुत सी जगहों पे they just don't want to take those burdens. When the newcomers are placed with so much burden of work, tasks, classes, extra hours, what is going to be their productivity level? That is the reason that in Pakistan, most of the young professionals are not satisfied with their jobs. So what can be done as a head of an organization? You are the one who can make a difference. You are the one who can change it. So yes, information overload is again not a good thing. Lack of trust, we have discussed, the lack of trust between students and teachers and your colleagues is again a foremost thing. Clarity, consistency, and frequency, meeting your colleagues, meeting your students timely, frequently, with a consistency, with a clear communication is the key to success. You can, have a very effective communication within your organization. If you have a good frequency of meeting them, consistently you're meeting them, and you have a clarity whenever you are meeting them. Listening. One doesn't only have to listen. One has to be an active listener.
There is a difference between a listener and an active listener. Active listener is the one who is there with all the mind, with all the heart. He or she is absorbing what the other person is telling him. And just a listener is the one who is just sitting around and, letting the information pass. And trust me, you can develop great confidence level of people on you and a relationship of trust as well if you are a good listener. If you are a good listener, people will trust you. People will create an understanding with you, in every domain. You won't be experiencing much problems in executing many plans, many, ideas with your colleagues if you are a good listener to them. So yes, good listening is the key, and one always has to consider all these things. Demographic and cultural differences. लास्ट हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया ऑफ सर्टन कलीग्स ने, और उन्होंने कहा कि वी आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स जो कि मे बी शायद अपनी फैमिली में दे आर द फर्स्ट वंस हु हैव रीच्ड कॉलेज, or maybe they are in the college after a lot of resistance from their families. They're coming from the cultural backgrounds which are quite backward. They might be coming from very small villages, so उन सारे cultural differences को, उन सारी demographics को एक टीचर क्लास के अंदर हैंडल करता है, और इसी तरह से कलीग्स के साथ हैंडल करता है, एक बॉस, एक लीडर, एक टीम प्लेयर. So do not let these demographic or cultural differences cause any kind of communication barrier. When I work in, when आप भी करते होंगे definitely, जब हम सब लोग एक international environment में काम करते हैं, वहाँ पे people are there from Japan, people are there from UK, US, Germany. Common language भी शायद आपकी बहुत मुश्किल से बहुत से लोगों की English नहीं होती है. You have to communicate in some way or the other. And then again, English is the only way you can communicate with them. There are many cultural differences, demographic differences, in a way that the working style is completely different in different cultures. Pakistan में it's different, Japan में, China में it's different. So आप उन सारी चीजों के साथ, लोगों के साथ डील करते हो, the way आप उन सबको साथ लेके चलते हो. You have to get used to with that. We don't let the demographic and cultural differences destroy, our overall experience of communication. And then lack of personalization. Number 10 point is that every communication should be well personalized according to the needs of the audience. A communication which is not personalized with the need of the audience, it has quite chances that it is going to fail actually. Ways to tackle communication barriers. You have to understand that you are dealing with multi-generational workforce. आपके पास traditionalists हैं जो कि 1945 and before, baby boomers हैं, there's generation X, there are millennials जो कि सबसे बड़ी workforce है पाकिस्तान में, who are born between 1977 and 95, and then there is generation Z born in 1996 and after, mostly students. Then there is generation Alpha इसके बाद जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं अभी. So जब हम workplace में काम कर रहे होते हैं multi generations, there are multi generations who are working with us. Everyone has a different style. जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हर जनरेशन के पास एक अपना इंफॉर्मेशन सोर्स डिफरेंट है. किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में न्यूज़पेपर है, किसी के हाथ में ट्विटर है, किसी के हाथ में फोन है, किसी के हाथ में टैबलेट है. They all have a different working style. They all work in a different environment. आप one rule के साथ सबको जो है वो डील नहीं कर सकते. You cannot deal everyone with one single communication. Employees who feel heard are 4.6 times more likely to perform better at work. This is what Forbes has to say. Personalized content is all about personalization that we have discussed. And now the last point of our discussion, because we are running short of time, is how to create a successful communication plan. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे कि हम अपने एक evaluation कह सकते हैं, कि आपने evaluate करना है कि what are the current communication barriers. फिलहाल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या communication barriers हैं. Talk to your colleagues, talk to your students, learn about the communication barriers they are experiencing in the organization. What is the ultimate communication goal? How will we eliminate existing communication barrier? This is the second question that you have to ask. Your third question, who is your audience? What are their generational and cultural differences? Are you communicating with your students? You need to acquire a total different communication strategy. Are you communicating with your younger colleagues? You need to adopt a different communication strategy. And are you going to communicate with your seniors? There you need to adopt totally different communication strategy.
What are the key messages you want to communicate and the topics you want to address? How will you distribute messages and which communication channels will you use? It is going to be emails, is it going to be seminars, it is going to be workshops, trainings, or personal communication, face-to-face communication. You have to decide. How will you measure the success of your communication plan and strategy? Obviously, if you feel that your plans have been executed successfully and your organization is working in peace, there are no major problems that arise due to communication differences, yes, that is a good indicator that your communication plan and strategy has actually succeeded in the organization. So this is how you can sit and you can devise a whole plan of communication within your organization. When asked these questions from yourself, from your colleagues, and from your students, and then you can all come up with a common plan of communication which can actually exclude all the communication barriers you are experiencing in your organization. So it's 1:10 and I guess we have got 5 to 6, or maybe even if you want, we can have 10 minutes. And I would love to listen from you what you have to say about whatever we have discussed today, the points we have discussed today, the points we have raised today, and basic ideas, or if any of your experience that you want to share with me, you are more than welcome to do that. Also, if you want to share any feedback regarding the overall presentation, overall training, you are most welcome to do that. So please. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस बरीरा, बहुत शुक्रिया, आपका लेक्चर बहुत उम्दा था। थैंक यू। और आपने जिन बातों की तरफ निशानदेही की, हम में से अक्सरियत इन चीज़ों पर अमल कर रही है, लेकिन हमें अपने ही कोलीग से बहुत से तनकीदी बातों का सामना करना पड़ता है, तनकीद करते हैं वो। मसलन मैं अगर अपने डिपार्टमेंट में किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली या किसी के साथ बहुत अच्छे अंदाज से बात करती हूँ, तो मेरी ही कोलीग्स, जो सीनियर कोलीग्स हैं, वो कहती हैं तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, इन्हें सर ना चढ़ाओ, ज़रा डिस्टेंस रखो। इसी तरह जब हम बच्चों के साथ इंगेज होते हैं तो बाज़ औक़ात हमारी ही कोलीग्स पॉइंट आउट करती हैं कि बस क्लास में जो हो गया सो हो गया, बस अब इन्हें दोबारा इनको बार बार अपने पास मत बुलाओ, क्यों तुम्हारा दिमाग खाते हैं। मतलब हमारे अपने ही कोलीग्स जो हैं वो डिस्करेज करते हैं ऐसे बिहेवियर को। लेकिन मैं समझती हूँ कि देखें, ऑनलाइन में तो हम ये पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से हर वक्त अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन इससे पहले की जो सिचुएशन थी, कम से कम हम में से कुछ हमारे स्टाफ मेंबर्स जो हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वक्त अपने तलबा के साथ इन टच रहें। सही, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये चीज़ें जो हैं, ये मिन हैसुल कौम हमें समझनी चाहिए कि एक बच्चा, जिस तरह एक माँ के लिए एक बच्चा, जब बच्चा पहली बार कुछ बोलता है या लिखता है तो माँ कितना अप्रिशिएट करती है उसको, सारे ख़ानदान में बताती है। इसी तरह एप्रिसिएशन हर जगह ज़रूरी है, वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हम में जुर्रत नहीं है, हौसला नहीं है, और हम शायद अपनी बर्तरी को कायम रखना चाहते हैं और इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, और इनसे हम खौफज़दा हैं। True, very true. Obviously, with the changing times, the communication styles also need to change. Giving chance to the students to speak up is very important. Thank you so much. We have some hand raised. बहुत शुक्रिया, thank you. We have some hand raised. Dr. Javed Hassan Akhtar, please. अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर जावेद हसन। जी, डॉक्टर जावेद, and after that we will be going to Daud sir. जी, डॉक्टर ओके, वेल डन मैडम, बहुत खूबसूरत डॉक्टर बरीरा एंड बैरियर्स, बहुत अच्छा, इतना खूबसूरत अच्छा आपने लेक्चर दिए। अब तो ये बैरियर्स खत्म हो रहे हैं हमारे, लग रहे हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जी, दाऊद साहब, you would like to say something? जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन ये जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपने सिखाई हैं, ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड माशरे की हैं। हम अभी तक फ्यूडल सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ इधर आपको एग्रेसिव होना होता है या फिर पैसिव हम चाहते हैं, असर्टिव की कोई गुंजाइश नहीं होती।
तो जब तक हमारे फ्यूडल रवैये रहेंगे, फ्यूडल एटीट्यूड रहेगा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगी, तो ये बैरियर वैसे के वैसे ही रहेंगे। हम तो बाप अपने बेटे के साथ बात करे और बेटा आर्ग्यू करे तो बाप फौरन कहता है तू प्यो है कि मैं। तो इस तरह यहाँ पर बच्चियों को शादी का हक देना तो दूर की बात है, यहाँ तो बेटों को कोई शादी का हक नहीं देता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वी लेकिन आर बीइंग एग्रेसिव। टीचर्स शायद हम कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। शायद कुछ चेंज आ जाए, लेकिन जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी, तो मैं भी बहुत अरसे से कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, पिछले 28 साल से। तो मैंने तो कोई विजिबल चेंज नहीं देखी, उल्टा बैड से वर्स ही होता है, सोसाइटी को देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दाऊद साहब, थैंक यू जी। असगर अली, इससे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज। एक दफ़ा जी कोई ना ऑस्ट्रियन फैमिली थी, वो विजिट पे आई हुई थी पाकिस्तान के, तो वो हमारे कॉलेज में आए। तो उसमें एक खातून थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी किड्स यू हैव, तो मैंने कहा जी 3। तो फिर उन्होंने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस कॉलेज, तो मैंने कहा जी 850। उन्होंने कहा कि इट मीन्स यू हैव 853 चाइल्ड्स। ट्रू। तो ये बात मुझे इतनी इम्प्रेसिव लगी कि और जाते जाते उन्होंने कहा कि दीज ऑल आर योर किड्स। तो मैंने ये अभी खातून बात की, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से समझ नहीं आती कि हमारे टीचर स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह क्यों ट्रीट नहीं करते। मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं है। Right. Even the family communication needs to change a lot. You know, how we are communicating with our children, that matters a lot. वो भी हमारे families में भी, जैसे पहले भी बात की, कि हमारा एक system ही मुआशरे का ऐसा चल रहा है। Even घरों में भी maybe people communicate with their children in a very bureaucratic way, in a very rigid way. So yeah, we need to change that. And we can bring the change, obviously, at our levels, what we can do. Thank you so much. Khalida, Miss Khalida wants to say something. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। आई थिंक ये जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशन जो पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट और बाउंड्रीज के वाला होता था, अब तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है और फ्रैंकनेस लेवल और जो है वो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है पहले की निस्बत। मैम आई वांट टू आस्क, ये आपने एक पर्सनल एजेंडा का लिखा था ना पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। और सेकंड चीज़ जो आपने ये लिखा, फेवरेटिज्म इज ऑल्सो अ बैरियर, तो आपके ये बोलने से पहले मैं इसको लिख चुकी थी और मैंने ये कहा कि मैं ये मैडम से पूछूंगी कि ये भी बहुत बड़ा एक चीज़ होता है जिसकी वजह से यू डोंट वांट टू गो टू योर वर्क प्लेस। तो हम इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? यस, आपका इसका सोल्यूशन देखिए, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, इट इज देयर। एंड आपने भी उसको कहीं ना कहीं जरूर फेस किया, मैंने भी उसको फेस किया पाकिस्तान में स्पेशली, कि यहाँ पे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैंने उसका, अगर मैं यही बता सकती हूँ कि व्हाट आई डिड, हाउ आई एक्चुअली यू नो कोप विद दैट, that I distracted my mind from, you know, the favors that were being given to the people who were favorite of the bosses, of the heads. मैंने अपने जहन को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। I stopped thinking कि फलां को फेवरेटिज्म की वजह से या नेपोटिज्म की वजह से क्या फायदे दिए जा रहे हैं। I thought my goal is something else. मेरा गोल डिफरेंट है। I have a larger goal. I have to move forward in my academics, in my research. I don't have to stay stuck in this nitty gritty thing कि you know like उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। You know, आपका जहन जो है ना, it is your you know as such playground. आपने खुद सोचना है कि आपने उसको कितना ब्रॉड करना है। या तो हम we can stay stuck in that particular portion and you know हम सारी लाइफ उसके अंदर स्ट्रेस में गुजार सकते हैं, या अपना होराइजन ब्रॉडन कर लें। और मेरे लिए it worked. Those people are still in that little tiny space. You have moved ahead of them. You have gone through that. You have achieved your goals. You are moving towards your further goals. Let them stay in that barrier of nepotism and favoritism. And trust me, it is not good. शायद वक्ती तौर पे कुछ लोगों को इसमें थोड़ी सी बूस्ट मिल जाती है, लेकिन the way the day you stand at any international platform, the day you stand in front of international audience, the day you stand in front of people who are going to audit you, trust me, there no favoritism can work, no nepotism can work. Your hard work is going to speak for you. So that जी बिल्कुल। And as far as personal agenda is concerned, personal agenda obviously means that you know there are certain people working in organization who treat people and who want people to move according to their own personal agendas. Those personal agendas can be anything. You know, they can be very destructive. They can be made in order to harm somebody. You know,
आप नेचुरली किसी को डिसलाइक करते हो, यू नेचुरली स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर दैट पर्सन, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग इन अ गुड वे, इफेक्टिव वे विद दैट पर्सन, दैट इज द पर्सन वर्ड 21। ओके सर पेपर का शेड्यूल फाइनल है कि इंशाल्लाह ताला 6 तारीख 11 से 1 इंशाल्लाह ताला सर, इंशाल्लाह आपको ईमेल आ जाएगी मंडे तक। उसके अंदर स्केड्यूल भी होगा, उसके अंदर लिंक भी होगा आपको ज्वाइन करने का, और सारी डिटेल्स उसने प्रोवाइड की गई हैं। बिलाल साहब मुझे ये बताएं कि एग्जाम में सारे पास हो जाते हैं? इतना ज्यादा सिलेबस है, ये असूलन 2 महीने का होना चाहिए था सीरियसली। और मैडम बहुत सी बातें जो पता नहीं क्या क्या रूल्स और क्या और वो, ये चीजें तो याद भी नहीं रहती हैं। बस इतना बता दें कि सारे पास हो जाते हैं कि नहीं। मैडम अल्लाह खैर करे, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें, होपफुली हो जाएंगे, इतने परेशान ना हो। हाँ ऐसे डर लग रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और रिजल्ट कब तक आएगा, तब तक तो रिजल्ट में टेंशन रहेगी ना जब तक रिजल्ट नहीं आता। अच्छी बात है। क्या क्या जी? कह रिजल्ट के ट्रेनिंग का बिला रिजल्ट कब तक आएगा? मैडम रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करें 1 मंथ तक। अच्छा सबसे प्यारी बात ये है कि आपने ट्रेनिंग में हमें स्टूडेंट्स बना दिया, हम बिल्कुल स्टूडेंट वाली फीलिंग में है इस टाइम, जैसे स्टूडेंट पेपर से पहले होते। जी सर, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। सर रिसोर्स पर्सन आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। जी थैंक यू। ओके ओके। बिलाल साहब अटेंडेंस के 20 मार्क्स होने चाहिए सीरियसली। सारा सारा दिन हम बैठे रहते हैं, तो 20 नंबर होने चाहिए ना। अच्छा चलें हमारी तरफ मैडम, वो 10 नंबर इसलिए हैं कि आप लोग यानी कि पास हो जाए, होपफुली हो जाते हैं पास, इतना परेशानी की बात नहीं, पेपर भी आसान ही होगा। बस अल्लाह करे। तो अदरवाइज क्या रीटेस्ट भी होता है इसका या नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन आई नहीं है। एटलीस्ट चॉइस तो होनी चाहिए थी ना बीच में पेपर के, चॉइस का थोड़ा सा दे देते हैं। मैडम एमसीक्यूज में कब चॉइस होती है, कहीं पे चलो चॉइस? चॉइस को छोड़े, पासिंग मार्क्स ही कम कर दें। 50% इन्होंने शायद रखे हुए हैं, मैडम 33 वाला जो 40% अटेंडेंस के रखे हुए हैं, वो तो आपके एज इट इज ही आ गए, होपफुली सब 9 नंबर तो कहीं भी नहीं गए किसी के 10 में से। 10 तो पास कितने वाला, 50 वाला ना? 50 वाला आपको 90 में से 40 नंबर लेने हैं तकरीबन। तो सर वो 40 भी जो है पता नहीं है। चलिए मैडम हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, उसके बाद अगर आपका कुछ इशू। ओके डॉक्टर वैश्विक, सॉरी फॉर द डिले सर, आप मौजूद हैं हमारे साथ? डॉक्टर वैश्विक ना माइक अनम्यूट कर लें so that we can listen you and then we will start the session. जी वैश्विक सर, आवाज आ रही है? जी मुझे तो आपकी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज है, आपकी साइड से विजिबल है। Participant time to start our last session today, and our resource person Dr. Batch-4 is here with us. Thank you sir for sparing your time and conducting this session for us. Dr. Batch-4 has completed his PhD from King's College London and currently is associated with Islamic University Bahawalpur. And today Dr. Batch-4 will talk about negotiation skills and conflict management. Over to you sir, you can start the session sir. थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। मैं जस्ट थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मैंने आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज में मैं एज ए रिसर्च फेलो से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मेरी जो मेन एसोसिएशन है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ है, तो दैट इज अगेन समथिंग यस। सो वेलकम एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑल इन दिस सेशन टुडे। और अभी जो आप लोगों की कन्वर्सेशन चल रही थी मार्क्स के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि भाई बीइंग टीचर्स दिस इज समथिंग दैट वी कीप डूइंग ऑलमोस्ट ऑल आवर लाइफ, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे एग्जैक्टली यही सवाल कर रहे होते हैं कि अटेंडेंस के मार्क्स, सेशनल मार्क्स, 20 नंबर एग्जाम के हवाले से। तो मतलब it felt very very interesting to see people who have spent years of service being worried about marks और ये सारी चीज़ें ना, मतलब वेरी वेरी मतलब एक डिफरेंट किस्म की एक फीलिंग्स आई मुझे ये अभी सारा ये देख के।
क्योंकि आई थिंक ये जो हमारी जो सेशन है, ये जो ट्रेनिंग है, ये स्किल बेस्ड है। मतलब पर्पस इज नॉट अबाउट क्या इसको, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई क्रैमिंग करनी है और आपको कोई जुबान जहन में कोई रट्टा लगाना है, कुछ चीज़ों को याद करना है। तो अगर ये स्किल बेस्ड है ना, तो स्किल्स वो स्किल्स है जो कि ऑलरेडी आप लोग अपनी पूरी लाइफ के अंदर सीखते आए हैं। आप सारे के सारे इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके सामने में वीडियोस भी आपके सामने मेरे आ रही हैं, एंड आई कैन सी के हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू ऑल हैव विद यू। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद जो है ना, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो स्किल्स हैं ये बेसिकली शार्पन कर रहे हैं। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि हम यहाँ पे कोई बहुत कुछ ऐसा कोई नया प्रेजेंट करेंगे। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि ये एक रिवीजन होता है उन सारी चीज़ों का जो कि काफ़ी अर्सा जब एक चीज़ आपके सामने अगर रखी रहे ना, तो कुछ अर्से के बाद वो दिखना बंद हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन? मतलब घर के अंदर भी आपकी एक चीज़ जब रूटीन में एक जगह पे कहीं रखी हुई है, तो कुछ अर्से के बाद हम उसको नोटिस करना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कि वो सारी स्किल्स, वो सारे काम जो हम इतने अरसे से करते आए, एक स्टेज ऐसी आती है कि हम उनको ना उस तरह से फील करना या उनकी वैल्यू को उस तरह से समझना बंद कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो सेशन है, ये बेसिकली सिर्फ उन चीज़ों के रिवीजन का सेशन है। तो इवन आज के सेशन के अंदर भी आई विल नॉट क्लेम कि मैं आपको कोई बहुत कुछ आज पढ़ाने आया हूँ। नो, मैं पढ़ाने नहीं आया। मैं आपके साथ सिर्फ वो चीज़ें जो आप लोगों के पास पहले से एक्सपीरियंस में शामिल हैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। हम उनको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपके साथ हो सकता है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकें, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपके एक्सपीरियंस से मैं सीख सकूँगा, एंड दैट्स हाउ वी विल कंटिन्यू आवर सेशन। तो आई कैन सी कि देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट, आई थिंक आप सारे सेम रीजन के हैं, पूरे पंजाब से हैं या क्या? क्योंकि लास्ट मेरी ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट थी, आज कुछ डिफरेंट ऑडियंस नजर आ रही है। तो कोई इज देयर एनी वॉलंटियर हु वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द द पार्टिसिपेंट्स? पूरे पंजाब से हैं। क्या आप लोग किस उससे हैं? पूरे पंजाब ऑल ओवर पंजाब। ऑल ओवर पंजाब। जी। ओके, टेक्स्ट रिसीव हुआ चैट का। आप लोगों के माइक्स तो अनम्यूट है ना? आप लोग बोल तो सकेंगे ना सारे लोग? जी सर। जी सर, we can talk. नहीं, मुझे आवाज, आई थिंक रियाज साहब बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे। Sir, we can talk, sir. अस्सलामुअलैकुम, पूरे पंजाब से है और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग हैं। ऑल ओवर पंजाब। ओके जी, ठीक है। अब आपकी आवाज़ भी मेरे पास आना शुरू हो गई। चलिए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सेशन के अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि भी इसके अंदर जो है ना इंटरेक्टिव सेशन हो और आप लोगों का मैक्सिमम इसके अंदर पार्टिसिपेशन भी शामिल हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नजर आ रहा है? एंड जी सर, नजर आ नेगोशिएशन स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट। आप में से कितने लोग जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर, इख्तिलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट को आप उसको कह रही हैं, ठीक है। आप मुझे साथ साथ अगर अपना नाम भी बताते जाएंगे ना तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जी आबिदा नसीम फ्रॉम मुल्तान। आबिदा नसीम साहिबा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। और कोई इसमें बताना मैं चाहें? शाइस्ता बात कर रही हूँ, शाइस्ता खानम बात जी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जी कॉलेज मैडम, बाग। जी मैडम। जी, मैं साइकोलॉजी की उस्ताद हूँ। तो साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जब आपके सामने कोई एक स्टिमुलाई हो एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड टू बिटवीन द टू स्टिमुलाई और मोर देन वन स्टिमुलाई, कि आपने किसको चूज करना है। तो वो जो मेंटल कंडीशन है, वो जो फिजिकल कंडीशन जिसमें से आप गुजरते हैं, एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड टू चूज। आपकी बात को अगर मैं सादा जुबान में, नॉट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल, उसमें आपकी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से, तो डू यू मीन, आर यू रेफरिंग टू अनडिसाइसिवनेस? Yes, undecisiveness. When equal ठीक है। potential है दो stimuli में, both are attractive, you want to, but you have to choose one. When अच्छा, both may I ask because now you're referring to the word stimuli, may I ask, और मे बी आप जो हमारी यहाँ पे ऑडियंस है उनको आप, क्योंकि ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, हो सकता है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में से बहुत से लोगों को ये बात क्लियर ना हो रही हो, तो अगर सादा जुबान में आप समझाना चाहें तो आप क्या इसको एक्सप्लेन करेंगी? जी, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से कि ये जरूरी नहीं है कि दो चीजें जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। फर्ज करें एक बच्चे ने दो मुख्तलिफ कॉलेज में एडमिशन लिया, दोनों अच्छे थे, उनमें से एक में वो, लेकिन एडमिशन तो उसे एक में लेना है ना। तो ही इज अनेबल टू बोथ हैव द पोटेंशियल, दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं,
और दोनों में उसने इस वजह से करा दिया कि शायद किसी एक में हो जाए, बट ऐसा हुआ कि दोनों में एडमिशन हो गया। अब उसे डिसाइड तो एक में करना है ना, तो वो जो मेंटल स्टेट है, ये अप्रोच में भी होता है, यानी आप दो चीजें दोनों की पोटेंशियल एक जैसी है कि आप उसको चूज करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक को किया, यू हैव टू डू दैट। वो जो कश्मकश में से आप गुजरते हैं, फिर दो चीजें ऐसी हैं जिनका बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, अगर आप फंस गए हैं तो आपको एक को ओके, सो इट्स अगेन द सेम बेसिकली। जो आपकी पूरी बात की समरी है वो ये है कि इट्स अबाउट अनडिसाइसिवनेस, के व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड यू आर इन अ काइंड ऑफ एक ऐसी उसमें हालत में है कि जहाँ पे आपसे डिसीजन करना मुश्किल हो रहा है। ठीक हो गया? कोई अच्छा जी, डायलेमा की सूरत में आ गया। ओके, कोई और इसमें जस्ट वन मोर पार्टिसिपेंट जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहें? सर इसको हम अगर अरबी में बात करें, एक वक्त में एक कोई पार्टिसिपेंट बोले। मैं बात कर सकता हूँ सर? जी जी कीजिए सर। इसको हम खासमत कह सकते हैं। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, फिर मैं जो बताने वाला काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये बन रही है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है ये एक किस्म की कश्मकश है। ओके, ये भी तकरीबन आप वही बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मैडम शाइस्ता खानम ने की है अनडिसाइसिवनेस। ठीक है, मैं कुछ एक क्या कोई ऐसे वॉलंटियर ऐसे कोलीग जिनके पास जी शो I want to add this thing when you are not agreeing to others' point of view, when there is a difference of opinion. So ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यहाँ पे मैडम आबदा नसीम ने भी यही बात की, तो आप भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही हैं बेसिकली? यस सर, मतलब आप दो लोगों में अगर कोई खिलाफ राय होती है तो उसमें भी उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि जब कोई कंसेंसस नहीं हो रहा होता और वो एक बात पे नहीं एग्री कर रहे होते। ओके, हमारी आज की जो सेशन के ऑब्जेक्टिव्स में से ना जी एक सेकंड, हमारे आज की जो सेशन के ऑब्जेक्टिव्स में से ना एक ये भी है कि हम कन्फ्लिक्ट को ना उसकी बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लें, हम समझ लें कि कन्फ्लिक्ट देखें जब आप किसी चीज़ की ना उसकी फाउंडेशन को देख लेते हैं या उसके बेसिक उसके पीछे जो आइडिया होते हैं, जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना या किसी चीज़ के रूट कॉज को समझ लेते हैं ना, तो बाज़ वक़्त बड़ा आसान हो जाता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आज के सेशन में ना हम ये भी कम से कम डिफाइन कर सकें, क्योंकि अभी तक मेरे पास 4 लोगों ने बताया और चारों की जो ओपिनियन थी वो 2 बातें हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की और दूसरा उन्होंने अनडिसाइसिवनेस की बात की। कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास इन 2 पॉइंट्स के अलावा भी कोई तीसरा पॉइंट हो जो समझते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है? मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। जी दाऊद साहब, जो है ये डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी भी हो सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस हो सकता है, आपके नजरियात क्या है, तो मतलब इन अ वे ये भी डिफरेंसेस की बात हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, ऐसे ही है ना? मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। जी दाऊद साहब बताइए। सर मेरा ख्याल है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी जो है किसी भी चीज के साथ, ओके ये विद वन सेल्फ भी हो सकती है, हमारी अपनी जात के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वी आर नॉट कंपैटिबल विद आवरसेल्व्स समटाइम्स, विद अदर्स, विद आवर एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जब हम हार्मोनियस नहीं रहते, हार्मनी नहीं रहती हमारे अंदर, बैलेंस हम लूज कर जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो नाउ वी हैव अ थर्ड ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर ख्वाहिशात लामहदूद हैं और असबाब महदूद हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट है। तो रिसोर्सेज की कमी को आप कन्फ्लिक्ट का पता कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं? लैक ऑफ रिसोर्सेज ना सर, रिवर्स करें, ख्वाहिशात लामहदूद हैं। सो अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जी जरूरियात। ओके, एक जरूरत है, एक ख्वाहिश है। इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं वो डिजायर्स की बात कर रहे हैं, ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, उन्होंने नीड्स की बात नहीं की। नीड इज समथिंग एल्स, डिजायर इज समथिंग एल्स। जी मैडम, एक जिन्होंने अभी सलाम किया, जी मैडम बताइए। सर मैं तस्नीम बात कर रही हूँ। डॉक्टर नाहिद बात कर रही हूँ। अच्छा एक सेकंड जी मैडम तस्नीम से सुन लें पहले। जी मैडम बताइए। थैंक यू मैम। सर मेरे नज़दीक हर पर्सन का एक अपना फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव होता है
और अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम इंसान फिर हर एक्सटर्नल स्टिमुलस को उसी के साथ मैच करने की कोशिश जब करते हैं और वो उसे मैच नहीं हो पाता तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखें, चलें, यही बात एक दफा आप मुझे दोबारा ये रिपीट कीजिएगा जरा, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है भला? मैं आपकी पूरी बात नहीं समझ पाया। जी सर, यानी हमारा फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव इतना बाउंड्री हम अपने लिए बना लेते हैं और चीज़ों को उसी के अंदर देखना चाहते हैं, और जब बाकी का स्टिमुलस से मैच नहीं कर रहा होता उन वैल्यूज या उन आर्टिकल्स के साथ, तो फिर इख्तलाफ होता है। ठीक है, और ओके, ठीक है, फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव और आपने बाउंड्री का। जी लास्ट अभी जो मैडम एक बात करना चाह रही थी, जी जी आप ही पहले बात कर रहे थे। सर मैं बात करना चाह रही थी। जी 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 प्लीज, ये लास्ट सर होगा। डॉक्टर नाहिद बात कर रही हूँ। जी नाहिद साहिबा। सर मेरे नज़दीक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम जब किसी दूसरे की, अपने सामने वाले की बात समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और हम वहाँ उस कश्मकश का शिकार होते हैं और हम उससे इनकारी होते हैं, हालांकि वो हकीकत होती है बाज़ औक़ात। ओके, नॉट एक्सेप्टिंग अंडरस्टैंडिंग अदर्स। जी, आपकी बात को मैं अगर सादा जुबान में लिखूं तो when you are not able to accept or understand others, then there is a conflict, right? बिल्कुल। Okay, so now we have several things with us. Differences की बात है कि जहाँ मैडम मुझे यहाँ पे रोकना होगा, आपसे भी फिर मौका आएंगे, मैं सवाल आपसे करूंगा, अभी इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि I need to continue. I wanted to get some basic understanding, a basic idea from the participants, and I've got 5-6 points. Some points are related to the differences of opinion, differences of ideology. Some are related to desires, unfulfilled desires. I think somebody texted in the chat box as a clash of interest, or इसी तरह से when you do not accept and understand others. So these are this is the summary of what we basically what all of you actually discuss in the question sections. So yes, fair enough. ये सारी चीजें हो रही हैं और इन चीजों की वन बाय वन हम शायद इनकी डिबेट के अंदर भी हम लोग अभी जाएंगे. बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वन एंड बिफोर आई एक्सप्लेन, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं मैंने नोट किए हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को मैंने आगे डिस्कस करना है. आई वांट टू शो यू समथिंग. लेट मी सी इफ द स्लाइड्स आर विजिबल. ओके, स्लाइड्स आपके सामने नजर आ रही होंगी. ये आपके सामने दो टेबल हैं. ये वो एक एग्जांपल है जो शायद आप में से बहुत से लोग पहले भी देख चुके होंगे. आपके सामने दो टेबल्स हैं. इनमें से एक टेबल जो है ए है और एक टेबल बी है. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ए टेबल बड़ा है या बी बड़ा है, या इनके साइज में कोई डिफरेंस है या नहीं है, एक दूसरे से छोटे हैं, बराबर हैं, बड़े हैं? व्हाट डू यू थिंक? तो लोग समझते हैं कि ए साइज में इनके दरम्यान में डिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ हाथ रेज कर लें अपने इमोजी के थ्रू, इसमें ऐप के थ्रू. Just raise your hands, only those people who think that there is a difference of size in both tables. Okay, so we have got several. Ciao. Okay, A is greater than B. Shape का difference है. Okay. Alright. लंबाई का फर्क है, लंबाई का फर्क है उसमें. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे आप इनको मेजर कर सकें? अगर आपके पास कोई भी ऐसा, आपके पास अगर कोई भी ऐसा मेथड है ना और आप मेजर करें तो सर इनको बराबर. सर कैन आई एक्सप्लेन प्लीज? सर मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों जो है ना, ये तकरीबन बिल्कुल एक जैसे हैं. हम इनको मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं. होता भी यही है कि जब दो लोग आपस में डिबेट कर रहे होते हैं तो एक जो है वो तस्वीर को एक रुख से देख रहा होता है, दूसरा दूसरे रुख से देख रहा होता है, और दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन देखने का अंदाज फर्क होता है. ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है. मतलब लेकिन there may be differences, there is possibility that one person is right and other is wrong, but then there are situations when both are right
from their own perspective, from their own mindset, from their own understanding of particular phenomena. So here with this shape, A and B, which apparently the both tables look different, but I would invite you to measure it, check the size of both tables, and they are 100% same table. This picture is of same table. This picture is of same table. A and B is the same table. If you measure it, you will be surprised to see that the size is exactly the same. Absolutely same table. Ji sir. Okay, now that is one thing. Thank you sir. Another from A and B, आपको सेंटर में एक डॉट नजर आ रहा है, दोनों A और B के सेंटर में जो डॉट है, इनमें से जो लेफ्ट वाला डॉट और राइट वाला, इनमें साइज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि A छोटा है और B वाला जो डॉट है सेंटर में जो डॉट है वो बड़ा है, या बराबर है? व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली? जो आपको परसेप्शन, जो आपको फीलिंग आ रही है, बताइए। ऑलमोस्ट बराबर है दोनों डॉट्स, दरमियान वाला जो दिखने में आपको फील क्या हो रहा है? मतलब हम गेस कर सकते हैं, मतलब मैं गेस कर सकता हूँ कि भी चूंकि ये टीचर हमें दिखा रहा है और वो हमें रिसोर्स पर्सन ऐसे कर रहा है, तो यकीनन ये बराबर होंगे, क्योंकि पिछले टेबल में उसमें बराबर थे। लेकिन क्या जेन्युइनली दिखने में आपको दोनों बी का सेंटर आपको बड़ा या बराबर नजर आ रहा है? बड़ा है। साइज में बड़ा सर बराबर है, वो बड़ा इसलिए नजर आ रहा है बराबर, वो छोटे डॉट कंपैरिजन भी हम देख रहे हैं। अच्छा, नो सर, B is greater than A. ओके। अब अगला सवाल। अच्छा चलिए, मेरे जहन में जोक आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे एक स्लाइड और बनाता जिसमें मैं जेन्युइनली डिफरेंस डाल देता और फिर मैं आपसे पूछता और आप सब लोगों ने कहना था कि ये भी बराबर है, क्योंकि वो एक नई पिक्चर होनी थी, आप लोगों ने देखी नहीं होनी थी और आपको लग रहा होता, तो वो एक दैट वुड हैव मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो मे बी आई विल बी एडिंग इट इन माय नेक्स्ट सेशन सम टाइम के अनदर फोटो which is actually different, but maybe अच्छा जी बताइए। ये सर एक मन रूई भारी है या एक मन पत्थर? ओके आई गॉट इट। ठीक है बिल्कुल। तो मैं ना नेक्स्ट उसके अंदर कोई इस तरह का कोई चीज इसमें डाल दूं तो मेरा ख्याल है कि दैट विल मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, और मे बी आई हैव अ स्लाइड वेयर यू विल बी सरप्राइज्ड। लुक एट दिस वन नाउ। अब ये अब आपका टेस्ट है, ये अब आप लोगों का टेस्ट है, लेकिन इसमें अब आप लोगों ने करना ये है, आपके सामने एक पिक्चर है जहां पे अगर बहुत बारीकी में जाएं तो आपको हो सकता है माइनस से डिफरेंट कलर नजर आए, लेकिन ऑब्वियस कलर जो मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट डोमिनेंट कलर्स हैं वो या ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा है या वो गोल्डन एंड व्हाइट है। अब आप लोगों को, वो तमाम लोग जिनको ब्लू एंड व्हाइट नजर आ रहा है वो अपना हाथ रेज कर लें इसके अंदर, अपने ऐप के अंदर। जिनको ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा है वो हाथ रेज कर लें ऐप में। एक्सक्यूज मी सर, आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड। जी बताइए। ब्लू और ब्लैक और ब्लू एंड व्हाइट? नो, ब्लू एंड ब्लैक, ये गोल्डन एंड व्हाइट, व्हाइट एंड गोल्डन। गोल्डन एंड व्हाइट। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने बोलना है। Did I say I'm only asking you to raise your hands in the app, so follow the instructions because this is your test now. The first two were the easiest ones. वो मैंने इसलिए किया कि वो आप लोगों का एक समझ लें कि I just wanted you to like get ready, and now you're ready. So all I want you to is to tell me to like only those people who see that the color of the dress is blue and black should raise their hands. I had raised, but Okay, I can see it. I'm just counting the numbers. So 15 तक हमारा नंबर गया है इस वक्त, 16, 17. ओके, अब ये जितने लोगों ने हाथ रेज किए थे ये अपने हाथ नीचे कर लें। 19 हो गए। क्या ये सारे लोग अपने हाथ नीचे कर लेते हैं? तमाम लोग? ओके, तमाम अभी भी कुछ हाथ ऊपर हैं। ये अपने हाथ नीचे चले, मैं इनके कर लेता हूँ खुद ही। ओके, अब वो तमाम लोग जिनको इसके गोल्डन और व्हाइट नजर आ रहा था वो हाथ रेस करें। अब जिनको ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा था ना, दे विल बी सरप्राइज्ड।
अब देखें आपका फिगर फिर राइज होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये व्हाइट एंड गोल्डन नजर आ रहा है। सर मुझे तो ब्लू और गोल्डन नजर आ रहा है आपके वाले चलिए, that's even more interesting. So we have another one. ब्लू एंड ब्लैक है, ब्लू एंड ब्लैक ज्यादा है। गोल्डन नजर आ रहा है। देखें ब्लैक और गोल्डन का, देखें गोल्डन और व्हाइट और ब्लैक एंड ब्लू, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत दूर दूर के कलर्स हैं। ये ऐसे कलर्स नहीं है कि एक दूसरे के साथ थोड़ी सी किसी को जो है ना देखने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। वो स्क्रीन की वजह से हो रहा होगा। अगर ये मैं सारा उनको एक ही स्क्रीन पे दिखाता ना तो फिर बड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब आप सारे डिफरेंट डिवाइसेस पे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। अदरवाइज जब आप एक स्क्रीन के ऊपर सारे लोग, मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप सारे देख रहे होते हैं रियल सिनेरियो के अंदर, तो आप लोगों को या तो ये ब्लैक एंड ब्लू आप लोगों ने वोट करना था, या आपने व्हाइट एंड गोल्ड। अब व्हाइट एंड गोल्ड आधी तकरीबन तादाद जो है आप लोगों में से उनको ये व्हाइट और गोल्ड नजर आ रहा है, और आधी तादाद वो है जिनको ये ब्लू एंड ब्लैक नजर आ रहा है। ब्लू एंड ब्लैक है सर। एग्जैक्टली ब्लू एंड ब्लैक है। हमें गोल्डन और ब्लू नजर आ रहा है। गोल्डन एंड ब्लू नजर आ रहा है। वाह, गोल्डन एंड ब्लू, गोल्डन ब्लू से हमें तो ये नजर गोल्डन और ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या चक्कर है? आप में से अगर मैं कहूं कि आप लोग कितने यकीन से कह सकते हैं कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन ठीक है? 100%? गोल्डन एंड ब्लू, या कोई डाउट है? कंफर्म है सर, ये गोल्डन एंड ब्लू ही है। गोल्डन एंड ब्लू है सर। मैं तो इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा। मैं तो सर कलर ब्लाइंड हूँ, मैं भी कलर ब्लाइंड हूँ, मैं भी कलर ब्लाइंड हूँ, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जो लेवल है वो क्या आपका इतना आगे चला गया कि आपको बिल्कुल इसमें कलर के फील नहीं हो रहा है, या आप कर सकते हैं, देख सकते हैं? अदरवाइज मतलब नहीं सर, मैं कलर ब्लाइंड मैं नहीं देख सकता। अच्छा चले, कोई बात नहीं। सर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लोगों की जो नजर आ रहा है वो नहीं देख रहे। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? चले, आपने पिछले तो 2 इम्तिहान बड़े आसानी से पास कर लिए। आपने कहा मेजें भी बराबर है, आपने कहा सेंट्रल डॉट भी बराबर है। अब इधर क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ पे क्या करना है बताएं जरा। इधर क्यों नजर आ रहा है बता रहे हैं। सर गोल्डन एंड ब्लू ही है और ये कंफर्म है। सर कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं हम दूसरों की गोल्डन एंड ब्लू है। अच्छा जी, चले गोल्डन एंड ब्लू कंफर्म है सर, हमारा 1 नंबर कंफर्म है। अच्छा चले, अब सवाल ये है, अब आप सारे अपने हाथ नीचे कर लीजिए। अब मेरा सवाल है आपसे, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, सवाल ये है, आप में से जिसको जो नजर आ रहा है, आपको कोई दूसरा बंदा कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, जो तुम्हें नजर आ रहा है ये तुमने गलत बात की है, ये तो है ही नहीं, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हाउ वुड यू फील इट? कैसा लगेगा आपको? सर ये कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, वो तो क्या है क्या नहीं है वो तो हम बाद में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आपको कोई दूसरा बंदी ये कहे कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम बता रहे हो कि भाई इसमें ये कलर हैं, वो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, तुमने इसमें कोई तुम्हारी अपनी कोई वो थी और उसकी वजह से तुमने ये वाली सारी बात कर रहे हो, हालांकि सच तो ये है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये तो ये कलर है और तुम ये कलर कह रहे हो, तो लिहाजा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हमारी रियल लाइफ के अंदर ना हम बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर दूसरों को बुरा भला कह रहे होते हैं, जबकि उस सिचुएशन के अंदर जबकि दूसरा बंदा अपनी ऑनेस्टी के साथ सही आंसर दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन में जब आपको ब्लेम किया जा रहा हो तो आप खामोश रहें, और अगर आपको अपनी राय की सदाकत पे यकीन है तो एक ना एक दिन उस पे भी ये तो देखिए, ये तो अगली लेवल की चीजें है ना कि जी वहां पे हमें करना क्या है, जब ऐसा किसी ने कह दिया तो हम वहां पे ये करें या ना करें, लेकिन अभी तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जिस वक्त आप में से कोई एक बंदी एक बात कर रहा हो और दूसरा बंदा ये कहे कि भाई आप जो बोल रहे हैं ना आप गलत कह रहे हैं, बहन आप जो कह रही हैं आप गलत कह रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। आर्गुमेंट करेंगे कन्वे करने की कोशिश करेंगे। अब आप उसको 1000 सफाइयां दे दें, आप में से जो जिसको फॉलो कर रहा है, जिसको जो कलर नजर आ रहा है, वो 1000 सफाइयां दे दें ना दूसरे बंदे या बंदी को कि यार ये कलर नहीं ये कलर है, दूसरा बंदा भी नहीं मानेगा, क्योंकि उनको नजर ही कुछ और आ रहा है, उनको जेन्युइनली कुछ और नजर आ रहा है, और ये रियलिटी है। नहीं, कन्फ्लिक्ट और चीज है, ये भी कन्फ्लिक्ट नहीं है।
मैं चाह रहा हूं कि हम लोग ना किसी तरीके से इन चीजों की इतनी बेसिक्स को हम समझ लें और इतनी उसके ऊपर हम लोग समझ लें, क्योंकि देखिए कई चीजें ऐसी हैं जहां पे हमने ना कभी भी हम अपने थॉट्स को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हम हमेशा तैयार होते हैं जहां पे हमने दूसरों को चैलेंज करना है। और जब हम हमेशा दूसरों को चैलेंज कर रहे होते हैं तो कई दफा ये भी पॉसिबिलिटी है कि वी नीड टू लुक इनटू आवरसेल्व्स दैट मे बी देयर इज समथिंग दैट वी आर परसीविंग डिफरेंटली, मे बी द अदर पर्सन इज राइट एंड वी आर राइट टू, बट देयर इज अ डिफरेंस. Why not? Do you understand? क्लियर हो रही बात आपको? एक छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटी सी एग्जांपल है, इस छोटी एग्जांपल और इस जैसी, क्योंकि देखिए जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ का एक इशू है. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैंने यही अर्ज किया था कि जब हम समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन उसे डाइजेस्ट नहीं करना चाहते, हम मानना नहीं चाहते, कबूल नहीं करते. तो यहाँ भी यही बात है, हमें जो नजर आ रहा है, चूंकि हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, हमें सिर्फ वही बेहतर, वही ठीक और वही 100% कलर नजर आ रहा है कि हम ब्लू और ब्लैक ही देख रहे हैं. हो सकता है ये वो ना हो, लेकिन हम मानना ही नहीं चाहते. हमने तय कर लिया है, हमने मानना मैं नहीं. यहाँ पे जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ना, देखिए मैं यहाँ पे इस बात के ऊपर नहीं आ रहा कि जी हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं और हम नहीं मानना चाहते. मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सबकी इंटेंशंस ठीक है. मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. मैं आइडियल सिनेरियो के अंदर कंफ्लिक्ट जब अराइज हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एक आइडियल सिनेरियो में, वो एक नॉन आइडियल सिचुएशन जहाँ पे हम मानना नहीं चाह रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारे इंटरेस्ट कुछ और हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं. हम एक मोस्ट आइडियल सिचुएशन के अंदर बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भी हमारे यहाँ इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं. और वो क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि यार जो हम देख रहे हैं वो ठीक है, और हम ये सोच रहे हैं कि जो दूसरा कह रहा है या देख रहा है वो गलत कह रहा है. मैं एक एग्जाम्पल एक और छोटी सी देता हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है. एक शादी हुई और उस शादी के अंदर ना मतलब दुल्हा जिस दूल्हे की शादी हो रही है ना, उसकी 2 बहनें और एक उसकी भाभी है घर में. ये खवातीन इसको सही रिलेट कर सकेंगी. अच्छा, अब शादी के ऊपर ना जो दूल्हे की बहनें हैं ना, उन्होंने एक जैसा लिबास पहना हुआ है, बिल्कुल एक जैसा, बड़ा जबरदस्त महंगा किस्म का, और बड़ा एक उन्होंने उसको बनवा के कहीं से और बुटीक से और वो करा करो के पहना हुआ है. और जो दूल्हे की भाभी है ना, उसने जो लिबास पहना हुआ है ना, वो लिबास ऐसे है, बस ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और उस तरह से फील भी नहीं आ रहा कि शादी का लिबास है. अब तीनों ही स्टेज पे मौजूद हैं. जो उस दुल्हे के खानदान वाले हैं, वो उस दुल्हे की भाभी जो कि उस घर की बहू है, उस भाभी के बारे में वो उनकी क्या राय होगी? एक सवाल. सवाल नंबर 2, जो उस बहू के घर वाले हैं, रिश्तेदार, उनकी उस दूल्हे की फैमिली के बारे में क्या राय होगी कि उन्होंने अपनी बहू के लिए, अपनी बेटियों के लिए तो लिबास बड़े अच्छे सिलवा लिए और बहू के लिए नहीं सिलवाए. मैं ये 2 ओपिनियन की आपकी क्या लगता है कि दोनों फैमिलीज उसको किस तरह से देख रही होंगी, उस एक लिबास को जो बहू ने पहना हुआ है? कोई एक आप में से 2 लोग. बिल्कुल ऐसा ही है. जो जी सर यूं ही है कि जो उस बहू के अपने घर वाले हैं, वो ये सोचेंगे, उनके जहन में फौरी ये आएगा कि अपनी बेटियों को कितना अच्छा लिबास बनवा के दिया और हमारी बेटी को पीछे रखा. और इसी तरह से जो दूसरी फैमिली है, वो ये सोचेगी कि अच्छा इनके यहाँ बहुओं को इस तरह रखा जाता है. ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. अच्छा, ये रियल वाकया हुआ मेरे सामने ना. एक शादी पे मैं था, मेरी अपनी समझे घर की शादी थी, घर की फैमिली का तो था, फंक्शन था, और वहां पे ये सिनेरियो यही वाला बन गया. आई हर्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट पीपल. एक से मैंने सुना कि देखो यार, इन्होंने खुद तो बहनों ने अपने लिए ये कर लिया, और अपनी जो भाभी थी, ये घर की बहू थी, उसको उन्होंने ये वाला लिबास रखा हुआ. और बाई चांस ऐसा हुआ सेम फंक्शन में मुझे दूसरी फैमिली की बात भी सुनने को मिल गई. दोनों बातें मैंने सुन ली. यू नो व्हाट आई डिड? मैं थोड़ा सा ना चीजों को कोशिश करता हूँ कि उसको देखूं. I spoke to the bahu and I said, "What happened to your dress? ये आप तीनों का ड्रेस सेम क्यों नहीं है? डिफरेंस क्या है?" You know what she told me? ये वो गई हुई माइक म्यूट कर देंगे प्लीज अगर आपने बोलना है तो. You know what she said? वो जो बहू थी उसने क्या बताया? उस बहू ने ये बताया कि हम तीनों के लिबास सेम थे. शादी के फंक्शन वाले दिन कपड़े प्रेस करते हुए दूल्हे की एक बहन के कपड़े जल गए.
तो जो बहू थी ना, उसने अपना लिबास दूल्हे की बहन को दिया कि तुम दोनों बहनें, कम से कम तुम्हारे भाई की शादी है, तुम ये लिबास पहन लो, मुझे घर में जो भी अवेलेबल होगा मैं पहन लूंगी। तो कहते हैं इस वजह से हम तीनों के जो लिबास हैं वो डिफरेंट है। हाउ डज दैट मेक यू फील? क्या बात है सर, जबरदस्त, Isn't that वेरी amazing? वेरी नोबल एग्जांपल जबरदस्त सर, सर, जबरदस्त वेरी सर। गुड, वेल सेड। और मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे दिखाओ लिबास। शी शोड मी द ड्रेस, जो बिल्कुल सामने से स्त्री का पूरा निशान बना हुआ था, उसके ऊपर वो जल गया था, वो कपड़ा उसने पूरा उठा लिया स्त्री ने। प्रेजेंटली जबरदस्त इन दिस सोसाइटी, नोबल एग्जांपल सर, ठीक है। ग्रेट सर। तो अब देखिए वो दोनों फैमिलीज, नो वन हैज अ टाइम टू गो एंड एक्सप्लेन, नो वन हैज अ टाइम टू गो एंड आस्क। What we do, we always try to think about the possible negative outcome and interpretation, जिससे हम दूसरे को किसी भी तरीके से जो ना हम उसको वो कर लें कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि this is something we love to do। ये हमारा कौमी मिजाज है ना, हमारी कौमी आदत है, हम इस तरह से करते हैं। और रियलिटी क्या निकली, that literally blew my mind कि यार ये क्या हुआ। मतलब मैं आज तक ये वाकया नहीं भूल सका, ये इतना बड़ा वाकया था मेरी लाइफ का। मतलब ये, क्योंकि मैं दोनों फैमिलीज को सुना हुआ था और मुझे लग रहा था कि यार कहीं है, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिटी कि यार ये कैसा किया, क्यों किया। क्योंकि आई न्यू कि यार वो बहू भी बहुत अच्छी है, आई न्यू कि उनका आपस में फैमिली का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो ये ऐसा क्या हो सकता है कि ये काम हो। एनीवेज, दैट इज अनदर थिंग। सो अब हम करके रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमने सोचा, जो हमारे माइंड के अंदर है, जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, दैट इज रियलिटी। वी आर नेवर विलिंग टू चैलेंज आवर ओन इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से मुख्तलिफ इश्यूज रेज होते हैं सोसाइटी के अंदर और मसाइल आते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। Now what I want you to understand, the next thing that I want you to understand, हमने अभी अनफुलफिल्ड डिजायर्स की बात की, हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सारी चीजें। आपको पता है कि जो एकेडमिकली जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन बताई। आपको पता है, आप सारे टीचर्स हैं, कि जो डेफिनेशंस होती हैं दे कीप चेंजिंग and there may be many possible interpretations by different people, but this one particular definition that I loved and I think that is something, अगर हम इस definition को अगर हम understand कर लें, तो शायद ये वो definition है जो हम सारे लोगों को ना help करेगी कि understand करने में conflict को। और एक दफ़ा अगर हमें समझ आ गया ना कि conflict क्यों हो रहा है और है क्या, तो शायद फिर हम इस position में भी आएंगे कि हम उस conflict को resolve भी कर सकें। Now there is this definition, it's on your screen now. Can you see the definition now? Conflict कब होता है? जी, क्या लगता है कब होता है conflict? Conflict exists when one person has a need of another and the, ये किसी का माइक शोर कर रहा है, ये माइक शोर कर रहा है बहुत शदीद किस्म का, ऑफ कर लें। अच्छा जी, conflict exists when one person has a need of another and that need is not being met. अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये उन सारी बातों से डिफरेंट है जो आप लोगों ने की हैं। वो जितनी बातें आपने की हैं वो सारी दुरुस्त हैं और वही ही हमारी अंडरस्टैंडिंग है conflict के बारे में। What we want to do now in this session is to unlearn that understanding that we had before this session about conflict. So what we have to do is to unlearn the previous understanding and update our own understanding of conflict. And that understanding explains it that a conflict exists when one person has a need of another and that need is not being met, which means that is an ongoing process. It has not completed already. So now what I would like you to do is to have again some participants who could explain what they understand from this definition. What do they understand from this definition? Anyone? Any volunteer? Sir, can I say something? Yes, absolutely. That's what I want. Well, when a situation arises where there is conflict and a person needs emotional support of other person, and when that support is not met, then the situation becomes more tense. नहीं, देखिए मेरा सवाल में ये चीज़ ना, मैं चाहता हूँ आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको ये दे रहा हूँ कि मुझे ये जो डेफिनेशन है इसकी इंटरप्रिटेशन
इसको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आप कैसे इसका तर्जमा क्या करते हैं अपनी जुबान में, या आपको क्या समझ आ रही है कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, देन एक्सप्लेनेशन में वो जो आपकी एग्जांपल है वो बहुत रेलिवेंट है इसके साथ। लेकिन राइट नाउ व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। वालेकुम अस्सलाम जी। Can I add a little, sir? Bots, जी सर। जी बताइए। I think someone else is trying to. जी आप सर आप बताइए। जी सर, bots are unable to understand each other. Okay. Again, my question is to interpret this definition and share it with others. How do you interpret this definition? I think जी जो मैडम अभी पहले बात कर रही थी, जो मैडम पहले बात करना चाह रही थी ना, जो सर की वजह से रुक गई, वो बताइए। जी Sarwar Khalid 10 college. I think it's clash of interest. Clash of interest when you want the same thing, when you are looking for the same thing. मैं फिर ये कह रहा हूँ, मतलब इस डेफिनेशन को लफ्जी तर्जुमा क्या बनेगा इसका? डेफिनेशन का लफ्जी तर्जुमा। सर मैं बताऊं, clash of interest between two people or even more. इंटरेस्ट की इसमें कोई बात नहीं हुई इस डेफिनेशन के अंदर। Interest means needs here. देखिए ना, हाँ, अब नीड और इंटरेस्ट में फर्क है, याद रखिए। एक और मैडम अभी दरमियान में बात करना चाह रही थी, वो पहले बात। जी सर मैं ये बताना चाह रही थी कि जब मुझे इससे बेहतर जवाब की तवक्को है और बेहतर जवाब की जरूरत है, वहां मैं कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होंगी। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर हम अगर इसको कंपेयर करें कि अ पर्सन ए एंड बी, ए वांट्स बी से उसको कुछ रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, और जो पर्सन है जी नीड है उसकी, और उसकी नीड की जो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी अपनी खुद से उसके माइंड में ऑलरेडी फ्रीड है, और जो बी पर्सन उसको जाहिर है वो अपने माइंड से उसको मीट करेगा, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन ए पर्सन की जो ऑलरेडी जो उसकी स्टक या फिक्स्ड जो उसकी पॉइंट्स हैं वो एक्सटर्नल बी के साथ मीट नहीं करेंगी, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है सर, ये नीड एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? नीड्स एक्सपेक्टेशन, देखिए नहीं, एक्सपेक्टेशन, देखिए मैं इसको क्लियर करूं, मैं इस बात को क्लियर करूं, एक्सपेक्टेशन भी एक नीड हो सकती है, लेकिन नीड कैन बी एनीथिंग एल्स एज वेल। सो हम अगर फोकस सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे रख लेंगे ना, तो हमारी जो बाउंड्री है ना, जो हमारा नेट है, देखिए ना आप दरिया के अंदर, समंदर में जब अपना जाला फेंकते हैं ना, तो अगर आपने छोटा सा जाला फेंका तो उसने कितनी मछलियों को उसमें ट्रैप करना है, अगर आपने बहुत बड़ा जाला फेंका तो उसने कितना, जो वाइडर नेट है ना, अगर आप चाहते हैं कि जी एक ऐसी डेफिनेशन जो कि आपकी तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपने अंदर कवर करे, तो ये डेफिनेशन जो है उसके अंदर ये एक्सपेक्टेशंस की बात ही नहीं कर रही, ये नीड की बात कर रही है। नीड का जो वो टर्म है, जो नीड जो है दैट विल कवर द एक्सपेक्टेशंस एज वेल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस जो है ना, सर इफ यू काइंडली अलाउ मी, सर ये टू स्टैंड साइड बाय साइड, टू स्टैंड साइड बाय साइड, इस पूरी डेफिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब एक शख्स को दूसरे की जरूरत होती है और वो पूरी नहीं होती। यस, सिंपल, ये एक सादा सी बात मैं समझना चाह रहा हूं, और मैं पूछना चाह रहा था कि सादा इंटरप्रिटेशन इस डेफिनेशन की। अब यहां पर दूसरे की या दूसरे से किसी चीज की, दोनों पॉसिबिलिटीज है। व्हेन यू नीड समवन और यू नीड समथिंग फ्रॉम समवन एंड दैट नीड इज नॉट बीइंग मेट, वो नीड आपकी फुलफिल नहीं हुई, वो नीड आपकी, वो जरूरत पूरी नहीं हुई, तो जरूरत पूरी ना होने की वजह से कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा वहां पे, या कंफ्लिक्ट होने के चांसेस होंगे वहां पे। जरूरी बात। हेलो जी। सो इस पूरी डेफिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लफ्ज है। जिस वक्त हमने इस लफ्ज को समझ लिया ना,
तो हमें कन्फ्लिक्ट को समझना आसान हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब लेट्स से इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि मुझे अपने किसी भी कन्फ्लिक्ट अपने साथ हुआ हुआ या किसी और के साथ हुआ हुआ या कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट जो उसने किसी जमाने में कहीं देखा हो वो शेयर करना चाहे तो, and we'll try to identify the need in that conflict. You know, जब कभी भी आपने कन्फ्लिक्ट को समझना है तो आपने ये देखना है कि उस कन्फ्लिक्ट के जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी नीड्स क्या हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड देयर नीड्स यू आर एबल टू रिजॉल्व देयर कन्फ्लिक्ट। डू यू नो दैट? So never go for expectation, don't go for interest, expectations, blah, blah, blah. ये सारी चीजें नहीं, look for the need. Once you find the need, you will be able to resolve the conflict. अगर conflict resolve नहीं हुआ इसका मतलब है कि you haven't identified the need of other person. So look for the need. Now, सर मैं एक एग्जांपल दूं सर? जी मैं एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा हूँ, बताइए। सर मेरी अर्ज ये है कि लेट्स सपोज कोई एक बंदा अदालत के कटहरे में खड़ा है और उसके जो जज हैं वो उसे कहते हैं कि भाई अगर आपके जो सफाई देने वाले हैं, आपके साथ जो लोग हैं, अगर वो ये श्योरिटी दे देते हैं, ये बात क्लियर कर देते हैं तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। मगर जैसे ही उनके दूसरे साथियों को बुलाया जाता है तो वो उसका साथ नहीं देते। माइट बी पॉसिबल इसे मैं कन्फ्लिक्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपका इस सूरत में होगा कि आपकी नीड ये थी या जो भी वहां पे साहब थे उनकी नीड थी कि वो लोग वहां पे उसकी जरूरत थी कि वो लोग वहां पे आके वो करें, लेकिन उन लोगों ने उस नीड को फुलफिल नहीं किया। तो देन यस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वहां पे कन्फ्लिक्ट राइज होगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर द एग्जांपल बाय द वे। एनी अदर एग्जांपल? यस सर जो है ना, ये तो बेसिक इंसान की नेचर में है। दो बच्चे फाइट करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, दोबारा बताइए। सर दो बच्चे हैं, सेम टॉय के लिए फाइट करेंगे, हालांकि वो ग्रोन अप नहीं है, तो वहां उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप दूसरे को कोई और दुनिया जहां का टॉय दे दे, उसे वही चाहिए जो उसके पास है, दूसरे के पास। ठीक है। और यहाँ पे नीड क्या है? हाँ, यहाँ पर नीड वो टॉय है जो कि उन दोनों को ही चाहिए। ठीक हो गया। अब वो जब तक वो नीड जी सर, एक सिंपल डेफिनेशन या सिंपल एग्जांपल आप कहें कि मुझे घर चाहिए, मैं बड़ा घर करना चाहती हूँ, मेरा पार्टनर कहता है नहीं मुझे बिजनेस बड़ा करना है। अब दोनों की अपनी नीड है। अब यहाँ पे दोनों की नीड है। अब वो दोनों की नीड में से जब वो नीड मीट नहीं कर रही होगी, अब देखिए, अब आप जब नीड को आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने एक्सपेक्टेशंस का लफ्ज हटा दिया, आपने डिजायर्स का लफ्ज हटा दिया, आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का लफ्ज हटा दिया, हमने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए नीड। अब नीड जो है ना वो हमें गाइड करेगी कि वंस यू आइडेंटिफाई द नीड यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई नीड्स क्या हैं, दोनों पार्टीज की नीड्स ये हैं। ओके, नाउ वी नो कि कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हो रहा है, इस नीड की वजह से हो रहा है। वंस यू नो द नीड, then how to resolve a conflict, that is something we will be inshallah discussing in the next slides in next few minutes. So ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई आप सारे लोगों को? अगला सवाल, माइक जिनका ऑन है वो माइक म्यूट कर लें। अगला सवाल, is it normal to have conflict? Yes, it is quite natural कि इंसानों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात एक दूसरे से मुतसादिम होती रहती हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो जहाँ पे भी दो लोग हैं वहाँ अराइज होगा। देखिए, मैं ख्वाहिशा के लफ्ज को भी आप हटा दें, अपनी हम इस कन्वर्सेशन में सिर्फ जरूरत पे रखेंगे, फोकस नीड पे रखेंगे। मैं चाहता हूँ नीड इतनी ज्यादा आपके माइंड के अंदर पुख्ता हो जाए कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं तो आपको पता हो कि वी हैव टू फोकस ऑन द नीड, नॉट नथिंग एल्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज आई आस्क इज इट नॉर्मल टू हैव कन्फ्लिक्ट and can there be any positive effects of conflict? ये दो सवाल है। जी सर, बिल्कुल होगी। कन्फ्लिक्ट का होना नॉर्मल बात है, बिकॉज़ नॉर्मल बात है। अगर कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट से नए रास्ते भी निकलते हैं। थैंक यू। सर मेरा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जांपल, उससे एक स्ट्रगल का पहलू भी निकलता है, स्ट्रगल का पहलू कि किसी नीड को पूरा करने के लिए वो बंदा स्ट्रगल करता है। देखिए, मैं एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर हमें ये पता हो ना कि कौन सी चीज होना नॉर्मल है और कौन सी चीज एबनॉर्मल है ना,
तो जिस वक्त हमें नॉर्मेलिटी का पता चल गया ना कि कौन सी चीज़ नॉर्मल और नॉर्मेलिटी है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मसलन अगर हमें ये पता हो ना कि यार ये कन्फ्लिक्ट का होना नॉर्मल बात है, तो कभी कन्फ्लिक्ट होगा तो हम इस वजह से परेशान नहीं होंगे कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, यू नो कि इट इज़ नॉर्मल। मैं अक्सर अपने सेशंस के अंदर ना, हमारे कुछ सेशंस होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर, उसमें मैं एक सवाल उनसे हमेशा पूछता हूँ ऑडियंस के साथ, पार्टिसिपेंट से, कि क्या गलती होना नॉर्मल बात है, मिस्टेक होना लाइफ के अंदर, छोटी या बड़ी दोनों गलतियां पॉसिबल हैं। छोटी गलती हो जाए, बहुत बड़ी गलती हो जाए, लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाता है आपकी गलती की वजह से, तो क्या गलती होना नॉर्मल बात है या गलती ना होना नॉर्मल बात है? गलती होना नॉर्मल बात है, गलती हो होना जाना नॉर्मल बात नॉर्मल है। है सर। आर वी हो रेडी, जाना आर वी रेडी टू एक्सेप्ट इट कि हाँ यार गलती होना नॉर्मल बात है, इट्स ओके, ये नॉर्मल, जैसे सूरज सुबह निकलता है और गरूब होता है, तो ये हम उसको देख के हमें हैरान नहीं होते कि क्यों ये निकल रहा है और क्यों गरूब हो रहा है, हम ये क्यों के सवाल नहीं पूछते। लेकिन जब गलती होती है, जब ये गलती होती है, What are you doing? माइक 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 माइक, सर जब ये ऐसे ही गलती है, होती है, गलती होना एक तो क्या हम नॉर्मल नहीं एटीट्यूड देखें है। हाउ मच डू वी बिलीव इन इट? यस, आप सारे ये कह रहे हैं गलती होना नॉर्मल बात है, डू यू बिलीव इन इट कि व्हेन यू डू अ मिस्टेक डू यू थिंक दैट ओके इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, गलती होगी तो ठीक है, इट्स फाइन? सर बिलीव तो करते हैं लेकिन हम गलती होना सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है ना जी, सो कि यू नो किस व्हाई तरह दिस के इज हालात इम्पोर्टेंट, चाहे हैं। जिस भी तरह की गलती हो जाना जो है वो नेचुरल है। ह्यूमन बीइंग्स डू मेक मिस्टेक्स, एवरीवन डज। सर जब हम लेकिन खुद गलती करते हैं ना तो ये नॉर्मल समझते हैं हम, लेकिन जब कोई गलती करता है तो हम उसे नॉर्मल नहीं अच्छा, समझते। कहीं ऐसे लोग हैं जो दूसरों को तो माफ कर लेते हैं, अपने आप को माफ करने के लिए भी तैयार नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं जो गलती करने के बाद अगर वही सेम गलती को दूसरा बंदा करे तो उसको छोड़ देंगे, खुद कर लें तो उनको कई रातों में खुद गलती कर लें तो कई रातें उनको नींद नहीं आएगी कि मैंने ये मिस्टेक क्यों की है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, गलती से ही तो हम सीखते हैं। मैं यही बात आप अंडरस्टैंड, मैं एक चीज यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि व्हेन यू नो समथिंग इज नॉर्मल, then when you start believing and accepting it that it is normal, then you put so much pressure off your mind कि भाई आपको अब यहाँ से ना आपने वो एक बहुत बड़ी मुश्किल से अपने आप को आजाद करते हैं आप, कि when you know कि नॉर्मेलिटी से क्या मुराद है, कौन सी चीज नॉर्मल और कौन सी चीज एब नॉर्मल है। सो अगर आप लोग सिनेरियो में, किसी ऐसे सिनेरियो में जहां कोई गलती नहीं करता, बिल्कुल कोई गलती नहीं करता, किसी भी तरह का कोई भी बंदा कोई भी गलती नहीं करता, तो do you think you should be worried कि something is abnormal? यस सर, बिल्कुल। हमारी लाइफ डिफिकल्ट है जहाँ पे ये इस तरह का माहौल, मतलब this is unbelievable कि यार कैसे पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है, this is not normal नहीं thing। सर, उस वक्त हम में से मेरा कि कोई ये सोचता होगा कि ये एबनॉर्मल है, हम ठीक लेते हैं उसे, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अब so ना here होना भी what I would like to establish here, abnormality की एक what निशान। I would like to establish कि it is a normal thing to have a conflict, it is normality। so normality की जो जहाँ कहीं भी देखिए, मैं वो एक बात करता होता हूँ अक्सर ना, हमारे यहाँ ना दो तरह के लोग होते हैं, एक रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक होते हैं ना उनको वो हर चीज को रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अच्छा यार ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होता है, ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। और जो आइडियलिस्टिक होते हैं वो एक आइडियल सिनेरियो में देख रहे होते हैं चीजों को कि मोस्ट आइडियल सिनेरियो ये था, तो अब ये चीज वैसे क्यों नहीं हो गई, और वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। तो इनमें से कौन सा बेहतर है बाय द वे? सर रियलिस्टिक जो केयर नहीं करते। अच्छा, जो केयर नहीं करते वो बेहतर है, ठीक है। बट माय ओपिनियन इज they both are very important and necessary for the society, क्योंकि अगर आइडियलिस्टिक नहीं होगा ना तो चीजों में इंप्रूवमेंट होना बंद हो जाएगी, because idealistic are always in an attempt to make things better, they are always looking for and trying their best to reach to the ideal state, ideal situation कि जहां वो अचीव कर सके। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं रखा रहे होते, उनको पता होता है ये चीज नॉर्मल है, ये ऐसे होता है, ऐसा होता रहता है, इट्स ओके, ये कौन सी अनोखी बात है। तो वो किसी हद तक अपने ही ऊपर प्रेशर नहीं डालते, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो इंप्रूवमेंट लाने वाले लोग होते हैं ना, वो नॉर्मली आइडियलिस्टिक लोग होते हैं जो सोसाइटी को बेहतर करते हैं। सो ये दोनों ही हम आपकी सोसाइटी के लिए जरूरी हैं बाय द वे। तो जो आइडियलिस्टिक हैं वो बेचारे परेशान ना हो कि यार हम तो बड़े आइडियल उसमें सोते हैं, और लेकिन मतलब दे आर एक्चुअली मेकिंग अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सर ये तो चॉइसेस वाली बात है ना, अपने आप मतलब बचाना है कि सोसाइटी को। चॉइसेस नहीं है, आई थिंक ये दिस इज हाउ वी हैव बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम। मतलब ये कोई इंसान अपने चॉइस के साथ रियलिस्टिक और चॉइस के साथ आइडियलिस्टिक नहीं हो रहा होता, इट्स नॉट बाय चॉइस, एटलीस्ट मेरी राय ये है। मेरा नहीं समझता ये बाय चॉइस है, क्योंकि हमारी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना वो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं,
और जो हम बने हुए हैं उसको हम अपनी आसानी से अपनी पावर के साथ, not everyone is able to change themselves from what they have been developed by their nature and nurture. Yes, sir. ठीक है? Okay, so now we have established it is normal to have conflict, and also it is possible to have some positive effects of conflict. How is that possible to have positive effects of conflict? An example. Sir, have you ever sir, been able to achieve? सर मैं एग्जांपल दूं सर? जी प्लीज। कि सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हजरत अली का फरमान है कि अगर आप मतलब कार पे हैं तो आप लोग मोटरसाइकिल वाले को देखें, अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो आप साइकिल वाले को देखें, मतलब इससे आप में एहसास से कमतरी नहीं आएगी। तो शायद मैं सही कह रहा हूँ सर इस पॉइंट वो पे? आपका बेसिकली जो पॉइंट है ना वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जहाँ पे आपने अपने आप को सेटिस्फाई कैसे रखना है और आपने परेशान नहीं होना और अपने से नीचे वाले को देखना है आपने हमेशा, ना कि अपने से ऊपर वाले को। बट दैट इज अनदर डिबेट, अनदर डिस्कशन। राइट नाउ लाइक आई वांट टू नो इज इफेक्ट जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो इस तरह से भी हो सकता है कि हमारा थिंकिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है, एंड वी रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनके हम व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ी स्पेस देते हैं और अपनी थिंकिंग को दोबारा से एनालाइज करते हैं कि कहीं हम भी वो गलत तो नहीं थे, या इस तरह से हमारा जो है has conflict help building a very positive relationship between husband and a wife? बिल्कुल, क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट का जब कोई आउटकम निकलता है, कोई सोल्यूशन निकलती है, तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होती है। Doesn't it help to test each other's boundaries now? And after once everyone knows that this is her boundary, this is his boundary, then they remain within their boundaries, not to upset others. And Yes, how would sir. they find out about this boundary without having a conflict? How would they know? इवन मुझे खुद नहीं पता होगा कि मेरी ये बाउंड्री है, जहां पे मुझे कोई ऐसे कंफ्लिक्ट हुआ वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ यार दिस इज समथिंग आई कैन नॉट टॉलरेट, दैट्स इट, दिस इज माय लिमिट। सो कंफ्लिक्ट डज हेल्प, राइट? सो वंस लेट्स एस्टैब्लिश कि यू हैव गॉट कंफ्लिक्ट, राइट? आप एक कंफ्लिक्ट में आ चुके हैं। अब कंफ्लिक्ट में आने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Settle down, either working on two extremes, or maybe we go into some sort of argument. We argue. Like one way is just being quiet, doing nothing, which means the conflict will either you just आपने ignore किया, उसको खत्म किया, छोड़ दिया और खत्म, or you want to resolve it, or you want to get or fulfill your need. So for that, what do you do? Normally, a normal human behavior is that during a conflict they argue. नहीं आर्ग्यू नहीं करते? जी बिल्कुल आर्ग्यू करते हैं सर, और उसके नतीजे में फिर जब एंड पे पहुंचते हैं तो फिर नॉलेज में भी इजाफा होता है कि हमें पता चलता है। हाँ, हमें पता चलता है कि दूसरे बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसने साबित किया है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, और हमारे नॉलेज में भी हम नॉलेज भी गेन करते हैं इससे। तो आर्गुमेंट समटाइम डू हेल्प यू अंडरस्टैंड, राइट? Argument to settle down the conflict. Excellent, very good, thank you. अब आर्गुमेंट्स ना हम लोग दो तरह की, अब मैंने उसको कैटेगरी में चेंज की है। एक वो आर्गुमेंट्स हैं जो हम रियल लाइफ में पर्सन टू पर्सन हो रहे होते हैं, ठीक है, और एक वो आर्गुमेंट्स हैं जो हम सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कर रहे होते हैं। आजकल आपको पता है पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, तो आपने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ पार्टीज के जो जियाले हैं, मुख्तलिफ पार्टीज को जो फॉलोअर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे नॉन स्टॉप आर्गुमेंट्स में एंगेजमेंट आप देखेंगे, उनको सिंग लड़ाई में उन्होंने आपस में। रियल लाइफ के आर्गुमेंट के ऊपर तो हम बाद में आते हैं। सोशल मीडिया के जो आर्गुमेंट्स हैं उसके आउटकम क्या होती है? सर वो जिद में बात कर रहे होते हैं, उन्होंने बस साबित करना होता है कि जो हमारे वाली साइड वाला बंदा है ना वो बिल्कुल ठीक है, और वो उसकी वो ड्रॉबैक्स What is the outcome of arguments on social media? सर इसका आउटकम तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि अगर वो इसको अच्छी तरह से समझें और उसको उसमें वो देखें उसको सही ग्राउंड्स में, रियल लाइफ में, तो फिर तो वो इस तरह से करें ही ना, बल्कि वो खुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जिद में उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, 99% साइकोलॉजी है ना, तो वो उसको समझाया नहीं जा सकता। मॉब जो होता है ना वो तो बस सिर्फ लड़ता है और बस ऐसे है। ये जो माइनॉरिटी होती है जो अगर कोई आर्गुमेंट करे तो उससे कोई नतीजा निकल आए, वरना ज्यादातर तो जो लोग आम लोग हैं वो तो बस जिद में और उसमें वो करते हैं। चले
चले मैं यूं पूछता हूँ, आप लोगों में से जितने इंडिविजुअल्स कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पे आपका आर्गुमेंट हुआ किसी के साथ भी, कभी भी लाइफ में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कोलीग्स के साथ, व्हाट वाज द आउटकम? यू सर सेटल्ड अगर आर्गुमेंट मेरा ऑन सोशल कभी मीडिया? सर अगर हाँ जी मेरा कभी हो इस तरह तो मैं आर्गुमेंट देती हूँ बिल्कुल वैलिड और सॉलिड, और उसके बाद मैं इंसिस्ट नहीं करती, मैं उसके बाद खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैंने You didn't वैलिड settle आर्गुमेंट it, दे so दी you है। didn't हाँ settle जी it, you just express yourself and you gave up, जी right? जी बिल्कुल मैं ऐसे ही करती हूँ। Has it ever been settled on social media? Anyone? सर नहीं कुछ सर, लोग होते सेटल नहीं हैं होता, जो बल्कि इसमें लॉस हो जाता है। नहीं हाँ, कुछ सेटल लोग नहीं होता है। समझदार भी होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, वो मान भी जाते हैं, वो समझ भी जाते हैं, वो कहते हैं हम आपसे, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम or होते हैं। maybe they just wanted to, you know, give up. They just didn't want to get involved. So they didn't trust you. They didn't believe what you were saying. All सर they जिस did, okay, स्टेज पे ठीक है, okay, जिस you're right. स्टेज ये जी जी वो जो कहते हैं ना, you're right, peace लिख के तो वो छोड़ जाते हैं conversation. That doesn't mean the conflict has been resolved. Maybe the other person still is not convinced. So what I want to discuss here is that arguments on the internet almost never, I'm using the word almost here just to give some space to some possible settled arguments on social media. Otherwise, they almost never get resolved on social media, on the internet. So one thing that we can do is to never get into arguments on social media. ठीक है, ये तो हम एक अपने लिए तय कर लें। अब आ गए आर्गुमेंट्स रियल लाइफ में। अब जो रियल लाइफ के आर्गुमेंट्स है ना, they can be good, they can be very good, except but it depends how you argue. ठीक है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आर्गुमेंट्स इन रियल लाइफ कैन बी गुड but depends how you do the argue or how do you argue, right? For example, there is this example in front of you about Wright brothers. आप लोग जानते होंगे उनको, कौन है, कौन है? सर ये जिन्होंने जहाज इजाद किया जी, पहला ठीक है, जहाज बनाया और था आपको पता है कि जब ये यंगस्टर्स थे ना, तो इनके वालिद इनके साथ क्या करते थे खाने की टेबल पे? इनके वालिद इनके साथ ये करते थे हर खाने की टेबल के ऊपर कि कोई एक आर्गुमेंट इनको दे दिया जाता था। एक बेटे को कहा जाता था कि जी तुमने इस आर्गुमेंट की फेवर में बोलना है, और दूसरे बेटे को कहा जाता तो तुमने इसके अगेंस्ट बोलना है। दोनों अपने अपने आर्गुमेंट देते थे। उसके बाद उन्हें कहा जाता था कि अब आप सिचुएशन चेंज कर लें। अब जो फेवर में बोल रहा था वो अगेंस्ट बोले, और जो अगेंस्ट बोल रहा था वो फेवर में बोले। अगर ऐसा का आपको करना पड़े, थिंक अबाउट इट, क्या होगा? सर डिबेट्स में भी ऐसे ही होता है, फार और अगेंस्ट हम तैयारी जब करवाते हैं तो फिर ऐसे ही वो उसमें देखा देखें, फार अगेंस्ट में आपने एक बंदे को फार के लिए आपने तैयारी करवा ली ना, अब उसी बंदे को कहें कि अब आपने दोबारा तैयारी करनी है, लेकिन अब आपने अगेंस्ट में करनी है। इससे फायदा हो जाएगा कि दोनों तरफ के वो आर्गुमेंट्स को, दोनों तरफ की साइड्स को सोच सकेगा और समझ सकेगा। एग्जैक्टली, तो वी ट्रेन आवरसेल्व्स। सो होता क्या है कि अब यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे जो आजकल आपको पता है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, किसी एक बंदे को कहा जाए कि जी तुम फलां पॉलिटिकल लीडर को सख्त पसंद करते हो, वो I know people hate each other's political leaders and they hate it, and now I ask the same person कि यार तुम थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि तुमने उसकी फेवर में बोलना है, तो कैन यू डिस्क्राइब एनी ऑफ द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन और शी हैज डन? And I found it very amusing to see that they struggle with it. They absolutely struggle. They cannot think of a single positive trait. You know what does that mean? They are so much blinded by their hate that they are unable to see any positive thing. How is it possible that there is somebody who doesn't have any good qualities at all? क्या दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा होगा जिसके अंदर कोई खूबी होगी नहीं? ऐसा पॉसिबल है? और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या इनमें से किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर कोई खूबी नहीं है? मैं अब ये नहीं कह रहा कि उसकी खूबियां या खामियों में से ज्यादा कौन सी हैं, लेकिन क्या खूबी है ही नहीं किसी के अंदर? कुछ तो अच्छा किसी ने किया होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा, लेकिन वो अपनी हेट्रेड के अंदर इतनी ज्यादा उसके अंदर चले जाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि भाई आप इसके अपोजिट जो आप बात कर रहे हैं, उसी बात को अब आपसे मैं कहूँ कि जिसके आप खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आपको डिफेंड करना पड़ता है तो आप कैसे करेंगे? अब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो पार्टीज बदलते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दे आर वेरी गुड एट इट, दे आर एब्सोल्युटली गुड एट इट।
उनकी आप देखें, उनके आर्गुमेंट्स की स्किल आप देखें तो आपको दूसरों से बेहतर नजर आएगी। दे आर नॉट ब्लाइंडेड, और उनका जो विजन या उनकी जो सोच होगी ना, वो बड़ी जबरदस्त, बड़ी क्लैरिटी होगी उनको कि कौन सा बंदा ठीक है, कौन सा गलत है। वो गो के वो आपके सामने कहेंगे नहीं, आपको मानेंगे नहीं आपके सामने, लेकिन आप कभी प्राइवेट कन्वर्सेशन में उनके साथ बैठे तो आपको एग्जैक्ट बताएंगे यार ये बंदा ठीक है, ये गलत है। क्यों? कि उन्होंने दोनों बंदों को डिफेंड किया हुआ है, दोनों बंदों के खिलाफ भी बोला हुआ है। तो when you look at a situation from both perspective, from both sides, then yes, argument can be good. Then you're in a position to fully understand the need of the other person. अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे बंदे की नीड नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। Now, how? Now, okay. कंफ्लिक्ट हो गया, आर्गुमेंट्स की तरफ आए, अब हमें सॉल्व कैसे करना है किसी भी कंफ्लिक्ट को। किसी भी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने से में जाने से पहले पहली चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। और ये क्या है? स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? रिलेशनशिप। जब कभी भी आप किसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपके पास दो चीजें होंगी, या तो आपने अपने फैक्ट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स को अपने सामने रखा हुआ है कि ये चीजें हैं मैंने देखनी है, या आपने ये देखा हुआ है कि यार जिस बंदे के साथ ये मेरा आर्गुमेंट चल रहा है उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रिलेशनशिप और द फैक्ट्स ऑफ द आर्गुमेंट? Facts Can we are establish good. this? Can we establish this first? That when we are in a conflict and we want to solve it, mic off कर देंगे, ठीक है? And we want to solve that conflict. The first thing that we can do, is to keep the relationship in mind and not just the facts of the argument. Yes, facts of the argument आपके पास होने चाहिए, लेकिन आपको रिलेशनशिप डिजाइन में रखना है। अब इसी के अंदर स्टार्ट कर दिया हमने अब उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए ना कि अपनी नीड को एक्सप्रेस करें। दिस इज माई नीड, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। ठीक है, आपने जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट था, यू एक्सप्रेस योर नीड। देयर इज पॉसिबिलिटी, especially when you have the relationship in your mind and not the facts of the argument, then there is possibility that your need can be met. It is quite possible. Now, if the need is met, problem solved, no issue, all done, resolved, conflict खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अक्सर औकात हमारी जो नीड है ना, दैट इज नॉट मेट। अब नीड मीट नहीं हुई आपकी, तो फिर अब आपको क्या होगा, फिर आपने कैसे सॉल्व करना है? यू स्टिल वांट टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, what is the next thing that you do? You will go for negotiation. आपने देखा होगा इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल लेवल के ऊपर पार्टीज, नेशनल लेवल के ऊपर प्रोविंसेस, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंट्रीज, मुख्तलिफ स्टेट्स, ये क्या करते हैं जब आपस में कंफ्लिक्ट होता है तो व्हाट एग्जैक्टली आप कौन सी टर्म सुन रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग? सर मुज़ाकरात का लफ्ज़ आता है। हाँ, और आपके सामने स्क्रीन पे उसके लिए एक और लफ्ज लिखा हुआ है, नेगोशिएट। यस, सो either the need is met or cannot be met. If the need is met, problem solved. But if it's not met, you go into that negotiation phase. अब negotiation जो है वो भी एक बड़ी ट्रिकी चीज है, क्योंकि negotiation जब भी आप करने जाएंगे ना तो उसकी 5 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, 5 सिनेरियोज हैं। What happens when you negotiate? 5 different scenarios. You know क्या सिनेरियोज हैं? स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे स्क्रीन नहीं नजर आ रही, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। आप अपनी उस पे ना ऐप के अंदर देखिए, क्योंकि बाकी सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन। जी सर। जी आ रही है। तो ये मैडम आपकी तरफ ना कोई आपकी डिवाइस का कोई इशू होगा। अच्छा सर जी, तो 5 सिनेरियोज हैं यहाँ पे नेगोशिएशन के बाद जो अजीब हो सकते हैं। आपने नेगोशिएशन की और इस अंदाज में की कि यू विन द अदर पर्सन हैज लॉस्ट, और यू हैव लॉस्ट द अदर पर्सन हैज वन, or both of you go for the compromise, or both of you lose, or both of you win. What do you think is the most ideal scenario as an outcome of the negotiation? Win-win.
विन विन। अब विन विन का क्या मतलब है? विन विन का मतलब ये है कि जहां आप अपने जीतने की भी कोशिश कर रहे हो और आप ये भी चाहें कि दूसरा बंदा भी विन कर ले। कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंप्रोमाइज तो उसके बाद लीस्ट सेकंड जो उसके बाद चीज होगी वो कंप्रोमाइज की हो सकती है, लेकिन कंप्रोमाइज में तो आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता ना। कंप्रोमाइज में तो आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता। Lose and win. Win, sir, win. Sir, win-win situation is always Win, recommended the best. विन विन इज दी बेस्ट। क्यों? कि यहाँ पर आपने अपने आप को भी जितवाया और आपने कोशिश ये की कि दूसरा बंदा भी विन कर ले। तो व्हेन यू आर लुकिंग दोनों को ये लग रहा है कि दोनों ने जीता है, जब आप दोनों दोनों मुतमईन विन हो गए हैं, दोनों पार्टीज मुतमईन है, एग्जैक्टली, दोनों पार्टीज मुतमईन हो गई हैं और उनको लग रहा है उन्होंने जीत लिया। हाँ, क्योंकि जब आप विन विन में जाएंगे ना तो उसके बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप विन में चले गए और दूसरा बंदा लूज हो गया तो आपको लगता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। नहीं, द अदर पर्सन विल कीप दैट इन हिज और हर माइंड एंड विल कीप ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट यू इनटू दैट लूज पोजीशन। But सर sir, where इवन is जो the है fact ना and where is the कंप्रोमाइज में भी reality? कॉन्फ्लिक्ट बाकी रहेगा। जब कंप्रोमाइज होगा तो उसमें भी कहीं एग्जैक्टली, ना कहीं कंप्रोमाइज में भी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद। कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। Where is the fact and where is the reality if win-win? विन विन में फैक्ट और रियलिटी की तो बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जब आपने विन विन की बात की ना तो आपने दोनों ही पार्टीज ने कहीं ना कहीं अपने फैक्चुअल चीजों को अभी देखें। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ। अर्ज करूंगा कि win हुआ है ना आर्गुमेंट के बाद। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड ओपिनियन एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड आर्गुमेंट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड आर्गुमेंट? ये एकेडमिक डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मतलब आम जुबान में जो हम बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जी उसका हम सिर्फ अपनी राय देते हैं लेकिन उसको इम्पोज नहीं करते। आर्गुमेंट को भी आप इम्पोज नहीं करते। और आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं तो फिर नहीं, आर्गुमेंट उसमें को हम भी इम्पोज नहीं विन करते। करने की कोशिश करते हैं सर, उसमें विन करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। जहाँ डिफरेंस है ओपिनियन हो वहां पे भी आप ये कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, मैं फिर वो सवाल आपसे जो पूछ रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एकेडमिक का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने। सर एकेडमिक्स में ये होता है कि दो लोग अगर खेल रहे हैं ना, कोई एक गेम है तो उसमें एक विन करता है एक लूज करता है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि दोनों लोग जो हैं उनका कंसेंसस हो गया, दोनों को अपनी फायदे की चीजें मिल गई हैं। सर सपोर्टिव जो होगी ना, सपोर्टिव पूरी वो आर्गुमेंट होगा। जो क्या होगा दोबारा बताइए। सपोर्टिव होगी ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ओपिनियन। सर इस चीज में मैं थोड़ा सा ऐड करूं। अच्छा, ये मैडम जो बता रही थी वो बड़ी सी चीज बता रही थी, लेकिन उनकी तरफ से शोर आ रहा है, बहुत शदीद शोर आ रहा है। माइक म्यूट करते हैं। सर मैं कुछ ऐड बात करूं नहीं हो सकी। एक सेकंड माइक म्यूट हो जाएगा वरना बात मुझे समझ नहीं आएगी। माइक सारे लोग म्यूट कर दें। हाँ जी, अब बताइए आप। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं बताऊं ओपिनियन एंड आर्गुमेंट्स जी का जी डिफरेंस। बताइए। कि लेट्स सपोज कोई भी बंदा कह देता है 2 + 2 = 5, और कोई भी बंदा अगर 2 + 2 को प्रूव कर देता है, 5 कर देता है, तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा। और अगर जस्ट कह देता है 2 + 2 = 5 तो वो ओपिनियन होगी। जबरदस्त, आपने इतनी आसानी से इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया उसको। अब ये जो बात इन्होंने की है ना, एग्जैक्टली यही डिफरेंस है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा सादा जुबान में यूं समझा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपिनियन जो होती है ना, उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं होती, वो जस्ट राय है। जो आर्गुमेंट है उसके अंदर उसी ओपिनियन को जब आप कोई साथ उसके कोई फैक्ट लगा देते हैं, साथ कोई एविडेंस लगा देते हैं अपनी ओपिनियन के साथ, किसी भी तरह की एविडेंस, तो एविडेंस के साथ लगते ही आपकी ओपिनियन आर्गुमेंट में चेंज हो जाती है। अब किसी ने कोई भी ओपिनियन दी है, मैं उसको ना भी मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और मैं कह दूं स्ट्रेट अवे कि ये बिल्कुल ठीक है, हम नहीं मानते, कोई मसला नहीं। लेकिन जब कोई आर्गुमेंट दे रहा है ना, तो आर्गुमेंट में साथ उसने एविडेंस लगा दी है, तब आपने उसके अगर आर्गुमेंट को रिफ्यूट करना है और आपने कहना है कि आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं है, तो यू नीड टू कम अप विद एन आर्गुमेंट, नॉट विद एन ओपिनियन। So that which means you need to support your opinion with some evidence. So if you don't have an evidence, then yes, you don't have an argument. If you don't have an argument, this means the other person has won. Other person is right. But if you think the other person is wrong, you need to come up and you need to support your opinion with an evidence. Once you have the evidence with your opinion, then yes, you have a strong argument then.
So जब कभी भी हम facts और opinion की बात करेंगे तो anyone who has some factual information, some evidence that is supporting his or her opinion, then yes, it is an argument and it's a strong argument. So अगर किसी को इस argument पे कोई एतराज है तो वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, उनको फिर इस बात को करने के लिए काउंटर आर्गुमेंट ऐसा लेके आना पड़ेगा जिसके अंदर उनको मजीद नई एविडेंस, नए फैक्ट्स लाने पड़ेंगे उस बात को सपोर्ट करने के लिए अपनी। तो विन विन के अंदर क्या हुआ, विन विन के अंदर दोनों पार्टीज का भी यहाँ पे चुके वो एक एविडेंस और ओपिनियन की तो बात ही नहीं हो रही थी, विन विन के अंदर नीड की बात हो रही थी, दोनों की नीड्स मीट हो गई, दैट्स इट, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कंप्रोमाइज में दोनों की नीड मीट नहीं हुई लेकिन दोनों खामोश हो गए कि ठीक है जी, विच मीन्स कि नीड आर स्टिल देयर, नीड्स हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। So there is possibility that there is some scenario, some situation where they can have some conflict in future. So ये clear होगी बात? Is it clear? So yes, sir, जब कभी भी आप argument में जाएंगे तो the best thing we have to look for is to go for the win-win situation, ठीक है? अब negotiation के अंदर सबसे माइक, ये जिनका माइक अभी ऑन हुआ ना इसमें शोर है, माइक ठीक नहीं है, अंदर तारें कहीं जुड़ी नहीं है, अपना माइक चेंज कर लें क्योंकि शोर आता है जैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से हियर, व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल? हम नेगोशिएशन में फेल क्यों होते हैं? व्हाई डू यू थिंक नेगोशिएशंस फेल? सर जीतना चाहते हैं ना, विन करना चाहते हैं इसलिए। यस, एंड सर इसको ये कैसे, हर आदमी अपने आप को राइट साइड पे महसूस करता है, लिहाजा वो दूसरी तरफ जा नहीं सकता, इसीलिए फिर सर इस चीज का ये है कि हम निगेट तो कर देते हैं किसी भी बात को मगर उनके उसे दलील के साथ साबित नहीं कर सकते। बस उसमें ये होता है कि जब कभी भी हम नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं ना, होता है ईगो, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, ईगो भी। मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ, हम नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, हम नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करना चाह रहे हैं, हम दूसरे को सुनना नहीं चाह रहे। ये बाकी सारे फैक्टर्स भी दुरुस्त हैं लेकिन जो बिगेस्ट हर्डल आती है ना नेगोशिएशन को फेल करने के लिए, वो ये होती है कि जहां पे हम राजी नहीं हो रहे हैं, हम रेडी नहीं हो रहे हैं दूसरे बंदे को सुनने के लिए। तो जब हम दूसरे बंदे को सुनने के लिए राजी नहीं है और हम रेडी नहीं है और हम सिर्फ चाहते हैं कि मेरी बात सुनो, जब कभी आप बहस कर रहे हैं किसी के साथ ना, जब दो बंदे बहस कर रहे हो, आपने सुना होगा, इवन आप खुद भी जब बहस कर रहे हो तो आप कहते हैं यार तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, मुझे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। दूसरा बंदा भी कहता है मेरी बात सुनो। जो तीसरा बंदा बैठा देख रहा है वो तमाशा देख रहा है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा। And if both are not listening to each other, they can never resolve the conflict. So that is one of the biggest hurdles. क्या? कि we don't listen. अब there is a small video. I want you to watch it carefully, and I want you to watch it. Okay, what time do we have? अरे हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। How much time do we have left? 4 बजे तक टाइम है। Okay, so हमारे पास 7 मिनट बाकी है। Yes sir. Okay. Yes sir. Sorry, मेरे पास ना असल में टाइम जो है ना, यहाँ का टाइम इस टाइम 11:54 हो रहे हैं, 11:54, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। Okay, so there is this small video. I want you to all watch it, and I'm going to, stop sharing this window for a minute, and then I'll reshare it again. There you go. So yes, अब आपके पास स्क्रीन दोबारा शेयर होना शुरू हो गई तमाम लोगों के साथ? Yes sir. Okay, so ये एक साहब है जिनका ये he is explaining how to listen. ठीक है, क्या हमने कभी सोचा कि यार हम कभी जिंदगी के अंदर हम कुछ लिसनिंग की भी तरबियत हासिल करें, और ये कि लिसनिंग एक आर्ट है और लिसनिंग एक स्किल है। कभी बचपन से लेकर आज तक have you ever tried to learn listening? No sir. No. Now listen to him and see what he has to say. Okay, मैं प्ले करूंगा और मुझे आपने बताना है अगर आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जी आवाज आई आप सबको? जी। Yes sir. अब मैं इसको पूरी वीडियो बाइक चल रही हूँ।
we are losing our listening. We spend roughly 60% of our communication time listening, but we're not very good at it. We retain just 25% of what we hear. Now, not you, not this talk, but that is generally true. Let's define listening as making meaning from sound. It's a mental process, and it's a process of extraction. We use some pretty cool techniques to do this. One of them is pattern recognition. So in a cocktail party like this, if I say, David, Sarah, pay attention, some of you just sat up. We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name. Differencing is another technique we use. If I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it. We listen to differences, we discount sounds that remain the same. And then there is a whole range of filters. These filters take us from all sound down to what we pay attention to. Most people are entirely unconscious of these filters, but they actually create our reality in a way because they tell us what we're paying attention to right now. I'll give you one example of that. Intention is very important in sound, in listening. When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time. Now that's something I fall short of on a daily basis. But it's a great intention to have in a relationship. But that's not all. Sound places us in space and in time. If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces. And you're aware of how many people are around you because of the micro noises you're receiving. And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it. In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future. So, sonority is time and meaning, a great quote. I said at the beginning, we're losing our listening. Why did I say that? Well, there are a lot of reasons for this. First of all, we invented ways of recording. First, writing, then audio recording, and now video recording as well. The premium on accurate and careful listening has simply disappeared. Secondly, the world is now so noisy, with this cacophony going on visually and auditorily, it's just hard to listen. It's tiring to listen. Many people take refuge in headphones, but they turn big public spaces like this, shared soundscapes, into millions of tiny little personal sound bubbles. In this scenario, nobody's listening. We're becoming impatient. We don't want oratory anymore, we want sound bites. And the art of conversation is being replaced, dangerously, I think, by personal broadcasting. I don't know how much listening there is in this conversation, which is sadly very common, especially in the UK. We're becoming desensitized. Our media have to scream at us with these kind of headlines in order to get our attention. And that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated. This is a serious problem that we're losing our listening. This is not trivial. Listening is our access to understanding. Conscious listening always creates understanding. And only without conscious listening can these things happen. A world where we don't listen to each other at all is a very scary place indeed. So I'd like to share with you 5 simple exercises, tools you can take away with you to improve your own conscious listening. Would you like that? Good. The first one is silence. Just 3 minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again. If you can't get absolute silence, go for quiet. That's absolutely fine. Second, I call this the mixer. So even if you're in a noisy environment like this, and we all spend a lot of time in places like this, listen in the coffee bar to how many channels of sound can I hear? How many individual channels in that mix? I'm in a beautiful place as well, like a lake. How many birds am I hearing? Where are they? Where are those ripples? It's a great exercise for improving the quality of your listening. Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise. It's about enjoying mundane sounds. This, for example, is my tumble dryer. It's a waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I love it. Or just try this one on for size.
So mundane sounds can be really interesting if you pay attention. I call that the hidden choir. It's around us all the time. The next exercise is probably the most important of all of these. If you just take one thing away, this is listening positions. The idea that you can move your listening position to what's appropriate to what you're listening to. This is playing with those filters. You remember I gave you those filters at the beginning? It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places. These listening positions or scales of listening positions that you can use. There are many. Have fun with that. It's very exciting. And finally, an acronym. You can use this in listening in communication. If you're in any one of those roles, and I think that probably is everybody who's listening to this talk. The acronym is Raza, which is the Sanskrit word for juice or essence. And Raza stands for receive, which means pay attention to the person, appreciate, making little noises like, oh, okay. Summarize, the word so is very important in communication, and ask questions afterwards. Now, sound is my passion, it's my life. I wrote a whole book about it, so I live to listen. That's too much to ask for most people. But I believe that every human being needs to listen consciously in order to live fully. Connected in space and in time to the physical world around us, connected in understanding to each other. Not to mention, because every spiritual path I know of has listening and contemplation at its heart. That's why we need to teach listening in our schools as a skill. Why is it not taught? It's crazy. And if we can teach listening in our schools, we can take our listening off that slippery slope to that dangerous, scary world that I talked about and move it to a place where everybody is consciously listening all the time, or at least capable of doing it. Now, I don't know how to do that, but this is TED. And I think the TED community is capable of anything. So I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out, and let's get listening taught in schools and transform the world in one generation to a conscious listening world, a world of connection, a world of understanding, and a world of peace. Thank you for listening to me today. Janab. Hello. Hello. जी सर. हाँ जी. क्या सीखा हमने? जूलियन ट्रेयर से हमने आज क्या सीखा? Did we learn anything about listening? यही कि लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सीखता है कि इंसान जो चुप रहता है वो ज्यादा सीखता है. Very good video, very good expressions about listening. Excellent, sir. Thank you. सर हमने सुना ही है आपको आज. अच्छा, ये I am really grateful. You know, हम टीचर्स के पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि you have people to listen. सर चुप रहना जरूरी नहीं, खामोश रहना जरूरी है. और खामोशी से सुनकर बोलना भी जरूरी है. अच्छा जी, ठीक है. You know, someone just said this before you. खामोशी का मतलब कुछ कहना भी है क्या नहीं? नहीं, लेकिन I am here to say this thing. अगर मैं आपने बोलना है तो फिर मुझे ना बोल, मैं फिर नहीं बोलता. Otherwise I was going to say something. माइक म्यूट कीजिएगा. देखें, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हुई है अभी. यहाँ पे इन्होंने कहा, एक हमारे कोलीग ने चुप रहने की बात की. हमारी एक और कोलीग ने कहा कि जी चुप रहने से बेहतर है खामोश रहना. अच्छा, जब यही बात की तो वो द अदर पर्सन फेल्ट कि यार ये देखें, मतलब मैंने ये बात की थी तो उसको एक लिहाज से, मतलब आई डोंट नो, उसको एक्सेप्टेबिलिटी का इशू हुआ, ये कहा जा सकता है, या ये कि भाई करेक्शन समझ लें, या तो अदर पर्सन फेल्ट इट बैड एंड आई वाज गोइंग टू कमेंट ऑन इट कि नहीं, हमें इस तरह से नहीं करना. हमें किसी दूसरे को मतलब एटलीस्ट अगर हम वो बात करना भी चाह रहे हैं, हम उसकी करेक्शन भी करना चाह रहे हैं, तो हम उसको हो सकता है किसी और तरीके से कर लें, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते. अच्छा, मैं भी कहना चाह रहा था, तो वो जो साहब जिनकी करेक्शन की थी, तो उनको फील हो गई बात पहले से, और उन्होंने खुद से फिर उसका जवाब आगे से दिया कि जी इसमें सहना भी तो जरूरी होता है. तो दैट वाज द होल थिंग, वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. You know, this is part of training. We hello. Hello. आप अपना माइक म्यूट नहीं करते और आपकी गुफ्तगू हमारे पास आ रही होती है और हमारी सारी बात वहीं खराब हो जाती है. ना किया करें ऐसे, सीख लें इसको. या तो माइक म्यूट रखें या बोलें नहीं.
एनीवेज लेट्स मूव ऑन, हम आगे चलते हैं। एक छोटी सी कोई चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाने से मुराद बताना, शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि नेगोशिएशन के अंदर जो है ना, दुनिया में जो बेस्ट इदारे हैं वो नेगोशिएशन के अंदर, और खासतौर पे जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जहाँ पे आपको क्रिमिनल्स के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है, तो FBI एक ऐसा इदारा है यूएस का जो कि क्रिमिनल्स के साथ करता है नेगोशिएशंस, और उन नेगोशिएशंस के लिए उन्होंने अपनी गाइड बताई अपने स्टाफ के लिए, और वो गाइड जो है ना वो ये कहती है, ये आपके सामने, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपको कहीं पे भी नेगोशिएशन करनी है, और स्पेशली अगर नेगोशिएशंस किसी ऐसी होस्टेज सिचुएशन के अंदर है, किसी क्रिमिनल्स के साथ है, तो देन व्हाट यू डू नॉर्मली, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू एक्टिव लिसनिंग, listen to their side and make them aware that you're listening. So listening में एक जो अहम बात होती है वो ये नहीं होती कि भाई आप सुन रहे हैं उसकी बात को, बल्कि दूसरे बंदे को ये फील भी होना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लें कि अभी छोटा बच्चा, घर में बच्चे होते हैं हमारे, वो बच्चे आके आपसे बात कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हो, गो कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, तो आपका हाथ पकड़ के चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें, और वो फिर वो बच्चा बच्ची अपनी पूरी बात फिर रिपीट करता है, क्योंकि दैट चाइल्ड इज नॉट फीलिंग कि you're not making them feel कि you're listening, गो कि आप सुन रहे होंगे, लेकिन आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दूसरे बंदे को ये फील भी हो कि आप सुन रहे हैं उसको। सो एक्टिव लिसनिंग, इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग, इट्स एक्टिव लिसनिंग। और एम्पैथी के बारे में आपको पता होगा, एक सिंपैथी होती है और एक एम्पैथी होती है। सिंपैथी में हम हमदर्दी की बात करते हैं, एम्पैथी में वी पुट आवरसेल्व्स इन अदर शूज, जहां पे आप दूसरे की जगह पर रख के फील करते हैं कि वो बंदा किस सिचुएशन से गुजर रहा है। उसके बाद रेपो बिल्ड करनी होती है। रेपो वो काम है जो हम तमाम टीचर्स जो है ना हमेशा बिल्ड करते हैं। जब कभी भी आप कहीं कोई सेशन में, कहीं टीचिंग में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो हम टीचर्स का नॉर्मली जो टीचर्स ट्रेनिंग आपकी होती होंगी उसमें आपको कहीं ना कहीं ये बताया गया होगा कि आप क्लास के अंदर अपनी रेपो बिल्ड करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये मेरा टीचर जो है कॉम्पिटेंट है, या ये टीचर इस काबिल है कि ये मेरी मुझे पढ़ा सकता है, तो फिर आप उसको ये अगर नहीं उसके जहन में अपनी रेपो बिल्ड नहीं करेंगे, आप पढ़ाने लगेंगे, तो फिर आप अपने लर्निंग गोल्स नहीं अचीव कर सकते। तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप जब कभी भी कहीं पढ़ाने जा रहे हो तो आप अपनी रेपो वहां पे बिल्ड करते हैं। और इसी तरह से निगोशिएशन के अंदर भी रेपो में बेसिकली हो क्या रहा होता है, यू आर बेसिकली गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। और जब आपके पास दूसरे बंदी का आप ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, आपको ये पता होता है, अगले बंदे को पता होता है कि हाँ यार ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी सिचुएशन को, तो फिर यू आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस देम। आप उन पे आपकी बात, आप ऐसी बात या सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं जहां पे दूसरा बंदा भी आपकी बात मानेगा। एंड यू नो व्हाट डज दिस रिजल्ट, इट रिजल्ट्स एज ए बिहेवियरल चेंज, जहां पे दूसरा बंदा जो है आपकी उस बात के मुताबिक अपने रवैये को भी चेंज करने की कोशिश करता है। तो दैट्स हाउ FBI डज इट। चूंकि टाइम हमारे थोड़ा सा कम है तो मैं क्विकली आपको जो है इसके अंदर चीज़ें कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर एक प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं, जब कभी भी आप नेगोशिएशन में हो, कभी कन्वर्सेशन में हो, नेगोशिएशन की उसके अंदर हो, तो फिर आपने करना ये है कि यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड में कि आपको ऐसे चीज़ें ना पूछें कि आपको सवाल पूछें कि हाँ जी जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में हो, तो आप ओपन कोई भी ऐसा सवाल पूछें कि अच्छा फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा, तो वो यस और नो में आंसर नहीं होगा। फिर वो बंदा जो है ना, बंदी आपको पूरी बात को एक्सप्लेन करेगा। दूसरी चीज निगोशिएशन के अंदर, जब आप अगर आप इफेक्टिव पॉजेज लेते हैं तो पॉजेज बहुत पावरफुल हैं, और ये बात जूलियन भी ये बात करते हैं। इनकी एक और भी वीडियो है, अगर आपको मौका मिले तो आप यूट्यूब पे जाके इनकी वीडियोस देखिएगा। इनकी स्पीकिंग टेक्निक्स के ऊपर भी एक वीडियो है, और लिसनिंग टेक्निक्स के ऊपर, इफ यू गेट अ चांस डू वॉच हिम। उसके बाद मिनिमल इंकरेजेस होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कहीं थोड़ा थोड़ा ना हाँ अच्छा ओके ठीक है, तो ये अगले बंदे को इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो बात अपनी कंटिन्यू करे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो बात को ना वो करे, कंटिन्यू करता रहे, एक्सप्लेन करता रहे। Mirroring, repeating the last word or phrase the person said to show you're listening and engaging, and paraphrasing कि आप उन्हीं की बात को अपने अल्फाज में रिपीट करेंगे। अच्छा जी मैं जो समझा हूँ आपकी बात से वो ये कि आप ये कह रहे हैं, दूसरा बंदा आपको ओके करता है। तो बेसिकली ये जो 5 मेथड्स हैं ना, जिसके अंदर आप उनको ओपन एंड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इफेक्टिव पॉजेस दे रहे हैं, मिनिमल अंदर इनकरेजेस दे रहे हैं, और मिरर कर रहे हैं, और पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप इन चीज़ों से गुजरते हैं ना, तो दूसरा बंदा जो है ना वो उसके अंदर आ जाता है कि जहाँ पे वो चाहता है कि वो आपके साथ पूरी बात करे, और उसको इस बात पे बिलीव होता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस वक्त उसको सुनने और समझने की बात हो, उसको लग गया ना कि आप उसको सुन और समझ रहे हैं, तो वो जो हमने पिछली बात की थी FBI के मेथड की, कि वहां पे फिर वो आपके लिए तैयार हो जाएगा, कम से कम उसका माइंडसेट के अंदर किसी हद तक रेडी होगा कि जी अब आप उसके साथ निगोशिएशन भी कर सकेंगे, या आप उससे बिहेवियरल चेंज भी उसके अंदर ला सकेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक ये वाली वीडियो जो मैं आपसे कह रहा था, ये आपको मौका मिले तो आप देख लीजिएगा। सॉरी मैं इसको प्ले नहीं कर रहा,
ये हाउ टू स्पीक सो दैट पीपल लिसन, ये आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। और लास्ट चीज जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको बॉडी लैंग्वेज, जब कभी भी नेगोशिएशन में होंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से दूसरा बंदा ऑफेंसिव फील करे। कभी आप टीचर्स में से कभी भी आपने देखा हो कि कहीं पे भी स्टूडेंट्स का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई भी मसला हो रहा है, तो कोई टीचर जो वहाँ पे बहुत अथॉरिटेटिव लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज लेके जाएगा ना, उसकी बात को लोग इतना नहीं सुनेंगे। हाँ, जो टीचर वहाँ पे हम्बल बॉडी लैंग्वेज होगी, या एटलीस्ट इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी जहाँ पे ये लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये हम पे अटैक करने नहीं आया, हमसे कुछ सजा देने नहीं आया, और हमारी जनरली हमारी बात को सुनने इस तरह, तो वो टीचर आप में से जिन टीचर्स ने भी कभी स्टूडेंट्स कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, आप देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कितना अहम रोल प्ले करती है उसके अंदर। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर भी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। सर, इसीलिए कहा जाता है कि हकूक को कम और फराइज पर ज्यादा तवज्जो दी जाए तो पीसफुल माशरा तश्कील पा सकता है। ठीक है, फिर बिल्कुल सही बात है। कोई सवाल कोई और है किसी के ज़हन में? कोई सवाल? एनीवन? बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। और वो जो कहते हैं ना कि हमें कान 2 दिए गए हैं और ज़बान 1, तो हमें सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम। अगरचे हमने आज बहुत ज़्यादा बोला और आपको कम सुना, तशनगी बाकी रही। बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू टुडे, और आप सबका बड़ा अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन था। और मुझे बस थोड़ा सा ये है कि चूंकि सवाल इतने ज़्यादा और इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होगी। एक सवाल है सर। जी जी सर, ये है तो टॉपिक रिलेटेड तो नहीं है, जस्ट जर्नल ही है। हर जगह पे मुझे इस डेफिनेशन में मसाइल आते हैं कि स्पीच और प्रेजेंटेशन में हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन स्पीच तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, वो आपकी स्पीच भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन जाती है, और आपकी प्रेजेंटेशन में आप खुद भी शामिल हो जाते हैं। स्पीच में तो आप वर्बल बात कर रहे हैं, आप रिटन में, ओरल में आप कोई बात कर रहे हैं, वर्बल या नॉन वर्बल। उसमें स्पीच में नॉर्मली वर्बल बात होगी। वर्बल से मुराद कि आप उसने कुछ बोल के लिखा, आपने कुछ पढ़ के आपने बताया, आपने कुछ मतलब इट्स ऑल अबाउट स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो प्रेजेंटेशन है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल हो जाते हैं। मतलब आपने क्या लिबास पहना हुआ, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन में शामिल हो जाएगा। सो योर प्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट ऑफ योर टॉपिक या जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, इज अबाउट एवरीथिंग, इवन द कंटेंट, इवन यू योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, हाउ your body language is playing a role. So presentation is a more holistic form. I hope कि मैंने आपको क्लियर किया होगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। चलें सर, बहुत अच्छा लेक्चर था। मैं सिर्फ लास्ट में की थोड़ी सी ऐड ऑन करना चाहूंगी। जी मैडम। सर, जब भी आप सर लिसनिंग की जो सारी टेक्निक्स बताई, तो सर ऐसे ही मुझे एक चीज का थोड़ा सा वो एक रिलेशन बन रहा था कि हज़रत सल्लम जो थे, उन्होंने सुनने के लिए बिल्कुल यही स्ट्रेटजीज थी उनकी। जब कोई बात करने लगता था तो पूरा घूम के उसकी तरफ देखते थे और उसकी बात सुनते थे। सर असल में यही चीज है कि ये चीज जब आप किसी को ये फील दें कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो फिर वहां मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि लोग होल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही तो मुल्क नहीं, ऐसे दिल भी फतह होते हैं, ऐसे मुल्क भी फतह होते हैं। मतलब आप अपने अपने बिहेवियर से, अपने रवैये से आप लोगों को जीतते हैं। और ये तो खैर उसवा हंसना, और ये हमारे लिए तो बड़े असबाक हैं इनके अंदर। लेकिन ये कि बल मैंने जैसा टॉपिक के आज की इस डिस्कशन में स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहा। वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन टॉट एंड टोल्ड। सो दिस वाज जस्ट अ रिवीजन सेशन। आई होप कि इससे आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें तमाम लोग। ओके जी, खुदा हाफिज।